जानता होगा ना, तो फिर फोन नंबर लेके कर लेगा ना फिर तुम एम्बुलेंस को लेने के बाद तुम पीछे उधर आए, ठीक है। वहाँ पे बोल दिया लोग आ जाएंगे 2 मिनट। सही बात है, फटाफट 2 मिनट। जयपाल जी जल्दी बताइए मेरे को, 2 मिनट में। Ladies and gentlemen, we are starting in no time. We request all of you to please be seated. Thank you. The chief guest for today's event, Shri Bhupendra Yadav ji, have arrived. Standing ovation, ladies and gentlemen, and a thunderous round of applause. Guest of honor, Shri KP Gurjar ji. Kindly keep the applause going, ladies and gentlemen. Other dignitaries, Ms. Leena Nandan ji, Secretary MOEFCC, Shri Naresh Pal Gangwa, Shri Tanmay Kumar, Shri P. Raghavendra Rao have arrived. A very warm and hearty welcome. Sir, आपका बहुत बहुत अभिनंदन. Ladies and gentlemen, I once again request all of you to please welcome our esteemed panel on stage, our esteemed dignitaries on stage with a thunderous round of applause. आप सभी का हार्दिक अभिनंदन. आज आप यहाँ समय निकाल कर आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Our chief guest, Shri Bhupendra Yadav ji, Honorable Minister, Environment, Forest and Climate Change,
Guest of honor, Shri K.P. Gurjarji, Honorable Minister of State for Power and Honorable Minister of State for Heavy Industries. Ms. Leena Nandanji, Secretary MOEFCC. Shri P. Raghavendra Rao, Chairman HSPCB. Shri Naresh Pal Gangwar, Additional Secretary MOEFCC. Shri Tanmay Kumar, Additional Secretary MOEFCC and Chairman CPCB. We also have with us Dr. M.M. Kutty, Chairperson CAQM, and Shri Arvind Nautiyal, Member Secretary CAQM. And I now request Shri Arvind Nautiyal, Member Secretary, Commission for Air Quality Management, to render the welcome address. श्रद्धेय श्री भूपेंद्र यादव जी, माननीय मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार। आदरणीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, माननीय राज्य मंत्री ऊर्जा एवं भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। उपस्थित माननीय सांसद आदरणीय लीना नंदन जी, सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार। माननीय डॉक्टर M.M. कुट्टी, अध्यक्ष वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। सम्माननीय P. राघवेंद्र राव जी, अध्यक्ष हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नगर निगमों के सम्मानित महापौर, यहाँ पर उपस्थित वायु गुणवत्ता आयोग के सभी सदस्यगण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि अधिकारीगण, पर्यावरण विभागों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा समिति के प्रतिनिधि, उद्योग संघों, गैर सरकारी संगठनों से पधारे विशिष्ट सदस्य, अकादमिक और ज्ञान संस्थानों के सदस्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे मित्रगण, साथियों, देवियों, सज्जनों। इस अवसर पर हम अपैरल हाउस गुड़गांव, हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु 2 दिवसीय स्वच्छ वायु संवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर दिए गए भाषण की गई परिकल्पना के अनुसार एनकैप, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को अब एक मिशन के रूप में देश के प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के निवारण के उद्देश्य से उन्नत ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है। विशिष्ट भौगोलिक, मौसम विज्ञान और मानव जनित स्थितियों के कारण संपूर्ण गंगा तट और विशेष रूप से ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है वो अधिक संवेदनशील है। इसी क्रम और विचार के साथ हमारे माननीय मंत्री जी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी की दूरदर्शिता एवं कुशल मार्गदर्शन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले विभिन्न कारकों और उनके प्रभाव को कम करने की रणनीतियों के बारे में व्यापक बहुक्षेत्रीय प्रस्तुतियां और विचार विमर्श करना है। हमें उम्मीद और विश्वास है कि यह 2 दिवसीय संवाद दिल्ली राष्ट्र राजधानी क्षेत्र तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु प्रदूषण परिदृश्य को कम करने के लिए एक लंबे समय तक चलने वाले और ठोस नीतिगत समाधान की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करेगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पुनः आपका हार्दिक स्वागत करते हुए इस 2 दिवसीय संवाद के सफल संचालन के लिए आपके सक्रिय समर्थन और आशीर्वाद की अपेक्षा करता है। धन्यवाद। Thank you, sir. Ladies and gentlemen, now it's time to welcome our esteemed dignitaries present on stage. अब हम स्वागत करेंगे हमारे मुख्य अतिथि श्री भूपेंद्र यादव जी का, ऑनरेबल मिनिस्टर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. I request Dr. M.M. Kutty, Chairperson CAQM, to welcome our chief guest, sir, please. And let's all welcome them once again with a round of applause, ladies and gentlemen. I once again request Dr. M.M. Kutty to welcome our guest of honor,
Shri K.P. Gurjarji, Honorable Minister of State for Power and Honorable Minister of State for Heavy Industries. A very warm and hearty welcome to you, sir. I now request Shri Arvind Nautiyal, Member Secretary, CAQM, to welcome Dr. M.M. Kutty, Chairperson, Commission for Air Quality Management in National Capital Region and adjoining areas. A very warm welcome to you, sir. Requesting, sir, to welcome Ms. Leena Nandanji, a senior Indian Administrative Service Officer. She is Secretary to the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. A very hearty welcome to you, ma'am. Shri P. Raghavendra Rao, Chairman, HSPCB. A very warm welcome to you, sir. Shri Tanmay Kumar, Additional Secretary, Ministry of Environment, Forest, Climate Change, and Chairman, CPCB. A hearty welcome to you, sir. Shri Naresh Pal Gangwar, Additional Secretary, Ministry of Environment, Forest, and Climate Change. A very warm welcome to you, sir. Once again, a very, very warm and hearty welcome to all our dignitaries. May I now request the dignitaries on the dais to please light the ceremonial lamp. As the morning sun spreads, Thank you very much. I'll take the opportunity to invite on the dais Dr. M.M. Kutty, Chairperson, Commission for Air Quality Management, to introduce the conference theme, Dialogue on Clean Air. Honorable Minister of Environment, Forest and Climate Change, Shri Bhupendra Yadav ji, Honorable Minister of State for Power and Heavy Industries, Shri Krishnapal Gurjar ji, colleagues on the rostrum, speakers of different sessions, invitees to the dialogue, ladies and gentlemen. The Commission of Air Quality Management and Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, are organizing this two-day interactive session with basic thrust on discussing various issues relating to control, abatement, and the prevention of air pollution. The National Clean Air Program, launched by the Government of India, Ministry in 2019, is now being upscaled and implemented on a mission mode. A statutory commission for air quality management in NCR and adjoining areas have been set up by the central government. The objective of the commission is better coordination, research, identification, and resolution of problems surrounding air quality index. The commission consists of members from central government, state government, NCT of Delhi, non-governmental organizations, and private sector. The commission has been inter alia entrusted with the task of
coordination of actions by the government of National Capital Territory of Delhi and states of Punjab, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh. The Commission may impose restriction of areas in which any industries shall not be carried out, and is also empowered to effect closure, prohibition or regulation of any industry for managing air quality in National Capital Region and adjoining areas. The major sectors contributing to air pollution in NCR and adjoining areas are industries, vehicles, construction and demolition, road dust, biomass incineration, solid waste and stubble burning, as well as fire in landfill sites. The pollution control must lay emphasis on pollution prevention by adoption of best available and practicable technologies as the key element for pollution control and prevention. The whole issue of pollution prevention and control is dealt with a combination of command and control methods as far as our voluntary regulations, fiscal measures, promotion of awareness, advancement of research in pollution abatement technologies, and effective enforcement. The Commission has sensitized NCR state government, Government of Punjab, and Government of NCT of Delhi and their agencies about the measures to be taken for abatement of air pollution on a continuous basis. Through statutory directions, they have also been mandated to take specific air pollution control measures covering various sectors contributing to air pollution. 61 statutory directions and 7 advisories have been issued by the Commission so far, covering major sectors including industrial pollution, vehicular pollution, dust pollution, and stubble burning. The directions issued include directions prescribing procedure and methodology to be adopted to control air pollution at the construction and demolition sites, steps to be taken to prevent dust generation from roads by road owning and maintenance agencies, detailed framework and action plan to control stubble burning, monitoring of crop residue burning through satellite-based information and uniform protocol, co-firing biomass in thermal power plants, shifting of industry to cleaner fuels, regulations for use of diesel generating sects, etc. In the industry sector, the main focus should be to ensure compliances, prevention of use of unapproved fuels, and to shift industry to cleaner and less polluting fuels. All identified industries in Delhi have been shifted to PNG. In the NCR districts of UP, Haryana and Rajasthan, out of 4,283 identified industries, 1,989 industries have already been shifted to piped natural gas. The NCR state governments are required to ensure compliance as well as shift industry to cleaner fuels on a top priority basis. For controlling vehicular pollution, all the identified 124 border entry points to Delhi have been made RFID compliant. Regular action is required to be taken to prevent plying of 10-year-old diesel and 15-year-old petrol vehicles on NCR roads. Similarly, visibly polluting vehicles and vehicles not complying with the PSU norms must be vigorously targeted by enforcement authorities. The public transport system must be augmented, and that too by deploying battery or zero-emission vehicles. To give fillip to zero-emission and battery vehicles, mandating should be brought into the policy by NCR states, and the priority area should be electrification of public transport, paratransit, feeder services, food delivery fleets, e-commerce logistic providers, couriers, government vehicles, and auto rickshaws. The battery charging and swapping infrastructure need to be substantially augmented. Controlling pollution from construction and demolition sites, there is a compelling necessity and urgency to set up a portal for online monitoring, video fencing of projects, installation of anti-smoke guns, use of dust suppressants, and installation of air quality monitoring sensors. For preventing dust from roads and right-of-ways, road owning and maintenance agencies should constitute dust management cells and strictly monitor implementation of identified dust control measures
to name a few: mechanized sweeping machines, scientific disposal of dust, proper maintenance of road, converting roadsides and central versions to green, sprinkling of water and dust suppressants, etc. Focused attention is required towards plantation and greening, including on roadsides, central verges, parks and open areas wherever feasible. Plan of action in this regard, as sought by the Commission, must be prepared and implemented well before the current monsoon season. For controlling stubble burning, a combination of approaches, including in situ crop residue management, scientific use of biodecomposers, ex situ crop residue management, awareness creation and educational activities, effective monitoring and enforcement, crop diversification, schemes for incentivization and disincentivization need to be implemented. Action plan for the ensuing winter season needs to be prepared sufficiently in advance based on previous experience for effective implementation. Considering the importance of enforcement to control pollution, large number of inspection teams need to be constituted by the state governments and regular inspection should be conducted. The Commission from December 2021 to 15th February 2022 have inspected more than 5,000 sites and lakhs of rupees have been levied as environmental compensation by NCR states, Government of Punjab and Government of NCT of Delhi. The work done by various agencies to tackle air pollution are yielding results and there is significant improvement in air quality in the NCR. During 2021, the last year, the total number of days in the category poor to severe have decreased to 169 days as compared to 184, 206, 213 and 246 days for the corresponding period during the year 2019, 2018, 2017 and 2016 respectively. For the same period, the total number of days in the category good to moderate have increased substantially, that is 197 days in the year 2021 compared to 182, 159, 152 and 180 days for the year 2019, 2018, 2017 and 2016 respectively. During the first 2 months of the current year, that is 2022, the total number of days in poor to severe category have decreased to 44 days as compared to 56, 57, 57 and 53 days for the corresponding period in 2021, 2020, 2019 and 2018 respectively. During the same period, the total number of days in the category good to moderate have increased to 15 days compared to 2, 3, 2 and 6 days for the corresponding period in 2021, 2020, 2019 and 2018 respectively. The 2-day dialogue and deliberation are attempts to further elicit views and experience of major stakeholders as well as to seek their cooperation, active involvement and participation in our attempts to control air pollution in the NCR and adjoining areas. Considering the magnitude and extent of the problem, as well as lakhs of pollution causing sources, it must be clearly understood that unless citizens actively contribute to and participate in pollution control measures, abatement of air pollution will continue to remain a major challenge. Air pollution is also a growing risk factor and directly contribute to ill health, especially to the vulnerable sections of the population. The 2-day session will touch upon a wide variety of issues like National Clean Air Mission, city-specific action plans, role of municipalities, as well as measures to be taken for controlling air pollution in major identified sectors. During today and tomorrow, experts, practitioners, and administrators will be presenting their experiences as well as approaches that could be followed in sectors like transport, industries, diesel generated sets, municipal solid waste management, stubble management, etc. Before concluding, may I state that we are not only looking for a very meaningful, constructive and productive 2-day session, but also active cooperation and contribution of various stakeholders in addressing the issues related to air quality in NCR and adjoining areas. Thank you very much.
Thank you very much, sir. With all means of warm and friendly welcome, I have the pleasure to invite on the dais Ms. Leena Nandanji, Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, to share her views and experience with us. Honorable Minister, Environment, Forest and Climate Change, and Labour and Employment, Shri Bhupendra Yadav-ji. Honorable MOS for Power and Heavy Industry, Shri Krishan Pal Gujar-ji. Chairperson, CAQM, Dr. Kuti. Chairperson of the Haryana Pollution Control Board, Shri P. Raghavendra Rao. My colleagues from the Ministry of Environment, representatives from state governments, NGOs, private sector, friends from the media, ladies and gentlemen. This dialogue on clean air could not have come at a more opportune moment, given India's enunciation of its goals at COP26 and the vision that has been translated into action through the recent budget announcements. There is a long way to go. Dr. Kuti has just spelled out the status with regard to where we are in terms of bad and poor days and good days with respect to the last few years. But as we have seen, there is a long way to go. And the right to clean air is something that we have to all work towards. Therefore, this interaction with all the key stakeholders, the municipal bodies, state governments, representatives from the private sector and NGOs, and above all, between all of us, the people of India, has to be seen as a great significance because it will enunciate the points that need to be taken up, the action plan that has to be followed so that we can translate this vision into action and into actual deliverables on the ground. These kind of interactions are very meaningful, especially because we need to discuss not only the best practices, but also learn from the failures so that we do not replicate them, so that we know the right path to go. And having seen what is it that has worked, how do we scale it up? How do we reduce the time taken to improve the quality of the days, especially in the NCR region? That is going to be the real challenge. How do we innovate and encourage more innovation? How do we remove bottlenecks that come in the way of successful project implementation? These and more issues, I'm sure, will be debated and discussed in the course of these next 2 days. And very meaningful points will emerge out of it, which we will look forward to, because all these deliberations ultimately have to result in recommendations so that we can move forward in a spirit of cooperation, and collaboration. So let me say that from the Ministry of Environment, we are keenly looking forward to the outcome of this 2-day workshop. And we will spare no effort to ensure that whatever are the deliberations, whatever are the recommendations emerging out of this workshop are taken up by us within the ministry, with the line ministries, with the state governments, with any stakeholder, whoever it is who is important to make our objective achievable. That is something that we will take up in right earnest. So thank you very much to the CAQM for organizing this 2-day workshop, and we look forward to the deliberations, and we wish that all the sessions are very successful and meaningful. Thank you. Thank you very much, ma'am, for your words of wisdom. Ladies and gentlemen, we have a very special video message by the Honorable Chief Minister of Haryana, Shri Manohar Lalji. It's a real privilege for all of us to witness this video message. And I now request everyone to kindly direct your attention towards the screen. राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज द्वारा आयोजित स्वच्छ हवा की ओर संवाद में सभी प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए व्यवहारिक उपाय तलाश करना है। मैं इस सार्थक संवाद के आयोजन के लिए आयोग की सराहना करता हूं। आपने दिल्ली व हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधिकारियों, तकनीकी विशेषज्ञों, उद्योगपतियों, गैर सरकारी संगठनों, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों को इस एक ही मंच पर लाकर एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। मैं समझता हूं कि इस कार्यशाला में वायु प्रदूषण नियंत्रण के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर सार्थक चर्चा होगी।
जो एनसीआर में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं, इनमें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु मिशन कार्यक्रम के तहत तैयार की गई विभिन्न कार्य योजनाओं, वायु प्रदूषण को कम करने में नगर निकायों की भूमिका, निर्माण व तोड़फोड़ गतिविधियों से उठी धूल के प्रबंधन, वाहन प्रदूषण, फसल अवशेषों का स्थायी प्रबंधन और औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण शामिल है। हरियाणा के कुल 22 जिलों में से 14 जिलों पर एनसीआर नीतियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रदेश का 60% से अधिक क्षेत्र एनसीआर में आता है। प्रदूषण इस क्षेत्र में दिल्ली के बाद हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। हमने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कई अच्छी पहल की हैं। हम वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए ई वाहन नीति के माध्यम से ई वाहनों को प्रोत्साहित करने हेतु महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। पिछले कई वर्षों से हम राज्य में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं। हमने केंद्र सरकार की इन सीटू और एक्स सीटू नीतियों को बहुत सफलतापूर्वक लागू किया है। इस दिशा में फसल अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए किसानों को पर्यावरण के अनुकूल कटाई उपकरण वितरण करने का लक्ष्य हासिल किया है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही हरियाणा प्रदेश फसल अवशेष जलाने के मामले से मुक्त हो जाएगा। हमने अपने एनसीआर जिलों की वायु गुणवत्ता की निगरानी में ठोस पहल की है और राज्य में 29 कंटिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस स्थापित किए हैं। इनमें से 21 स्टेशन एनसीआर के 14 जिलों में स्थापित किए गए हैं। हम बेहतर निगरानी और आम जनता में जागरूकता के लिए और अधिक निगरानी स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। हमने प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुछ विशिष्ट और लक्षित क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सुधार करने के लिए प्रत्येक जिले में वायु प्रदूषण के हॉटस्पॉट को विभिन्न उपायों के माध्यम से ग्रीन स्पॉट में बदलने की योजना बनाई गई है। इनमें पौधारोपण, सड़कों की टॉपिंग, औद्योगिक उत्सर्जन का नियमन, वाहन प्रदूषण पर नियंत्रण और C&D कचरे तथा ठोस कचरे का प्रबंधन शामिल है। हम ऐसे हॉटस्पॉट को ग्रीन स्पॉट में बदलने के लिए आम जनता को भी जागरूक कर रहे हैं। जहां तक औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण का संबंध है, हमने पहले ही अपने एनसीआर जिलों में सभी रेड श्रेणी की इकाइयों में ऑनलाइन एमिशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस स्थापित करने की अनिवार्यता बनाने की नीति अपनाई है। ये डिवाइसेस केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से जुड़े हुए हैं। सभी उद्योगों की उत्सर्जन गतिविधियों और राज्य की वायु गुणवत्ता पर निरंतर निगरानी रखने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्यालय में एक समर्पित निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तकनीकी विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, कार्यान्वयन एजेंसियों, नागरिक समाज संगठनों और उद्योगपतियों के इस सम्मेलन में वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण मुद्दों और उन्हें हल करने के उपायों पर सार्थक विचार विमर्श होगा। मैं एक बार फिर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज़ को राज्यों और अन्य हितधारकों के समन्वय के साथ ये सराहनीय कार्यक्रम आयोजित करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं और इसकी सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। मैं राष्ट्रीय यहाँ पर उपस्थित दर्शकों को संबोधित करने के लिए मंच पर अभिनंदन कीजिए हमारे मुख्य अतिथि श्री भूपेंद्र यादव जी का, ऑनरेबल मिनिस्टर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आज के कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट द्वारा आयोजित 2 दिन के इस डायलॉग में आप सभी का स्वागत है। मंच पर विशेष रूप से उपस्थित हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, बाद में यहाँ के हमारे लोकप्रिय जनप्रतिनिधि, बहुत सारे संगठनात्मक
और देश के दायित्व को निभाते हुए अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री, हमारे बड़े भाई सम्मान्य कृष्णपाल जी, मंच पर उपस्थित कमीशन के चेयरमैन श्री MM कुट्टी जी, पर्यावरण विभाग की सचिव श्रीमती लीना नंदन जी, सेंट्रल CPCB बोर्ड के चेयरमैन श्री तन्मय कुमार जी, पर्यावरण विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी श्री गंगवार जी, हरियाणा के पॉल्यूशन कमीशन के चेयरमैन श्री राघवेंद्र जी, कमीशन के सेक्रेटरी श्री नोटियाल जी, हमारे सामने उपस्थित हमारे मेरठ के सांसद राजेंद्र जी, विभिन्न NCR रीजन के सारे मेयर, अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, सबसे पहले तो मैं श्री कुट्टी जी को बधाई देना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जिस अपेक्षा के साथ एयर क्वालिटी कमीशन को संसद में बिल पारित करके स्थापित किया था, उसको बहुत ही संजीदा तरीके से उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कमीशन बहुत सक्रियता के साथ NCR में सक्रिय हुआ है। मैं आप सब की तरफ से कमीशन को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ। जब संसद के अंतर्गत एयर क्वालिटी कमीशन बिल को पास किया गया था, तब उस समय हमने जवाब देते हुए भी कहा था कि भारत सरकार एक विशिष्ट एनवायरमेंटल लॉ को लेकर के आई है। हमने पहली बार ये मान्यता दी है कि पॉल्यूशन जो है ये ज्योग्राफिकल ना होकर एयर शेड के साथ इस समस्या का जुड़ाव है, और इसलिए एयर शेड को हमने, उस क्षेत्र को हमने इस कमीशन के अंतर्गत परिभाषित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बिल की अवधारणा को बनाते समय भी ये इन मानकों को स्पष्ट किया कि जब हम किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो समस्या के समाधान केवल कानून बनाने से नहीं, उस बॉडी को एक साइंटिफिक एटीट्यूड प्रदान करना, रिसोर्स प्रदान करना, पब्लिक पार्टिसिपेशन और फिर उसके सुधार के उपायों के सभी प्रकार की संबंध शक्तियाँ भी उस कमीशन को देकर के एक व्यवस्थित तरीके से एयर पोल्यूशन की लड़ाई को लड़ने के लिए भारत सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कमीशन की स्थापना की गई। और इसके लिए भी मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका विज़न और हमारी संसद को भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि एक बहुत बेहतरीन कानून जो भविष्य में पूरे भारत में भी एयर पॉल्यूशन की लड़ाई के लिए नज़ीर बन सकता है, ऐसा कानून हम लोग लेकर के आए। इसके साथ ही साथ 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से उद्घोषणा करी थी पूरे देश के लिए NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को चलाने का संकल्प किया। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा देश में 132 शहरों में हम लोगों ने एयर क्वालिटी की मेजरिंग करने के लिए मापक यंत्रों को स्थापित भी किया। और अब पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम के द्वारा पिछले दिनों मुंबई में एक सेमिनार का आयोजन किया था, जिसमें हमने पश्चिमी भारत के राज्यों को बुलाया था। फिर ओमिक्रॉन कोरोना की तीसरी लहर आई और हमने उस कार्यक्रम को स्थगित किया, लेकिन अब शीघ्र ही उस कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरे देश भर में जितनी हमारी स्थानीय प्रशासन की संस्थाएं हैं, म्यूनिसिपैलिटी है, कॉरपोरेशंस हैं, पंचायत हैं, नगर पंचायत हैं, कई जगहों पे बहुत छोटी नगर पालिकाएँ हैं, तो जो हमारी स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, NGOs हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको लेकर के इस पूरे कार्यक्रम को देश भर में हम लोग अब वापस से क्षेत्रीय सेमिनारों के माध्यम से आगे करेंगे। पिछले दिनों जब हमने मुंबई में कार्यशाला का आयोजन किया था तो मंत्रालय के द्वारा MOU भी साइन किए गए थे, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विज़न है कि फाइनेंस कमीशन ने 4400 करोड़ रुपए का प्रावधान हमारी स्थानीय संस्थाओं में, स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में इस क्लीन एयर मिशन का प्रोग्राम कैसे चले, उसके लिए
एक धनराशि की भी व्यवस्था करी है। और कल मेरे से कुछ प्रतिनिधिमंडल मिलने आए थे। हमारे मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, उस नोटिफिकेशन में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद किया। इस जुलाई से तो वो प्रक्रिया बंद हो जाएगी, क्योंकि हमारी म्यूनिसिपैलिटी से लेकर के सब जगहों पे जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उस सिंगल यूज़ प्लास्टिक के कारण नालियाँ चौक हो जाती है, या उसका जो अग्निशमन होता है उसके कारण जो प्रदूषण होता है, तो पूरे शहर में एक तरीके से हम चारों तरफ एक गंदगी का वातावरण देखते हैं। तो कुछ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के लोग भी आए थे। मैंने कहा था ये पूरी तरीके से लागू होगा 2018 में। पूरे दुनिया के देशों का जब एक कार्यक्रम भारत में हुआ, तो प्लास्टिक की इस लड़ाई का आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और मैं परसों ही नैरोबी से लौटा हूँ। वहाँ पर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली का यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत कार्यक्रम हुआ। 1972 में स्टॉकहोम में दुनिया में पर्यावरण की लड़ाई की सबसे पहली शुरुआत हुई। भारत ने तब भी भाग लिया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 2018 में दुनिया के सम्मेलन में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक का आह्वान किया था, आज दुनिया के देशों में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली ने रेजोल्यूशन पास करके उसको पूरी तरीके से स्वीकृत किया है। ये भारत के नेतृत्व की मान्यता को और दर्शन को दुनिया की स्वीकृति के रूप में दर्शाता है। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है कि इसको पूरे संकल्प के साथ हमको आगे कैसे बढ़ाना है। और इसलिए जब कार्यक्रम किया और कुट्टी साहब ने मेरे से बात करी, तो जो इस कार्यक्रम की रचना बनी है, ये तो उद्घाटन का कार्यक्रम ठीक है, उद्घाटन का कार्यक्रम एक औपचारिकता है, लेकिन इसके बाद जो अगला सेशन होने वाला है, पहला सेशन ही हमारा सिटी स्पेसिफिक प्लान होना चाहिए। गुड़गांव का क्या प्लान है, फरीदाबाद का क्या प्लान है, मेरठ का क्या प्लान है, गाजियाबाद का क्या प्लान है। जो एनसीआर रीजन में जो हमारा सिटी स्पेसिफिक एरिया है, सिटी स्पेसिफिक, इसीलिए हमने सारे मेयर्स को, सांसदों को और जनप्रतिनिधियों को और एनजीओस को बुलाया कि हमारा एक अल्टीमेटली एनसीआर पूरा कहने से एनसीआर नहीं, एनसीआर का सिटी स्पेसिफिक प्लान हमारा क्या हो सकता है। और उसमें म्यूनिसिपैलिटी की, म्यूनिसिपल कमिश्नर की एक बड़ी भूमिका रहने वाली है। इसलिए हम ये मान के चले कि गुड़गांव का म्यूनिसिपल कमिश्नर कर लेगा, ऐसा नहीं है। म्यूनिसिपल कमिश्नर के साथ जो एजेंसीज लग रही हैं, अभी हम लोगों ने पूरे देश भर में जितनी भी एजेंसीज काम करती है, 36 से ज़्यादा एजेंसियाँ, अभी ओमिक्रॉन के कारण वो हमारा कार्यक्रम स्थगित हुआ, लेकिन उन सब कार्यक्रमों में लगने वाले लोगों को, क्योंकि भारत सरकार की मान्यता है कि सब स्कीमें अलग अलग चलेगी, उससे ज़्यादा अच्छा है कि स्कीमों का कन्वर्जेंस किया जाए। जो हमारा एयर क्वालिटी जो कमीशन है, इनको भी हमने कहा कि आप एनसीआर में आप केवल डायरेक्शन निकालेंगे, उससे अच्छा है जो जो एजेंसीज इसमें भाग लेती हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कॉरपोरेशंस हैं, हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, उनका सबका स्कीमों का कन्वर्जेंस होना चाहिए। और पता होना चाहिए कि गुड़गांव में नया प्रयोग हुआ है तो फरीदाबाद का सिटी स्पेसिफिक प्लान ये है, गाजियाबाद का ये है, नोएडा का ये है। और अब तो हमारे फरीदाबाद के भी आसपास छोटे छोटे नए शहर हो गए, मानेसर भी यहाँ पे कॉरपोरेशन बन गया। तो जब कॉरपोरेशन नए बना रहे हैं तो हमें नए ज़्यादा पर्यावरण की और स्वच्छता की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमारे छोटी म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के सिटी स्पेसिफिक प्रोग्राम, उसके साथ रोल ऑफ म्यूनिसिपैलिटी और एजेंसीज का रोल, और इस पर भी पूरी तरीके से चर्चा होने वाली है। और मेरा आपको ये कहना है कि मैं कुछ कह करके नहीं जा रहा हूँ, लेकिन चर्चा में आपने जो विषय रखेंगे उसका एक पूरी तरीके से एक पूरा प्रोग्राम बना के, दिल्ली के एनसीआर के प्रोग्राम के लिए जो एक डिटेल प्रोग्राम बना है, अभी हमारे कमीशन ने भी उसको पूरी तरीके से उसमें नए सुधार किए, नए लक्ष्य तय करें। लेकिन ये पहली बार हम इस पार्टिसिपेटिव तरीके से करना चाहते हैं ताकि हमारी म्यूनिसिपैलिटी एजेंसी से लेकर के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो इसमें अपना योगदान दें, अपने शहर में क्या करेंगे और कुल मिला करके क्या करेंगे। और ये हमारी पूरी चर्चा का विषय इस सेशन के दौरान चलने वाला है। एक और जो एनसीआर में बड़ा विषय है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है। अल्टीमेटली पॉल्यूशन का और एयर क्वालिटी को ख़राब करने में जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसका कंट्रोल, जो ओपन वेस्ट जो है, हम देखते हैं कचरों के अंबार भी जो पड़े रहते हैं, इसका मैनेजमेंट का तरीका क्या होना चाहिए। और ये कोई हम ऊपर से नीति के रूप में नहीं थोपेंगे, ये हमारा सबका लक्ष्य है। एनकैप का सबसे बड़ा काम जो है, एनकैप के मूवमेंट का ये है कि म्यूनिसिपैलिटीज अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में विचार करें और जो ओपन जो पूरा वेस्ट है उसके बारे में पूरा विचार करें।
उसके साथ ही साथ, चूँकि ये तो माना जाता है कि दिल्ली के इस तरफ अरावली, अदरवाइज तो रेगिस्तान ही होता है। अरावली हमारी बहुत बड़ी रक्षा भी करता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बात हुई, हमारा सहरावन, गैरतपुर से लेकर के नूह तक का जो पूरा पहाड़ का एरिया जा रहा है, और मैंने पिछले दिनों ट्वीट भी किया था कि हमने अरावली के रेस्टोरेशन के लिए हरियाणा में बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए हरियाणा सरकार और यहाँ के मुख्यमंत्री भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन अरावली को वापस से रेस्टोर करना, अरावली का इकोसिस्टम को खड़ा करना, गुजरात इधर गुड़गांव में काफ़ी सारे हमारे एनजीओज और काफ़ी कॉरपोरेट क्षेत्र के लोग भी लगे हैं, और कृष्णपाल जी बैठे हैं, ये भी अरावली में खूब घूमे, मैं भी घूमा, हम दोनों साथ ही खूब घूमे। पर हमारा पूरा ये जो पहाड़ का एरिया है जो बच रहा है, इसका रेस्टोरेशन को करने के लिए, इसके इको सेंसिटिव जो जोन है उसको बचाने के लिए हम लोग किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं। क्योंकि दिल्ली का जो पूरा हमने रिज के एरिया को भी संभाल के रखा है। अभी 2 फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड डे थे। हरियाणा की 2 झीलें, हमारी सुल्तानपुर की झील और भिंडावास की झील को हमने रामासर कन्वेंशन का दर्जा दिया। सुल्तानपुर पे कार्यक्रम भी किया, सुल्तानपुर के गांव के आसपास के लोग भी आए थे। और फिर हमारा दिल्ली में चाहे जसोला के पास हो, हमारा संजय गांधी उद्यान का हो, जो भी हमारा एरिया है, जो यमुना के बेड का एरिया है, ये पूरा हमारा एनसीआर का एक इकोसिस्टम है। और एनसीआर के इस इकोसिस्टम में जो हमारा जो नेचर का रिवाइवल है, उसको जो हमें बचाना है, अपनी लेक से लेकर के अपने जो अरावली के पहाड़ों को लेकर के, उसको करने के साथ ही साथ डस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी पूरा एक एक्शन प्लान हमारी कॉलोनियों के हिसाब से होना चाहिए। हमारी कॉलोनियों में जो ओपन स्पेस है, वहाँ पे हम पेड़ लगाने का कार्यक्रम कर सकते हैं क्या? अभी पिछले दिनों कुछ स्कूल्स के प्रिंसिपल्स के साथ मेरी बात हुई थी। स्कूल्स को स्पेसिफिक एरिया करके ही एक ग्रीन एरिया अपना डेवलप करना चाहिए और दिखना चाहिए 3 साल बाद ये किया। बच्चों को अभी से ही उस चीज़ों में हमको इन्वॉल्व करने के लिए एनसीआर में हम अपने ग्रीन ट्री कवर को ओपन स्पेस पे किस तरीके से बढ़ाएं, जिसके कारण हम डस्ट मैनेजमेंट को भी कर सकें। और इसलिए एक सेशन यहाँ पर करने वाले हमारे कैंपा के शायद जो अथॉरिटी वाले सुभाष चंद्र जी उस सेशन को लेने वाले हैं। हमने पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा अभी एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसको हम नगर वन योजना कहते हैं। नगर वन योजना के अंतर्गत हम आह्वान करते हैं कि शहरी क्षेत्र में 5 हेक्टेयर और उससे ज़्यादा की जगहों पे हम नगर वन का कार्यक्रम करना चाहते हैं, ताकि जगह जगह पर एक सघन वन और इस प्रकार का विषय डेवलप हो कि शहरों के अंदर भी पॉकेट्स में ग्रीन कवर बढ़ना चाहिए। लेकिन जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होनी चाहिए, हम तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बुरा नहीं मानते, लेकिन उसका डस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट भी होना चाहिए। दोनों विषय साथ साथ चलने चाहिए। क्योंकि अगर डस्ट उड़ाते हुए हमारे डंपर वगैरह चलते हैं तो अल्टीमेटली किसके, मैं बार बार आप लोगों से भी पूछता हूँ कि डस्ट उड़ती है तो किसके फेफड़ों में जाती है? कोई बाहर के आदमी के नहीं जाती, हमारे ही जाती है, हमारे ही बच्चों के फेफड़ों में जाती है, हमारे ही परिवार के फेफड़ों में जाती है। जो पॉल्यूशन की समस्या है, सरकार इसको पूरी तरीके से लड़ने के लिए, संसाधन उपलब्ध कराने के लिए, पार्टिसिपेटिव इन्वॉल्वमेंट करने के लिए, सारे मिशन के लिए, लेकिन इसको हमें लोगों का एक मूवमेंट बनाना पड़ेगा, ताकि हम हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है कॉन्शियस से अपनी अंतरात्मा के साथ करें कि ये काम असली काम है। और इसलिए इस डस्ट मैनेजमेंट को लेकर के या ओपन एरिया के डस्ट मैनेजमेंट को लेकर के या ओपन एरिया के डस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम को पूरा करते हुए दिल्ली के ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए जो नगर वन योजना है, उसके लिए भी इस सेमिनार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दिल्ली के आसपास एनसीआर के क्षेत्रों में 2 और बड़े विषय है। एक विषय बायोमास का है, और मेरा ये मानना है कि हमने जो कानून भी बनाया है, मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहूँगा, हमने बिल्कुल बायोमास जलाने को डीक्रिमिनलाइजेशन किया है, सोच समझ के किया है। क्योंकि हम जानते हैं कि कृषि क्षेत्र में काम करने वाले विषय को हमें उनको क्रिमिनलाइज नहीं करेंगे, हमने बिल्कुल मना कर दिया और स्पष्टता से करा, बल्कि उनको इंसेंटिव करके, उनको प्रेरित करके, उनको परिवर्तन के लिए उस चीज़ का कैसे उपयोग करके लिए हम प्रेरित करेंगे। और पिछले साल अगस्त में हमारे पर्यावरण मंत्रालय में लगभग वीकली मॉनिटरिंग हम लोगों ने करी। मैं बधाई भी देना चाहूँगा कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने पहली बार कितना टेंडर निकाला था, 20 लाख टन का टेंडर निकाला, और 1 साल के लिए नहीं 5 साल के लिए निकाला। कुटी साहब भी उस बात के गवाह है, वो भी उस मीटिंग के अंतर्गत है।
20 लाख टन 5 साल के लिए ये भारत सरकार के द्वारा टेंडर निकाला गया, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के द्वारा निकाला गया, ताकि पराली को बायोमास के लिए परचेस करें। और पिछले साल तो परचेस हुआ भी है। अब हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। अब लोगों के ध्यान में आया है कि इतना बड़ा टेंडर भारत सरकार के द्वारा निकाला गया, अभूतपूर्व है। मैं बधाई देना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहूँगा कि इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी हमने पराली की परचेस करने के लिए भारत सरकार ने करी है। और इसलिए इस बार उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से करना होगा। और भारत के तो हमारे एक नए वैज्ञानिक को, टकाचार को COP26 में सम्मानित भी किया गया था। उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिया। नई टेक्नोलॉजी में हम पराली को निकाल के उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए फिजिबल बनाकर उसका प्रेजेंटेशन भी कराया। तो नई टेक्नोलॉजी को हम ये जो अपना एक्स सेतु मैनेजमेंट के लिए, बायो मैनेजमेंट के लिए हम यहाँ पर चर्चा भी करने वाले हैं। कल आएंगे भी, कल वो प्रेजेंटेशन भी होने वाला है। तो हम अब अपने किसानों को, उनका जो पराली है वो वेस्ट नहीं है, वो भी एसेट है उनके लिए, वो उनका इनकम का साधन है। ये परिवर्तन और सोच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। और इसको जो टेंडर निकाला, इसको सक्सेस करने की जिम्मेदारी कमीशन की, सरकारों की, हम सब की है, क्योंकि हम किसानों के जीवन में भी परिवर्तन लाना चाहते हैं। और इसलिए अभी इतना ही करने के साथ ही साथ बायोमास मैनेजमेंट के साथ जो दिल्ली की बाकी समस्या है, हमारे यहाँ पर बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा भट्टा उद्योग भी है। उनका 2018 से एक नोटिफिकेशन पेंडिंग पड़ा था जिगजैग टेक्नोलॉजी का, हमने उसको पूरा किया है। और हम ये कहना चाहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी के साथ उनका भी जीवन सुरक्षित रहे। इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग, राइस मिल एसोसिएशन से लेके सब लोग मेरे को मिले हैं। मेरा ये कहना है कि जहाँ पर हमने अनिवार्यता करी है CNG और PNG की, उस पर आप जाइए। आपके साथ हमारी सरकार किसी भी तरीके से, हम ये चाहते हैं इंडस्ट्री भी जीवित रहे, रोजगार भी जीवित रहे, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और दिल्ली भी स्वच्छ रहे। हम सब आपका सहयोग इसके लिए चाहते हैं। और इसलिए आज मैं वापस दिल्ली जा रहा हूं, क्योंकि आज हमारे श्रम मंत्रालय का आइकॉनिक वीक शुरू हो रहा है। लेकिन मुझे कुट्टी साहब ने कहा कि हम वापस NGO के साथ बैठना चाहते, तो मैं दोबारा फिर आने वाला, क्योंकि मेरा मानना है कि जन सहभाग के बिना हम किसी प्रकार से केवल ये सोचे कि हम सरकार की दृष्टि से लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हमें आपके जन सहभाग की भी आवश्यकता है। हम चाहते हैं जो भी इस विषय पे काम करना चाहते हैं, जो भी स्वच्छ दिल्ली के लिए काम करना चाहते हैं, जो भी स्वच्छ NCR के लिए काम करना चाहते हैं, हम आपके साथ ओपन डायलॉग करके इन विषयों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसके लिए हमारा एयर क्वालिटी कमीशन भी पूरी तरीके से तैयार है। बीच में जब ऑर्डर आया था तो मेरे को नहीं लगता कि जो भी रिप्रेजेंटेशन आया था, मैंने सबको रेफर किया था। और मेरे को इस बात का संतोष है कि 100% रिप्रेजेंटेशन को मिलकर के उनका समाधान करने का काम ये एयर क्वालिटी कमीशन ने किया। हमने कभी किसी को मना नहीं किया, किसी के साथ डायलॉग को मना नहीं किया। हम चाहते हैं कि दिल्ली दुनिया का सबसे बेहतरीन वायु के लिए शहर के रूप में चिन्हित, और इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है। जो पूरा पॉल्यूशन का जो विषय है, चाहे व्हीकल पॉल्यूशन हो, चाहे डस्ट पॉल्यूशन हो, चाहे ओपन एरिया का जो पूरा जो वेस्ट है उसका विषय हो, चाहे बायोफ्यूल का विषय हो, और अब तो दिल्ली में BS4 से हम लोग BS6 पे गए हैं, हमने परिवर्तन किया ही है। और सब लोगों ने इसमें पूरा तरीके से सब प्रकार का सहयोग दिया है। लेकिन ये करना क्यों जरूरी है? इस समय पूरे दुनिया में 3 बड़े संकट को लेकर के कन्वेंशन चलती है। सबसे पहला विषय क्लाइमेट चेंज का विषय रहता है, दूसरा विषय बायोडायवर्सिटी को बचाने का विषय रहता है, और तीसरा विषय डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड का, जमीन का जो मरुस्थलीकरण हो रहा है। ये तीनों विषय इस समय दुनिया में चलते हैं। इन तीनों विषयों पे भारत एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। COP26 जब ग्लासगो में हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को मंत्र दिया था, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल। हमारा जीवन जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल के लिए कैसे बने। हमारे जीवन की पद्धतियाँ, हमारे इधर पूरे गांव का ये जो पूरा एरिया है, कभी जोड़ हुआ करते थे, पानी के लिए जगह हुआ करती थी, मिट्टी खोदने का भी एक सिस्टम होता था। इन सब चीज़ों को हम जो प्रकृति के साथ नेचर के साथ जो जीवन जीते हैं, उस जीवन को किस प्रकार से जी सकते हैं। और पिछले दिनों जब UNEP की डायरेक्टर से मैं नैरोबी में मिल रहा था, मैंने उन्हें प्रधानमंत्री जी का लाइफ स्टाइल का मंत्र बताया। उन्होंने कहा मैं इसको समझ गई। उन्होंने जो मुझे बात कही, मेरे को भी लगा कि कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट जाता है। उन्होंने कहा कि येस, आई एम एग्री।
हम जो भी मदर अर्थ से लेते हैं वापस तो हम केवल कचरे के रूप में ही देते हैं। हम लेना तो खूब जानते हैं, देने में हम कैसे जानते? देने में इतना भी नहीं करते कि घर के अंतर्गत कचरे को भी 2 भागों में बांट दें। ये जो अजैविक है ये अलग है, जैविक है, इतनी भी मेहनत हम नहीं करते, केवल बाहर फेंकना जानते हैं। कचरा ढंग से फेंक दें, ये भी बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। अगर शहरों में इतना भी अभियान चला दें कि अपने घर के कचरे को 2 भागों में बांटने के लिए एक 5 मिनट का समय होगा, लेकिन कितनी बड़ी कचरा भी हम कैसे फेंकते हैं हमको ध्यान में करना चाहिए। इसलिए जो सॉलिड वेस्ट शहरों के अंतर्गत है, इसको एक पूरा, अगर हम लाइफ के रूप में जाना चाहते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल है, तो केवल अपना घर साफ ना रखें, अपना शहर, अपना मोहल्ला भी साफ रखने की जिम्मेदारी ये हम लोगों को करनी है। और इसलिए मैं जानता हूँ कि 2 दिन का ये जो सेमिनार होने वाला है, ये सेमिनार केवल सेमिनार के लिए नहीं वाला है, इसलिए इसको सेमिनार रखा ही नहीं, इसको डायलॉग का है। और डायलॉग के बाद आगे एनसीआर के रीजन में जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनको बधाई भी देना चाहूँगा। इस बार भी जब एक विषय आप लोग रख रहे हैं, जो हमारा एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है उसका हम बायो कंपोस्ट के रूप में कैसे इस्तेमाल करें, उसके एडवांटेज क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, उसको भी पूरी चर्चा के रूप में हम करने वाले हैं। दिल्ली सरकार ने भी ये बायो कंपोस्ट का काम किया था 4000 एकड़ में, और हरियाणा सरकार ने तो उससे भी ज़्यादा 20 गुना ज़्यादा 1 लाख एकड़ में काम किया। पंजाब में भी 1 लाख एकड़ में काम हुआ, यूपी में 6 लाख एकड़ में काम हुआ। लेकिन उसके भी अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। बायोमास का यूज़ किस प्रकार से करना है, किसानों के जीवन में परिवर्तन किस तरीके से लाना है, अपने बढ़ते हुए एनसीआर एरिया में हम एयर पोल्यूशन को लेकर किस तरीके से पब्लिक मूवमेंट और अवेयरनेस का कार्यक्रम कर सकते हैं, और कचरा प्रबंधन से लेकर सब चीज़ों में इफेक्टिव म्यूनिसिपलिटीज़ किस तरीके से काम कर सकती है। और पहली बार एयर क्वालिटी कमीशन का जो जुरिस्डिक्शन भी है वो 3-4 राज्यों में आता है। उसमें आपस में बेटर कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकता है, साइंटिफिक एटीट्यूड कैसे अपना सकते हैं। तो 2 दिन के जो चलने वाला ये जो डायलॉग है, इसमें जो सारे विषय हैं, ऐसा मत समझिए कि ये विषयों पे मेरे को तो लग रहा है कि क्या विषय लिए जाए, किस प्रकार से पार्टिसिपेशन किया जाए। पिछले 4 महीने से तो कुट्टी जी तैयारी चल रही है, 4 महीने से हमारी पूरी तैयारी चल रही है। हर विषय को सोचा है, अधिकारियों ने सोचा है, एग्जीक्यूशन में सोचा है। कई बार मेरे कई स्तर पे हमारी बातचीत हुई है, और आज बातचीत होने के बाद मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये 2 दिन का डायलॉग आने वाले समय में हमारे एनसीआर के लोगों में जीवन परिवर्तन करने के लिए लाए। हम किसी को बंद नहीं करने चाह रहे, हम सबको रेगुलेट करने जा रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि एनवायरनमेंट माने बंद करेंगे, हम रेगुलेट करना चाहते हैं, और हम रेगुलेट आपकी कॉन्शियस के साथ भी करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान को भी हम बढ़ाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने भारत में नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम की शुरुआत करी है। हम इसमें आपका सहयोग चाहते हैं, हम इसमें आपका संकल्प चाहते हैं, हम इसमें आपका विश्वास चाहते हैं, हम इसमें आपकी भागीदारी चाहते हैं, और हम इसके माध्यम से दिल्ली की हवा को स्वच्छ करना चाहते हैं, जिसमें आपका सहयोग मिलेगा। इस अपेक्षा के साथ मैं 2 दिन के डायलॉग के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं भी इसमें कई सेशन में भाग लूँगा, आप लोग भी भाग लेंगे, और इसके बाद एक एक्शन प्रोग्राम को आगे बढ़ाकर दिल्ली को एक स्वच्छ वायु वाला शहर पूरे एनसीआर रीजन को बनाएंगे, जब वायु भी स्वच्छ हो, लोगों का जीवन भी सुरक्षित हो, संपन्न हो, उद्योग भी बढ़े, रोजगार भी बढ़े, लेकिन पर्यावरण भी अच्छा रहे। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपना विषय को पूरा करूंगा, और आपका ये जो डायलॉग मैं आप सबके लिए ओपन करता हूं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, आपके इन शब्दों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। I request Dr. M.M. Kutty, Chairperson CAQM, to present a token of respect to the Chief Guest, Shri Bhupendra Yadav ji, Honorable Minister, Environment, Forest and Climate Change. Sir, it's a token of respect, a token of gratitude from our end. Thank you very much for sparing your valuable time for us today. I once again request Dr. M.M. Kutty to present mementos to Shri K.P. Gurjar ji, Honorable Minister of State for Power and Honorable Minister of State for Heavy Industries. Thank you very much, sir, for sparing your valuable time for us. May I now request Shri Arvind Nautiyal, Member Secretary, CAQM, to present memento to Dr. M.M. Kutty, Chairperson, CAQM. Thank you, sir. Thank you very much. Shri P. Raghavendra Rao, Chairman, HSPCB.
Ms. Leena Nandan, Secretary, MOEFCC. Shri Tanmay Kumar, Additional Secretary, MOEFCC and Chairman, CPCB. Shri Naresh Pal Gangwar, Additional Secretary, MOEFCC. Thank you very much. Ladies and gentlemen, with this, we come to the end of the inaugural session. Once again, a loud round of applause for all our esteemed dignitaries present on stage. Thank you very much for gracing this event with your benign presence. I have an announcement to make. If the speakers of all the upcoming technical sessions have a presentation to make, kindly hand over the same to Dr. Soumya Chatterjee. He's available at the console. If the speakers of the upcoming technical session have a presentation to make, kindly hand over the same to Dr. Soumya Chatterjee. He is available at the console. The first technical session will commence at sharp 11:15 a.m. Before this, we'll have a quick networking tea and coffee break. The same is organized in the gallery outside the auditorium. Try and assemble inside the auditorium at 11 a.m. so that we can start the session in time. Thank you very much. Enjoy your refreshments. ये करना है क्या इधर कोई चश्मा तो नहीं है चश्मा तो नहीं पड़ा हुआ
बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, कोई बात नहीं, सब चलता है, सब आ जाएंगे सुनने के लिए। हो गया तो सर? अब मैं वो लगा दूँ? हाँ लगा दूँ। पॉइंटर है हम लोग, हमारा दिल्ली भी दिखा हाँ पॉइंटर है। पॉइंटर है Yes. तो वो सर के पास एक दे दो। सर का पास प्रेजेंटेशन है, पॉइंटर दे दो। संजीव अग्रवाल वाला। फिर सर उस लैपटॉप में एक बार दिखाइए ना सर वो पीपीटी दिल्ली वाला। हाँ हाँ अरे यार वो तो पता है हमें, हमारी सर प्रेजेंटेशन है ना। वही सर, एक ही जो पीपीटी कल भेजा है आप लोगों ने, हाँ सर, हाँ वही हाँ, पीपीटी है वही सर, की बस, पीपीटी है, हाँ। कौन सा सर? ये संजीव अग्रवाल, ये नंबर 1। एक बार हाँ यही है ना सर? प्रोजेक्ट करो। हाँ ठीक है, आई थिंक इट्स फाइन। ठीक है। हाँ ठीक है सर, ये फर्स्ट सेशन के बाद सर आप हाँ हाँ सर को पॉइंटर यहीं पे रखो। पॉइंटर में दे रहा हूँ। पहले तो रवि सेकंड सेशन का है। ठीक। I once again request all the attendees to please be seated as we will start the technical session in next 5 minutes. You can request your colleagues, your co-workers who are still outside to please quickly come and grab a seat. We wish to follow the schedule and avoid unnecessary delays, so we humbly request all of you to please cooperate. Thank you.
Ladies and gentlemen, we are starting in no time. Please be seated and kindly keep your mobile phones on silent or switch off mode. Ladies and gentlemen, welcome back. Now we will proceed with the first technical session on the theme National Mission for Clean Air. Let's welcome Session Chair Shri P. Raghavendra Rao, Chairman HSPCB. Can we all please welcome our Session Chair Shri P. Raghavendra Rao. I urge sir to kindly chair and moderate the session. Thank you very much for your presence and give me a minute as I introduce the key speakers. I request all of you to please join me in welcoming our key speakers, Shri Tanmay Kumar, Additional Secretary, MOEFCC and Chairman CPCB. Kindly keep the applause going as I introduce the rest of the speakers. Shri Naresh Pal Gangwar, Additional Secretary, MOEFCC. Shri Sanjeev Khirwar, Principal Secretary, Environment, Government of NCT of Delhi. Shri Yashpal Yadav, Commissioner, Municipal Corporation, Faridabad, Government of Haryana. Shri Shiv Pujan Yadav, Additional Municipal Commissioner, Ghaziabad, Government of Uttar Pradesh. Shri Avinash Tripathi, OSD, Noida, Authority, Government of Uttar Pradesh. And now over to the Honorable Moderator. The sound people kindly assure that the mics on the dais, they are working. All the mics. Good. Good morning, everybody. We had a wonderful inaugural session in the morning. It was very interesting. Now, for the first session, we have two topics. One is National Mission for Clean Air. The second one is city-specific action plans. We have a galaxy of senior officers who will be delivering their talks. I'm sure you will find them very interesting, and whatever doubts you have, you can raise those queries. They will answer them. Now, let me invite first Mr. Satyendra Kumar, Director, MOEF, to make the presentation, and then Tanmay Kumar and Naresh Pal will be intervening in between, clarifying further. Thank you. So thank you, sir. And on behalf of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, I welcome all the distinguished participants and honorable speakers on the dais. Very good morning to all of you. Sir, with your kind permission, I'd like to request first to have the special remarks from the ministry and from the CPCB, and then I'll go for the presentation, sir. So I invite first Shri Naresh Pal Gangwar, Additional Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, for his remarks. Good morning, everybody. First of all, I welcome you all to this session on National Clean Air Program. In this interactive dialogue being organized by CAQ. As we are all aware that National Clean Air Program was started in January 19, covering non-attainment cities based on their air quality index for last 5 years. And we are, under this program, we are targeting 132 cities throughout the country. In National Capital Region, I think 14 cities are covered under this program. These 132 cities are being provided financial assistance under two programs. So 82 cities are being covered under National Clean Air Program. They are receiving funding from Control of Pollution Scheme being run by Ministry of Environment. And 42 cities, urban agglomerations covering 50 targeted cities, they are getting funding from Finance Commission. Both the fundings are available as supplemental funding to these cities for taking measures to improve their air quality. And apart from that, our major core of the strategy
remains convergence of various schemes of central government ministries and of the state governments, and mobilization of resources from concerned municipal corporations and other agencies of the state government. Under this program, we are focusing on preparing action plans at the national level by central government ministries and other agencies, and at the state level by the state government and their agencies, and for the focused city level action in these 132 cities, city action plans are being prepared in coordination with the agencies which are related to this. And municipal corporations are the major focal point as two major sources of pollution, that is solid waste and dust management. They are being handled by the municipal corporation, and there is a huge, there is a immense possibility of convergence of resources which are already available in Swachh Bharat Mission Phase 2 in this program. The funding from Finance Commission and as well as from the National Clean Air Program is based on the performance of these cities, and detailed guidelines have been issued by the ministry and Department of Expenditure for NCAP as well as for Finance Commission. I think Satyendra will be talking in detail about these guidelines in his presentation. This, as I told, this is a multi-stakeholder, multi-sectoral program, and convergence of action at city level and at the state level and national level is the key to success of this program. Therefore, several round of discussions and forums have been created under this program. At city level, we have city level committees for convergence of action. At the state level, we have committees headed by chief secretaries for convergence, and at the national level, we have committees headed by Chairman CPCB and Chairman CPCB and Secretary EFCC and Additional Secretary MOEFCC. The success, as I told, success of program will depend upon the convergence, and therefore all the agencies at the city level needs to work in take coordinated action to implement this program. To ensure regular monitoring of this program, CPCB has put in place a centralized portal for populating action plans at the city level, state level, and the national level, so that they can be regularly monitored, and the support from the central level and from the state level can be given to the state level, district level agencies. At the end, I would just summarize that the details of this scheme would be presented by Sri Satyendra Kumar, and we will be available after the presentation for answering any questions and queries by the stakeholders. I'm very happy to be here, and and I must congratulate CAQM for organizing this interactive dialogue. And I think with this, it will really give focus and flip to the program of clean air, especially in NCR region, because a representative from NCR region are present in this dialogue. Thank you very much. Thank you, sir, for your kind words regarding the program. And now I invite Shri Tanmay Kumar, Chairman, Central Pollution Control Board, for his remarks. Sir. Thank you, Satyendra ji. Respected Chairman of Haryana State Pollution Control Board, Shri P. Raghavendra sir. Respected Chairman of Commission on Air Quality Management, Shri Kutty sir. My colleague on the dais, Shri Naresh Pal Gangwar, Shri Khairwar ji, Shri Yashpal Yadav ji, and Shri Shiv Pujan Yadav ji, and all the dignitaries who are seated here. I think with the address of Honorable Minister, Secretary Ma'am, and the opening remarks by Mr. Nautiyal, the tone for the dialogue has already been set, and we are, all aware of the challenges in this program. So this program, as Naresh has already mentioned, it is multi-sectoral,
It involves convergence from different departments. It is not a program where Government of India can devolve the funds and the results can be delivered unless all of us think through the program, think of ways and means of, coming out with measures, systemic measures. Unless we do that, I don't think we'll be able to achieve the objective of the program. And the program is a very tough program in the sense that it is based on output. And the output has to improve year on year. Only then can you hope to get the funds. So that is a big challenge under the program. And as we'll see when Mr. Satyendra presents the entire scheme of things, then it will become even clearer to you. So what I would just like to mention is that while we look at the, city plans, what is also important is to look into the systemic issues. By that we mean supposing, just as you have BS6 vehicles, that is a systemic change. Just as we have metro, that is a systemic change. E-vehicles, that is a systemic change. Going for, this gas-based fuel, that is another systemic change. Similarly, can we think of, under the convergence model, can we think of, having a system where, let us say, the setback left by the households, that is compulsory to be maintained by the individual households, and to be green. Can we think in terms of, going in for a city-based, plan wherein we inbuilt into the contract itself that all the, the uncovered areas will be made green, so that can we then say that will also go in for, plantation, as Honorable Minister said about the Nagarvan Yojana, the Vatika. So all those things are very important. We in CPCB have recently issued a notification on brick kiln. That is another way of, addressing the pollution because of brick kiln. The zigzag technology, the standards that have been set. With the cooperation of the ministry, we have also issued the draft notification on pollution because of DG sets, the retrofitting. And in CPCB, we are also having a dialogue with startups and others to find out technological innovations that can be brought about to control air pollution. And we as a team, the entire, all the delegates who are present here, be it from, state government, be it from the local bodies and the dignitaries, we together constitute a team which can think and make this change happen. This will not happen through individual efforts alone. I would also like to mention here about the portal which is being developed, which was briefly mentioned by Shri Naresh Gangwar. That is the Prana portal, which was launched last year by Honorable Minister. That is the portal for regulation for, air quality in non-attainment cities, Prana. And there is a public dimension to it, and there is a intra-portal also. So the intra-portal is being developed by us, and we are at an advanced stage with the cooperation of GIZ. We are developing that portal, and that portal will help us in going for a paperless transaction so that we can devote our time and energy on the quality of the program. So the program will be such that, the devolution of funds right up to the local level, then the issue of UC, the progress on the ground, the geotagging of the progress on the ground, all that will be captured on the Prana portal, and that will be a portal which will help us in devolving the funds. I think with these remarks, I would just like to thank the organizers, especially CAQM, for organizing this wonderful seminar. It is this dialogue, I think the two-way process which will start will help us in, trying to understand the difficulties being faced by the field level executive officers. The suggestions which come will help us in shaping our policies and programs and in, better execution of the program. With these, I would like to thank the organizers for inviting me to this function, for allowing me to be present on this occasion, and for, being a participant in the dialogue. Thank you very much, sir. Sir, thank you, sir, for your words. And now I'll make a presentation
regarding the National Clean Air Program, as is there on the screen. And sir, before I begin the presentation, I'd like to highlight that in the presentation, I'll be talking about the salient features of this program, which was launched in January 2019, as we all know. And the aim of this interaction with the participants, with the audience here, is to understand that in whatever ways you have been part of this program, whether you are in the municipal corporation, in the state government, as a civil society, as a private sector, we would like to understand that first would like to present that how you all are involved in this program, because this is a program, as mentioned by Honorable Minister, which is a program, which it's the people's program. So air is something which is there with all of us amongst, we are within that ecosystem, air ecosystem. And we need to see that in what ways we can contribute to improving the quality of air wherever we live. And to begin with, I'll just make a very general kind of statement that we all know that what it needs to improve the air. This is something that we all know from which are the sources. So we have to see that how we are going to play our roles in and how to improve this program to achieve the intended targets. So as we see that this is a program wherein which is being implemented in 132 cities, and for better understanding of all of you, I'll say that out of 132 cities, when it comes to funding, 42 million plus cities are getting funding under 15th Finance Commission Air Quality Improvement Grant, which is known as Million Plus City Challenge Fund. So when these 42 cities improve the air quality, then they are entitled to get grants. That is a performance-based grant, which we say as an incentive grant. Which in the year 2021, as I progress, I'll say that in the first year it was not given as an incentive grant, but from 21-22 onwards, it has got the nature of an incentive program. And the remaining 82 cities out of 132 are covered under the National Clean Air Program funding. When we say National Clean Air Program, it covers all the 132 cities, but when we talk about the funding going to cities, 82 cities under 132 cities are getting funding from the National Clean Air Program funding, and the remaining 50 cities, which constitute 42 urban agglomeration cities, are getting funding from the 15th Finance Commission, that is from the Department of Expenditure, Government of India. The National Clean Air Program has a target to reduce the PM concentration by 20 to 30% by 2024. This is what we intend to achieve by 2024. And there are 3 cities as we have gathered here for the Delhi and NCR region. So in Delhi and NCR region, there are 3 cities that are covered under 15th Finance Commission grant. They are Faridabad in Haryana and Ghaziabad and Meerut in Uttar Pradesh. And 3 cities are covered under the National Clean Air Program funding, which are Delhi and Noida in UP and Alwar in Rajasthan. So this, our focus is on improving the air quality primarily in these 6 metro and non-metro cities. Now, so as has already been mentioned that there is, when we want to achieve something, we need to have a program that is, has a macro perspective and a micro perspective. So this program intends to have the macro level planning at the national level. And in the national level planning, it has been envisaged that whatever activities and programs of the line ministries help improve the air quality, they all have been integrated in this National Clean Air Program to map their programs and schemes that are going to improve the air quality. And in this, there are 7 ministries which have been mapped, which are 7 ministries of Government of India. And I'll talk about those programs, and we'll talk about that how the administrators at the municipal level have to look towards those schemes in order to improve the air quality in their respective
cities as well as the state governments, how they are going to integrate the efforts of the local administration with the programs implemented by the Government of India. Then there is a state level action plan where in the state government would be making a comprehensive program for improving the air quality in the entire state. So I'll just like to highlight that it's not a program that is limited to just those 132 cities, but it is a program that aims to improve the air quality in rural areas also. So the aim is to make the air quality fall within the national ambient air quality standards. Not only in these cities have been targeted because based on the monitoring, we have seen that they have persistently been out of the standards for consecutively 5 years. So that's why the target is there, but the state action plan will take care of looking at all these schemes and all the departments' programs that would help improve the air quality, particularly in the identified non-attainment cities of the states and comprehensively in the entire state. And the most crucial link, which is the city action plan to improve the air quality in the targeted 132 cities. And here there is the responsibility, the whole responsibility lies with the city level administrators, the municipal commissioners and the district magistrates who have to not only have to develop a program which suits their city, but also to get the program implemented. And here I'd like to elaborate that this is the crux of this National Clean Air Program, wherein each city has prepared, all the 132 cities have prepared their city action plans. And not only that, we are going beyond. Each of these 132 cities are going beyond the 132 cities, their city action plans. And their micro city action plans are being. And this is what, as a participant, whether you are a civil society organization, whether you are academic institution, you need to get a hold of that micro-city action plan. And if you have to see that whatever has been envisaged under your respective city micro-action plan, how you are going to contribute in achieving those intended activities, it's a very 100-200 page document for each of the cities. So I would request all the participants to go through it and make kind of suggestions, make their contributions in achieving all those activities that have been laid out under the micro city action plans. So this is what, as I mentioned, that the micro city action plans form the bedrock of achieving the improvement in air quality in all the non-attainment cities. So this is where now comes that how we are going to have it. We have a plan. We have activities under that plan. We have national level plans also of different ministries wherein different programs schemes are getting implemented. So we need to have a very robust mechanism in order to monitor that whether we need some course correction, whether we are moving on the right track, and that's why it has got a very robust National Clean Air Program, has got a very robust framework of monitoring, wherein committees are set up at national level, state level, and the city level. I'll just show you these committees first. So just to highlight that the committee is there at the apex level under the chairmanship of Honorable Minister, which is the national level committee. And then at the national level, there are other committees, steering committees under the chairmanship of Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. Then monitoring committee to see whether the programs are being implemented in the way they were intended to, and the implementation committee under the chairmanship of Chairman CPCP. Then state level, we have a state level committees and the implementation. And this is an area why I have shown this slide in order to get your inputs, how we can make the functioning of these committees more effective, how these committees are going to have their meetings on a regular basis, and they monitor the progresses in these meetings, that whether the city, whether the state is moving in the right direction, on the right track. And the city level committee is the most important one under the chairmanship of district magistrate or the municipal commissioner, so that
tracking of the progress of the program is well tracked. Now, in order to have a right engagement with the technical institute, because something we need to understand that whether we are going to achieve the right improvements in air qualities with the interventions we are making, and how to identify the hot spots, how to monitor that whether we have rightly identified and whether we have achieved what we intended to achieve through the interventions envisaged under micro-city action plans. So we need to have a very close interaction with the institutes of repute, and under this program, we have all the 132 cities mapped with one institute of repute, which is an academic institute situated mostly in that particular cities itself. And everywhere there is a national knowledge network to provide all the technical assistance to all these institutes of repute and the respective cities. And the most important part of this, if you ask me, of this program is the constitution of the air quality management cells. So in order to assist the city municipal commissioners as well as district magistrates, it has been envisaged that, and it has been almost put in place. All the cities, 132 cities, have the air quality management cells put in place, wherein all these, how the planning that how to go about improving the air quality by addressing the different verticals, whether it's vehicular pollution, industrial pollution, biomass burning, or the residue burning takes place, and how to see that what are the interventions that could be brought about through the funding of the city governments being received under the National Clean Air Program or through their own funding, and what are the programs that they can leverage from the central government's program and the state government's program. So this is the most important link in achieving the air quality at the city level, and it would be pertinent to hear from the city administrator that how have they found it functioning so far and what improvements they would like to have in this structure. And as rightly pointed out, that Prana portal is going to have whatever I am talking, it will be mapped on the Prana portal. You just log on to the Prana portal and you'll have all the information, whatever I have talked about, whether it be the city micro action plan, whether it be a city action plan, whether it be the different committees and the meetings of those committees and all the feedback systems and everything of what funding is going on and what not. Then it will also have a kind of a legacy which will tell about that how the air quality is there in the city by linking the air quality monitoring information, mapping it with the respective cities so that each of us as a general public are aware of how the air quality in my city has been and is improving or not. So it will not only provide information to the public to align their activities so far as taking care of their health is concerned, but it will be a pointer to the administrator also that whether what they are doing is good enough or not. And then hotspot is part of the city action micro action plan, and that is where it will just help the city administrators to prioritize their activities if they move ahead. And the most important part of this program is until unless each one of us, as was pointed out many a times by Honorable Minister in his speech, that until unless we ourselves get involved and play our role, that just say, whether it be segregation of our domestic waste and putting it at the right places, whether not involving any kind of open burning, and whether educating any other person as part of the citizen responsibility to move towards such behaviors, such attitudes which do not lead to, like we construct the houses and then there is kind of we need to take care of the dust pollution, whether we are doing or not, and when the demolition takes place, whether a small house or big construction. So there is an appropriate mechanism which needs to be followed, how to dispose of all those C&D waste. So there's some things without which, without public participation, we will not be able to move ahead. So having said that, so this is the last important thing in the sense that we know that how the air quality is getting impacted. What are the things that are polluting the air in our respective cities? There may be some factor may be predominant in one city, some factor may be predominant in the other city. So this is something, the convergence. Convergence is a word, but it's just simple thing that there are many programs that are being implemented by different ministries, and we need to see that how to leverage those programs. Like, I'll just, for example,
So these are the 7 line ministries. I'll straight go to the programs like Swachh Bharat Mission. City administrators must look at how they can plan the projects with regard to the identified focus areas of the Swachh Bharat Mission, whether it be source segregation, whether it be effective management of C&D waste for the sake of setting up of C&D processing facility. So city administrators have to leverage this program. And this is where the majority chunk of reduction in air quality is going to be achieved. So we have to be, all city administrators have to be very conscious of the schemes of the government of India, and particularly take measures that how to get such projects in their own cities that are going to improve the air quality in their cities. So that is Swachh Bharat Mission. Then there is this electric vehicles scheme of Ministry of Heavy Industry, and which has got a huge outlay. So we need to see that how to bring in the electric charging infrastructure and then go for the e-vehicles, particularly in the metros, and then later on to other cities having huge population. Then there is a scheme of Ministry of Petroleum that uses the biomass so that the biomass doesn't get burned. And there are 500 such compressed biogas production plants to be set up through the incentive from the Ministry of Petroleum and Natural Gas. I am highlighting these things just as pointers so that all of us become aware that these are the areas where the air quality monitoring cell and the administrators have to focus and see that how to leverage maximum out of such programs. Then Pradhan Mantri Ujjwala Yojana again contributes to that. Then in-situ management scheme of the Government of India for the crop residue management. There are ex-situ programs also. So these are the leveraging that we need to do. And there are several other initiatives like planting trees, then renewable energy programs. So I'll not get into those details. The presentation will be there with you. This is something which I just wanted to show that these are the funds that have been given to all the 6 cities and allocated funds for the year 2021-22. The thing is that how we are going to leverage it, how we are going to implement the projects using these funds. There's something where what is hindering their implementation, adoption of programs. That's where the administrators and the city elected representatives may be in a position to provide us the inputs regarding challenges. This is something, again, I'll not talk about it. It's something, some just data. I'll just, this is an important thing which I just want Sachendra, can you just speed it up? Yes, yes. So this is, here we like to see that the NCAP funding will go to cities based on the improvement in the performance in those cities. So this is an area that from next year onwards, all the NCAP cities will be getting funding based on their improvement in air quality. So it is a must for all the city administrators to take a lot of efforts in this regard. And a 15th Finance Commission, already from this year onwards, 70% is on the performance and the remaining 30%. And from next year onwards, it will be 100% on performance. And the performance is like this, high is for, you will have to improve the air quality by 15% of the air quality in the previous year. And this is how you will get the funding. The remaining fund will get distributed to the, if you are not going to get the incentive funds, then it will get distributed to other performing cities. And finally, these are the institutes which are helping us out. And many initiatives we all know have been taken with regard to vehicular pollution, industrial pollution in Delhi. I'll not go, and these have all resulted in improvement in air quality in all these cities. So finally, this is something that we look forward to from the state governments and the city governments to have their state action plans, have the convergence, maximize. I have talked about all these things in my presentation. I'll not detail it out. And thanks a lot for patient hearing, and I'll open the floor for questions to all of you. Thank you. Thank you, Satyendra. Any questions? Anybody wants to raise any question? Most welcome. Yeah, please. Thank you, sir, for giving me opportunity. It was a wonderful presentation and wonderful initiative on part of MOFCC by 15th Finance Commission and NCAP. Sir, the synergy between the line departments is really developing. The only thing is in the role of air pollution control, the issue of convergence is very, very important, and issue of governance is very, very important.
So what I would request, sir, it's not a question, it's a request from our side. The funds from line ministries, etc., sir, they need to be focused towards requirements of the cities. There may be funds for a particular intervention, but what intervention should be taken in which city? Some kind of a feedback from city level through MOEFCC to the line ministry. So that will make a difference, sir. The synergy, then it will be achieved, and the more focused action on city level action implementation will be there, sir. Thank you. I think, Mr. Tiwari, you have rightly pointed out this, and we are already in discussion with all the concerned relevant ministries of central government. There are 7 ministries who have got program which will help us in improving air quality at the city level. So in their schemes also, I think they are discussing with municipal corporations, and based on their feedback, they are making their plans for those cities. So all these 132 cities, especially in case of Mahua, which has got very important program of Swachh Bharat Mission for, they have asked municipalities to make their own plan, and based on that, they will be supporting from Swachh Bharat Mission. So it is not that they are coming from top, they will be originating from the bottom, from the city level itself. Sir, actually, my point is, sir, some opinion, technical opinion of Institute of Reputes for that city, maybe Pollution Control Board, Environment Department, etc., if taken for outlays for a particular cities, then it will make a lot of difference, sir. Yes. Any other query from anybody? Yeah, please. Thank you, sir. I am Vivek Saxena. I am presently CEO of Haryana State Forest Campa Authority. Sir, very nice presentation. But one important aspect is when I was going through the list of the cities under which National Clean Air Program and this Finance Commission supported cities are listed. It is quite surprising because every year we listen that Gurugram has so much problem and they have air quality is so poor. Like that, and similarly in the entire NCR region, because here this dialogue relates to the problem of the NCR region, because air is not something which we can confine in the NCR region to one particular city. So just why are we waiting that first Gurugram comes under that type of problem and then only NCAP or some other program can support? Similarly, sir, when we talk in the context of the Haryana, so it is not only Gurugram, because Faridabad is covered, but surrounding place like Panipat, Sonipat and all, from where we have the industry. So in totality, when we have to have the objective of a cleaner air in, especially in the NCR region, so we can't think that action in some of the cities and waiting for the other cities to catch up to that level, only then we have to intervene. Thank you, sir. See, cities under NCAP has been picked up based on their air quality for the last 5 years. That does not mean and does not exclude other cities to take action for improving their air quality. Many programs of Government of India are covering almost all the cities. For example, Swachh Bharat Mission, which takes care of dust pollution as well as solid waste management, is covering almost all the cities. It is covering 154 cities, which includes 132 cities covered by NCAP, and remaining cities all 5 lakh plus population city in this phase. And gradually they will be covering other cities also. So state action plan, your state action plan will take care of almost through the entire area, length and breadth of the state. That will include your rural areas also. What we are trying to do is, we are in first phase, we are focusing on those cities where the problem is, and they have been having their air quality below national standard for last 5 years. Yeah, thank you. Again, the issue of this, because I know that this list of cities of something called of a non-attainment, and that itself is based on various type of parameters based on the monitoring station which are stationed. And especially we don't know whether these monitoring stations have been located at appropriate location, capturing the right type of data to come under to that sort of a non-attainment city criteria. So I think especially when we are talking of the NCR region, especially the problem is acute when we hear the news and all.
So that, for as a special case, I think in NCR, if you focus more through the NSCAP program and Finance Commission, it will get more focus, though certainly there is a state level action plan and all. But when we talk at the national level and the NCAP, and focusing on these particular NCR region, all cities, I think that will give more focus. Thank you. Any other query, please? Please. Namaskar sir, my name is Amit Bhatnagar. I am graduate from IIT Roorkee and an innovator where I have invented a Shuddh Vayu innovation. Ki everything and anything which is moving can become an air purifier. So this has been validated by IIT Delhi and DST also. So because I was not aware of this program and I could not apply for it because tomorrow 8th March, there are a lot of other organizations which are presenting. So I wanted to request that if I can present the innovation also because it has been taken part of Atal Innovation Mission also. Smart City Mission has taken up as a challenge for our innovation. So if that can be taken up, it can be very helpful. Because everything, anything which is moving can become air purifier, then whole Delhi, air pollution can be cleaned in a single day. And as the Honorable Minister has told that we need to involve the public to be a part of this movement. Because once we give the responsibility to every citizen that they can also combat the air pollution of the NCT, of the every city, then I think so the awareness and the consciousness of the people will also engage in. So that's my point of view, sir. Kindly, you are requested to meet Dr. Arvind Nautiyal, who is the member secretary of the commission. Sure, okay, sir. kindly meet him after this. Okay. Thank you, sir. Anybody else? Any other question? Please. So good morning, sir. I'm Dr. Purnima Prabhakaran, Head Environmental Health at the Public Health Foundation of India. At the outset, I wanted to congratulate you and the ministry and all the regulatory authorities here for this wonderful convening and convergence of different ministries around the achievement of clean air for India. We've just come out of the pandemic. Many of us are still constrained by the using of masks. I was just wondering, the one ministry that is missing in your integration is the Ministry of Health and Family Welfare. If nothing, I think changing the messaging around the way people are going to go about addressing air pollution in their cities, in their states, or at the national level, by giving it a health lens, is probably a good way forward. And I was wondering why the integration with the Ministry of Health's program is not happening, because we do have the National Program for Climate Change and Human Health within the Ministry of Health and Family Welfare, which is also asking states to develop state action plans for climate change and human health, city action plans for climate change and human health, which has a big component of air pollution. I think there's a good reason for the integration to happen with the health ministry. I think the message Point well needs to taken. change. Definitely, we'll take note of that. Thank you. Any other point? Any other query? Okay, who is speaking? Please. Quick, please. Morning, sir. I have a just small point to make. Like ma'am said, I also feel there's one thing which we are missing is the Department of Town Planning. My personal view is every action we are planning is end of the chain, but we are not focusing on the source of the chain, which is town planning. Goa is already included. Ministry of Housing and Urban Affairs is Urban already. Affairs is included broadly, but town planning as a design aspect. For example, how we make our cities today. Our roads, our slip roads, our sector roads. I am staying in Gurugram for last 12 years. I have not seen service roads being in action. Every kind of traffic moves on the main road, and even main roads are not properly done. So we have to look at what problems we have at the design part, make cities less densely populated, and have more public transport. I think those aspects of the design have to be catered so that we don't end up spending too much money at the end of the chain. I think this is the type of thinking that we require. This is the step towards systemic changes. So basically, just want to tell you that what Satyendra has presented includes the short-term measures and the long-term measures also. So I think what you're basically saying is to make this city planning a part of the institutional framework of things. So I think that is something that the city planning administrators must be doing. It's part of the convergence model also at the level of Chief Secretary.
So I think this is taken care of, except that, we are not able to present you here, that's all. Thank you. Very quick, please. Last question. So actually, mine is very linked to the intervention by the gentleman here. I'm Chetan Agarwal with Center for Ecology Development and Research. And like we have the Clean Air Mission for the NCR and adjoining areas, we have another institution under Urban Affairs called the NCR Planning Board, which was set up in 1985. They have made 2 regional plans, and the third draft regional plan for 2041 is out for comment. It was a little while ago. And I would strongly urge the Commission to take the air quality lens and look at the regional plan, and we'll be happy to help in that. Because a lot of retrograde, I'm using a slightly strong word, retrograde steps have been proposed in the current regional plan 2041, where protection for all our environmental sensitive areas have been deleted, which were there in the earlier plan, 2021. Protection for Aravali's, the natural conservation zone, Yashpalji is there. Many people are familiar with those concepts. So I think it will be the planning and the zoning that we need to do for maintaining and improving our air quality, and the role of forests especially, and allocating land for that, and all the things which he's alluding to. Because the regional plan sets the direction and tone for all plans in the NCR. They have to abide by what is set in the regional plan. So I think that would be a very important interface between the Commission and the town plans through the regional plan. Take it. My request is, if you have any suggestions, please send it in writing to the Commission. They will be duly examined and taken note of. Thank you. So now, because of constraint of time, thank you so much, Atenda. We will quickly move on to the city action plans. May I request Sanjeev Kirwar, Principal Secretary, Environment Government of NCT, to talk about the city action plan of Delhi. Thank you. I'll just talk to him. Yes, sir. You'll do it from here and I'll speak from there. Okay, sir. हाँ? Okay, sir. कर लोगे ना? हाँ. We have a small presentation, sir, so we'll just. कौन सा? It's a long presentation. A very good morning to everybody present over here. I'll make a presentation on Delhi's Clean Air Action Plan. Next, please. So this is the basic outline of the presentation that we have. It's a brief introduction of Delhi's the situation that we're facing. Then what are the major reasons that we have, what actions are being taken to mitigate the pollution that are being caused by various factors. And also at the end, I will bring about what specific steps were taken over the last couple of years to mitigate and fight air pollution. Next, please. Next. So as everybody who's present over here is aware that Delhi is regarded as one of the most polluted cities globally. It is not just a Delhi-specific thing, it's the whole NCR region and maybe the Gangetic Plain, which suffers from poor air quality over a certain period of the year, especially from November to January. There are multiple reasons which have a geographical connotation because of extreme meteorological conditions. And there's a large transboundary movement, not just from other states, but from outside the country also, which leads to this air pollution. Next, please.
This is a brief snapshot about the air quality that we have had over the past 5 years. The number of good, moderate, and satisfactory days have been showing an increase as a secular trend. 2020, because of severe lockdowns, was better than 2021. But secularly, we are seeing a kind of an improvement in the air quality over the past 5 years. And the number of poor, very poor, and severe days are going down. Next. So like I mentioned, the good, satisfactory, and moderate days together are 159 in 2018. They increased to 182 in 2019. Then 227 in 2020, and then 198 in 2021. Similarly, for the number of poor, very poor, severe days have been going down. In fact, last year, October was amongst the cleanest months over the past 7 years. Next. So essentially, why has pollution become so much come in our consciousness? Essentially, the effort in Delhi government has been, and across NCR and other areas has been, that we have to measure it. Only when we measure something, we'll know the extent of the problem. So in Delhi, we have at 40 locations, we are measuring 8 ambient air quality parameters, which are shared with everybody. We have, for the last 6-7 months, we are coming out with the environmental health bulletin, which is circulated everywhere and which shows over the past 7 days what the air quality has been, what is the prognosis for the next coming few days, whether weather is going to change, wind speed is going to change, what impact will it have on the air quality, and what are the predominant air pollutants, and what action also is being taken at a pan-Delhi level to mitigate air pollution. Next, please. In Delhi, we have had research, all the action that we are doing is predicated on research that has been done in the past. We have had studies conducted by IIT Kanpur, by TERI, in which source apportionment has been done. Essentially, across the world, the effort is to control pollution at source. So we had to identify sources of pollution in which the top contributors of pollution are vehicles, road dust, construction dust, biomass burning, and industrial sources. In winters, vehicles contributes almost 40%, road dust is around 20-odd%, and similarly, and so on and so forth. Also in winters, the biomass burning, because people require heating, especially people who are not indoors, biomass burning also increases, and it is one of the significant components of air pollution. Next. So now in the we had a couple of years back, we had started a study with Washington University to do real-time source apportionment, because as of now, all these studies that we have done in the past in 2016 and 18 were over a period of time they were showing what are the causes for air pollution. But now source apportionment is being tried on a real-time basis. So we had given one study to Washington which could not fructify. Now we have given it to IIT Kanpur with a timeline of 23 months. We have initiated this study last year, October, in which one super site air quality monitoring station would be set up. There would be a mobile air laboratory, and daily interpretation of air data would be done, air quality data would be done, and we would also find out what are the sources at a particular point of time which are causing this air pollution, and what short-term control action plans that can be worked out by various agencies. Next, please. So now I will come to the various factors that cause air pollution, and I'll elucidate what is being done on various issues. Next. Next, please. So in industrial emissions, all the new industries are in Delhi. There is a master plan that has been put in place. So all the new industries are permitted as per the master plan that is there by DDA. No polluting fuel is permitted other than the approved fuel. So we have an approved fuels list. You cannot use fuels which are outside this approved list. And in Delhi, all the industries have been converted to PNG, from which were using some other fuels earlier. So all these 1,607 industries have been converted to PNG, and we ensure that strict compliance is done. We set up monitoring teams, especially during winters, which go and check that this compliance is being done by all by the industry. Next, please. In Delhi, the power supply is almost uninterrupted. We have almost 99% uptime and power. Even then, we have a monitoring system for DG sets. And during October, November, December, generally the policy is that DG sets are discouraged to be used.
Next. As I've mentioned, the DG sets are strictly regulated, the functioning of them, especially during winter months, and they are also prohibited during winter months, except for emergency usage. And last year itself, we have also come out with an order to do retrofitment of DG sets for all DG sets in Delhi. As per this is following a mandate from an NGT order, and we are monitoring the compliance of this instruction also. Next, please. In Delhi, we are also in the process of setting up an eco park for management of e-waste. Delhi generates almost 20% of e-waste in the country, and we have already identified land, and we are in the process of setting up this eco park. Next, please. So now I'll come to vehicular pollutions, which almost contributes to 40% of our pollution load during winter months. It has been mandated that 10-year-old diesel and 15-year-old petrol vehicles are not to be plying on Delhi roads. Last year, a very intensive action was taken, and 827 such vehicles were impounded by the Delhi government, by Delhi police and Delhi government in a combined approach. Next. The policy for scrapping of old vehicles has also been notified, and last year, several of these impounded vehicles were scrapped as per the policy. Next. As was mentioned earlier, essentially vehicular pollutions largely from people not using public transportation. So as you are all aware, Delhi has been a pioneer in establishment of the metro. So 3 phases of metro have been already completed, and the 4th one is under implementation. And 3 rapid rail transport systems are also in the process of being implemented from Delhi to Meerut, Delhi Alwar, and Delhi Panipat. So the whole idea is that people move away from personalized transport to public transport to lessen the pollution load. Next. Delhi has also been a pioneer in coming out of the Delhi electric vehicle policy, which was notified on 7th August 2020. The aim and objective is to establish Delhi as a EV capital and to accelerate the pace of adoption of EV vehicles across vehicle segments, 2-wheelers, 4-wheelers, etc. The mandate of the policy is that registration of 25% of registration of new vehicles by 2024 should be e-vehicles, and all aggregators and delivery providers like Zomato, Amazon, people who aggregate demand and use these vehicles should convert 50% of the fleet by 31st March 2023 to e-vehicles and 100% by 31st March 2025. Next, please. We also have a policy of giving subsidies to 2-wheelers and 4-wheelers, in which almost 30,000 rupees is given to a scooter or a 2-wheeler, and with a cap of 1.5 lakh rupees for an e-vehicle for a car somebody is using. So almost 50 crores has been dispersed over the past 3 years. For adopting this Switch Delhi campaign, in Delhi government last year in February, we have mandated that no new vehicles would be purchased for Delhi government, autonomous bodies and its PSUs, which are not e-vehicles. Any hiring, fresh hiring that will take place will be of e-vehicles. We are also in the process of strengthening the public charging infrastructure, in which 191 e-charging stations, which are already present, for 100 more charging stations, we have floated a tender, and we are also involving in a PPP kind of partnership all the malls and other large areas where you have parking spaces, where we would incentivize setting up of charging points. So almost 6,000 rupees per private charging point would be given by Delhi government. Next, please. Last year, under the guidance of CAQM, we have done strict enforcement of PUC norms. As has been mentioned in this slide, at every petrol pump, we were checking whether vehicles had PUCs. A very massive public engagement was done by issuing notices in leading newspapers that people who are going in their vehicles, they should carry valid PUCs. And from now onwards, in fact, we have put in the public domain that the PUC would be checked mandatorily before dispensing of fuel also. So we are waiting for comments of the public, and thereafter that direction would be issued. Next, please. Vapor recovery centers systems have been put in all 396 outlets in Delhi. Next. So this is regarding augmentation of public transportation in Delhi. In a study in 2012,
almost 11,000 buses were felt to be, were needed for Delhi. And as of now, we have almost 7,000 buses which run in either by DTC or in a cluster mode. We are in the process of, we have already placed orders for 300 low-floor electric buses, and we are also in the process of acquiring almost 4,000 buses which are going to be in the cluster mode, and they are all run on CNG. In Delhi, all the public transportation is run on CNG. 2,246 Delhi Metro coaches are already in service, and 120 more coaches are going to be inducted by March 2022. And 312 more coaches are planned to be inducted. Next, please. So this I mentioned earlier, this is the direction that we have issued to the aggregators, that all aggregators who are doing public delivery of services, of goods and services, they have to switch over to 50% at least by 31st March next year. Next, please. As people who have been to Delhi, they must have seen this campaign. Now this is done 2 years. We plan it this year also. That when you go to a red light and if the red light is there for more than 15 seconds, then you switch off your engine. It was a very intensive campaign that we did for 2 months, especially when the pollution becomes really high. We do this campaign. That has been done twice now. And now we will also do a study about the impact of this campaign. Next, please. So in Delhi, like was mentioned earlier, that dust management and road dust and construction and demolition dust is a major problem. What happens is people who are doing some construction, instead of taking it to the authorized areas, they dump it on the road, which then is carried forward by vehicles which move. Sometimes because of too much traffic, they take this dust also along with them and create pollution. So in Delhi, almost 6,000 to 7,000 tons per day is generated as construction demolition waste. We have 4 operational C&D waste processing plants, which cater to almost 4,150 tons per day. And 3 more facilities are at various stages, and all of them are proposed to be completed by 2023 March. Next, please. So we have mandated across that this construction demolition waste which is processed, this has to, after processing, it has to be used at various places. It can be used for construction, in making embankments, for road construction, etc. So a mandate has also been given to various departments of not only Delhi government, local bodies, but also Government of India, especially NHAI, to utilize this processed C&D waste. Next. As has been done across NCR now, we have issued for large sites what are the parameters they have to follow while they are doing construction. So all of them have been mandated to use smog guns, anti-smog guns, depending on the size of the construction of the project. These guidelines were issued last year. At every C&D site which is more than 500 meters, we have mandated that they have to use a self-assessment web portal. That web portal was up and running last year in October itself. And we have more than 580 construction sites which have registered voluntarily on this portal. And they are reporting to us also now what are the measures that they have adopted to mitigate air pollution. Next, please. In every municipal body, large government department, we have set up dust control and management cells, which ensure that whatever is being talked about, whatever action is being planned on the ground, actually takes place and is monitored, and then conveyed to the Commission on Air Quality and other authorities also. Next, please. So there are almost 69 mechanical road sweeping machines that are deployed. This is done in consultation with RWAs. There's a real-time GPS dashboard that is there, on which the movement of these vehicles is shared with the public. We also have around 372 water sprinkling machines, which also which are used to settle the dust which is generated from the roads. Next, please. So now I will talk about, like was mentioned, that solid waste management is one of the key ingredients for managing air pollution. In Delhi, as can be seen, almost 11,000 odd metric tons are generated per day. Out of that, processing takes place of almost 50% is processed. All the municipal solid waste is collected, but processing takes place of almost 50%. Rest 50% was being disposed on these large landfill sites that you see in Delhi. So next, please.
So regarding the plan for this solid waste management is that we initially do the segregation 100% at the source level for the garbage, for the municipal solid waste that is produced, and thereafter process it so that nothing goes to the landfill. In Delhi, the 3 dump sites that you see at Ghazipur, Balaswa and Okhla, it has got a legacy waste of 280 lakh tons, out of which now we are doing some bioremediation and biomining of this legacy waste. Almost 15% of that legacy waste has been biomined. And the target is that by 2024, we'll be able to get rid of these 3 landfill sites. Next please. So as I mentioned earlier, 100% collection of municipal solid waste is going on. In North MCD, 90% has been achieved in 32 model wards. In South MCD, almost in 16 model wards, almost 100% has been achieved segregation. Also in East MCD, in 3 model wards has been achieved. So the timeline for achieving 100% segregation is September 2022, by this year. Next, please. We have 3 waste to energy plants where, like I mentioned earlier, 50% of the municipal solid waste is being processed. We have 8 existing decentralized 5-ton biomethanation plants. 6 more are proposed, and 8 more compost plants are also proposed. Next, please. The landfill sites that we have, which we propose to do away by 2024. In 2017-18, almost 150 fires were witnessed at these landfill sites. Very strict monitoring mechanisms had been put in place. We have 24/7 deployment of people. Fire tenders are put in place, so that only 4 fire incidents were reported last year. So from 150, we have brought it down to just 4 incidents. The aim is to have 0 fire incidents at these landfill sites, which are also a cause for air pollution, especially during winters. Next, please. Next, this is single-use plastics. Next, please. Regarding agro residues, Delhi does not have a major problem of agro residues. We have just 5,000-6,000 hectares of land under cultivation of paddy, and the straw that is generated is largely used in the mandi. So we don't have a major problem with the straw that is the residue of crops. However, for the past 2 years, we have been experimenting. It was intensified our effort last year, in which almost 4,200 acres of paddy fields in 59 villages, we used biodecomposers which were produced by IARI. And it was found to be very efficient and useful. And that, as was mentioned in the inaugural session, it was replicated across other states also. Next, please. Next. Next, please. So household emissions, these are basic statistics on how many houses are there in Delhi and the LPG and PNG connections that we have. Next, please. In Delhi, a major effort has been made to increase the green cover. Every year we plant almost 33 lakh trees. This year also the target is almost 33 lakh trees. And till February this year, we have achieved almost 32 lakh trees have been planted. Next. As is evident from this slide, the Delhi forest cover has shown a tremendous improvement, and almost 22% of Delhi's geographical area is now covered by forests. So from a journey from 1993, when 22 odd square kilometers was covered, we are almost having 342 square kilometers that is covered by forest now, by green cover. Next, please. I'll come to these steps that we have taken over the past 6-7 months. I'll quickly go over these 3-4 slides. Delhi government, knowing that we have a worsening air quality from November onwards, we started our exercise 3-4 months before. Especially in May, we started developing a comprehensive winter action plan, which covered open and stubble burning, CND waste, road dust, vehicular pollution, industrial pollutions, and also firecrackers. We involved all stakeholders. We thought of targeted interventions. Whatever learnings we have had from the past were utilized to come up with this action plan. And whatever was being planned, we wanted to also correlate it with the
with the parameters that were being evolved for the AQI systems. And at the highest level, it was being monitored by the Honorable Chief Minister, by our Chief Secretary, and also we were being very closely monitored by the Commission. Next, please. So in Delhi, we had identified, depending on historical data of air quality, 13 hotspots. At every hotspot, we had a deputy commissioner level officer was made in charge, because in Delhi there's a problem of multiplicity of agencies. It is very easy to get away by saying, "Ye hamara kaam nahi hai, MCD ka kaam hai, ya DDA ka kaam hai, ya PWD ka kaam hai." So at that level, there was a nodal person who was identified who will coordinate the efforts of all the departments. So at these 13 hotspots, the activities to be done by MCDs, Delhi Traffic Police, PWD, DDA were being coordinated by the deputy commissioner of that area of the municipality. So the categories of issues which were resolved on a daily basis were like repairing roads, potholes, identifying areas where congestions take place, mechanical road sweeping, water sprinkling, night patrolling to prevent biomass burning. So that all that was being done at these areas. Next, please. Also in Delhi, we also developed a complaint mechanism, because what happened was somebody would go to the ground and say that I have inspected that area, even our officers. So we made an application that our person would not just go, he'll take a before and after kind of a snapshot and put it on the app. A member of the public could also go and tell us that which is the problem area, where say biomass burning is taking place, where construction and demolition waste is lying, where municipal solid waste is lying, and we would take immediate action. To ensure that this worked properly, we had a 24/7 green war room, which was manned by 70 marshals, and almost 40,000 complaints were received through this app, and 94% of them have been resolved. Next, please. Smog tower, as you're all aware, has been installed in Delhi. One has been installed by DPCC, one has been installed by CPCB. Essentially, it's a study to see whether you can have a kind of a smog tower, whether it can have an impact if it is replicated on a larger scale on improving the quality of air. Right now, it's very preliminary, the findings. So maybe after some time, we will be able to share what is the efficacy of these smog towers. Next, please. Also, Department of Environment, I'm sure not the Forest Department so much, but Department of Environment across states and UTs has been very thin on resources. So our effort has been to build capacity in the department to ensure that so many areas are there, not just air pollution, you have solid waste management, we have water pollution, in which we face a lot of issues. So a lot of effort has been made to increase and augment our capacity in Delhi government. We have started a Green Delhi Fellowship program last year, and in which 30 Green Fellows have been appointed, and they have started working with us from the last month. We have also done recruitment of 50 engineers. So we are now working at full capacity to ensure that we are able to come up to the expectations of the citizens of Delhi, and so that proper actions are taken in a timely manner. So this is all I wanted to share with you, and we'll look forward to any suggestions and comments and questions from members of the public. Thank you, Sanjeev. It was a very interesting presentation. Because of paucity of time, what I would request is first we'll go through all the presentations and then take the questions towards the end. So may I request Sri Yashpal Yadav, Commissioner, Municipal Corporation of Faridabad, to talk about the City Action Plan of Faridabad. Thank you. Can you just hold on for this? It's very specific. No, I know. I'll give you an opportunity. But then everybody will start speaking. So, yeah, just hold on. Yes. I think they will take time. Okay. Sorry. Professor Adarsh Pal, I am Chairman, Punjab Pollution Control Board. Very specific contribution to doing the good effort, being academician as well as now as a chairman of Punjab Pollution Control Board. I always wonder, so these may be, you can say, as a comments or suggestions or raising certain contradictions. So you begin with the multiple reasons of pollution in Delhi. Your slide was geographical locations,
wind speed, meteorological reasons. But when you go forward and tell about the top contributors, then it altogether changed. The top contributors are vehicles, dust, burning, industry, fuel, and household, all this. So these contradictions, I think, cannot solve the problem. So why I am saying that? I am of the opinion that in all urban cities or all cities, air pollution is directly proportional to the density of the population. Why we are not touching that density of population? There were certain queries. Why we are not raising the question of population? I don't know why this thing has been left on the other side or why we are not taking care of that. Because it is directly proportional to that. More population, more requirement, more demand, more activities, more waste, more burning, more pollution. So it's very simple. So I think we must devise certain ways. I'm not against the humans to settle, but why we are putting the blames on the other reasons? These reasons will all your reasons are linked with the population. Second question is that whether you have ever monitored the air quality of cities versus villages. Why the problem is not there in the surrounding villages, only in Connaught Place or India Gate or like that. So it's again simple, that density of population, high rising building, high rising demand. So out of 40 locations, whether there is any comparison of urban or local kind of things. So I think these things has to be taken care from the researcher point of view, or maybe we are escaping ourselves and putting reasons on others. So we have to limit the cities. I'm not against. So this is my research, this is my finding, or I think if you will leave this question of population, I think it will be difficult. So thank you, sir. Sorry for interrupting because other cities has to come. That's why I was here to put that question. Thank you, sir. Thank you for giving Good time. observation. Thank you. Thank you. Yes, go ahead. Good afternoon. Thank you very much, sir, for providing this opportunity to represent Municipal Corporation Faridabad and share the activities which we are doing at Faridabad with the help of Central Pollution Control Board and Government of India. सर, मैं जो चेयरमैन साहब कह रहे थे उस बात से शुरुआत करना चाहूँगा। फरीदाबाद नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब रहा है और इंडस्ट्रीज़ की वजह से बहुत तेज़ी के साथ ये ग्रो भी किया है। फरीदाबाद शहर के अंदर 9 से 10 लाख लोग हैं जो कि स्लम्स के अंदर रहते हैं, और जब कोविड का टाइम था तो मैं बाई चांस इसी शहर में काम कर रहा था एक डिफरेंट कैपेसिटी में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर, और जब इन एरियाज़ को हमने विज़िट किया तो ये पाया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो ग्रोथ हो रही है और अनप्लान्ड ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से भी हैं। फरीदाबाद इंडस्ट्रीज़ ने उसको एक पहचान दी है, लेकिन एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की बात करें तो उसमें भी बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो उनकी तरफ से कंप्लायंसेस की बात हम करें या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की हम बात करें, उसके अंदर इश्यूज़ हैं। फरीदाबाद सबसे पॉपुलस सिटी है स्टेट का, और पॉपुलेशन डेंसिटी भी यहाँ की बहुत हाई है। काफ़ी सारे स्लम एरियाज़ हैं जिसके अंदर काम करने की अभी हमें ज़रूरत है। लगभग 25 लाख की पॉपुलेशन को हम केटर करते हैं और 22,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ शहर के अंदर काम कर रही हैं। सर, मेजर जो सोर्सेज हैं पोल्यूशन के, इसके बारे में पहले भी आज भी बात हुई हैं, बार बार मैं उस पर रिपीट उसको नहीं करूँगा, लेकिन इंडस्ट्रीज़ एक बड़ा पोल्यूशन का कारण है फरीदाबाद के अंदर। दूसरा बड़ा कारण जो मैं पिछले 3 साल से वहाँ रहते हुए देख पा रहा हूँ वो बर्निंग है। मैं एक पड़ोसी ज़िले के गांव से आता हूँ सर, और जब हम छोटे थे तो गांव के अंदर जब सर्दियाँ आती थी तो पूरे गांव के ऊपर एक
धुएं की लेयर जम जाती थी। और जब मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट बना तो मुझे पहली बार ये पता लगा कि ऐसा क्यों होता था। जो टेम्परेचर इन्वर्जन है सर्दियों के टाइम पर, जो एक ब्लैंकेट क्रिएट कर देता है और पोल्यूशन को, स्मोक को बाहर नहीं निकलने देता, वो एक बहुत बड़ा कारण है। गुड़गांव मुझे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम करने का मौका मिला, और जब यहाँ का गजटियर आप पढ़ेंगे तो सालों पहले 1800 के आसपास किसी इंग्लिश ऑफिसर ने लिखा था कि सर्दियों के इन महीनों के अंदर यहाँ पर बहुत घुटन होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि ऐसा ये पहली बार हो रहा है, सैकड़ों सालों से इस सीज़न के अंदर नॉर्थ इंडिया के अंदर विशेष तौर पे इस तरह की प्रॉब्लम्स हम फेस करते आ रहे हैं। लेकिन ये बढ़ी है पिछले कुछ सालों के अंदर, और उसके ऑब्वियस रीजंस हैं जो डिफरेंट लोगों ने कहा। जब मैं गार्बेज बर्निंग की बात करता हूँ सर, तो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फाइट अगेंस्ट पोल्यूशन होता है। आप सर्दियों में जब जाएंगे तो जो वेस्ट पड़ा हुआ है उसको तो लोग जलाते ही जलाते हैं। प्लास्टिक के तारों को, उसके अंदर से जो मटेरियल होता है कॉपर, बाकी चीज़ों को निकालने के लिए उसको आग लगा के जलाते रहते हैं। और इसके अलावा हज़ारों जगह के ऊपर लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए, सर्दी से फाइट करने के लिए लोग जलाते हैं। और ये कि सच्चाई है, शहर के किसी भी हिस्से के अंदर आप सर्दियों के अंदर निकलेंगे तो ये आपको हर गली, हर चौराहे, हर मोहल्ले के अंदर नज़र आएगा। और उसी को रोकने की हमने फरीदाबाद के अंदर भी एक कोशिश की है जो जारी है। सर, फरीदाबाद नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत और नॉन अटेनमेंट सिटी के अंदर इसका सिलेक्शन जो है वो जस्टिफाइड है, क्योंकि हम सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी थे और 10th सबसे गंदे शहरों के अंदर हमारा नाम शुमार होता था। और मैं इस बात के लिए निश्चित तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी, कमीशन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए चुना। और इसका एक बेनिफिट हुआ है सर, जो बहुत बड़ी चीज़ है। ये सब एक्टिविटीज़ हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से कंसंट्रेटेड एफर्ट्स इसको लेकर हो रहे हैं, जो जागरूकता इसको लेकर आई है, और जो क्लोज मॉनिटरिंग अब हो रही है, जिसकी वजह से टाइम बाउंड मैनर के अंदर हमें एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना है, इसने टोटल इस लड़ाई का एक अलग रूप सर धरातल पर ये लेकर आया है। और इतने थोड़े टाइम के अंदर जिस तरह से चीज़ों को बदलने की कोशिश हुई और जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं देखता हूँ आने वाले कुछ सालों के अंदर ये जो प्रॉब्लम है जिसको लेकर हम फाइट कर रहे हैं, इसको बहुत बड़े लेवल पे हम कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसा मैं व्यक्तिगत तौर पर जो धरातल पर काम हो रहा है उसके आधार पर सर मैं कह सकता हूँ। और मैं धन्यवाद भी दोबारा से करना चाहता हूँ कि फरीदाबाद जो कि डिज़र्व करता था, उसको आपने ना केवल फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है बल्कि टेक्निकल सपोर्ट भी हमें मिली है। और मॉनिटरिंग जब होती है तो हमारे ऊपर एक प्रेशर भी क्रिएट होता है कि हम इन एक्टिविटीज़ को करके आपको वापस दें। सर, जो हमारा सिटी एक्शन प्लान और माइक्रो एक्शन प्लान था वो हमने सबमिट कर दिया था सितंबर 2021 में और अक्टूबर 2021 में। और उसके अंदर जो भी चीज़ें हमने डाली थी उन सब चीज़ों को हम बहुत तेज़ी के साथ इम्प्लीमेंट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और आने वाली स्लाइड्स के अंदर मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करूंगा कि जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो रियल चैलेंज है। आप प्लान कर सकते हैं, आप रिसोर्स अपॉर्चमेंट भी ठीक है, स्टडीज़ भी हो सकती हैं, बट ग्राउंड पे धरातल पर उन चीज़ों को कैसे उतारोगे वो सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसके अंदर सपोर्ट की भी ज़रूरत है। सर, ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं सर जो हम कर रहे हैं। इनको हमने 5-6 हिस्सों के अंदर बांटा है। कैपेसिटी बिल्डिंग, मॉनिटरिंग नेटवर्क्स एंड सोर्स अपॉर्चनमेंट है, जिसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हमने सिटी माइक्रो एक्शन प्लान के अंदर डाली थी उन सभी के ऊपर एक्टिवली हम काम कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने कंप्लीट भी की हैं। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं सर जो आपको वहाँ पर नज़र आएंगी। जो भी एक्टिविटीज़ हमने इस बार उठाई हैं बेहतर ढंग से प्लान करके और टोटल गोल सामने रखकर उतने रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं, ट्रेनिंग करवाई है, SOPs बनाई हैं और उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जब तक वो एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो जाती उसको हम कंटिन्यूसली चला रहे हैं। सर, पब्लिक आउटरीच एक ऐसा विषय है जो इस पूरी लड़ाई के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है मेरी नज़र के अंदर। और इस पे आने वाली स्लाइड्स के अंदर सर मैं बताऊंगा भी उसका क्या रीज़न है और किस तरह से हम उसको कर रहे हैं। रोड डस्ट और कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन, सर ये भी बड़े कॉजेज़ हैं। फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो रोड्स पोर्ट होल्स होते हैं, बारिशें होती हैं सर। जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसका ये सर
साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप वेस्ट को ठीक से कलेक्ट नहीं करेंगे, लोग उसको नालों के अंदर फेंकते हैं, सीवेज के अंदर डालते हैं। काऊ डंग का जो डेयरीज़ हैं उन्होंने डायरेक्ट कनेक्शंस सीवेज लाइंस के अंदर किया हुआ है, जो कि उसको ब्लॉक कर देता है। बारिशें जब होती है तो आप स्टॉर्म वाटर को बाहर नहीं ले जा सकते हैं, सारा रोड्स के ऊपर खड़ा होता है और आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर देता है, आपके पूरे रोड्स को तोड़ देता है। और हमारे जो डिफरेंट सीजन्स हैं वो रिपेयर करने की भी पूरी तरह से इजाज़त नहीं देते हैं। बारिशें आती हैं, फिर सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं और रोड सारे साल टूटे हुए रहते हैं। तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए किस तरह चीज़ें होनी चाहिए वो मैं आने वाली स्लाइड्स में सर बताना चाहूँगा। जो एक्टिविटीज़ अभी एक्सपेक्टेड की जाती हैं सर हमसे, वो रेगुलरली हम कर रहे हैं। जस्ट उसके कुछ फोटोग्राफ्स थे। व्हीकल्स सर, व्हीकल्स की तरफ हम जा रहे हैं और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पॉलिसी है कि आगे जो भी हम व्हीकल्स खरीदेंगे वो ई व्हीकल्स होंगे। हमने जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमने रिक्शाज खरीदे, उसमें से 25 रिक्शाज अब ई रिक्शाज हैं हमारे पास में। और स्मार्ट सिटी फरीदाबाद FMDA के साथ में मिलकर हम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो भी प्रोक्योरमेंट होगी उसको ई व्हीकल्स के ऊपर हम जाना चाह रहे हैं। वेस्ट एंड बायोमास डंपिंग एंड बर्निंग बड़ा इशू है सर, और इसके ऊपर काफ़ी बड़े लेवल पे हमने काम किया। आने वाली स्लाइड्स के ऊपर मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताना चाहूँगा। ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स और टाइमलाइंस हैं सर जो हमने बनाई हैं, और इनको प्रॉपरली हम मॉनिटर करते हैं ताकि ये आउट ऑफ साइट नहीं हो। सर, जो इनिशिएटिव इस पूरे काम को करने के लिए एक यूनिक था, जो हमने लगभग 5 महीने पहले शहर के अंदर शुरू किया। फरीदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर 40 वार्ड्स हैं। हमने प्रत्येक वार्ड के अंदर वार्ड कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की। वार्ड काउंसलर्स को हमने विश्वास में लिया, उससे हमने नाम मांगे। हमने ओपन भी किया कि अगर कोई भी वॉलंटियर के तौर पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ में काम करना चाहता है तो वो सामने आए, उनके नाम आए। NGOs को हमने साथ में मिलाया। CSR पार्टनर्स के तौर पर, क्योंकि फरीदाबाद बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल हब है, तो बहुत बड़े लेवल पे इंडस्ट्रीज़ हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब लोग CSR के तौर पर हमारे वार्ड कमेटी के अंदर काउंसलर को उसका अध्यक्ष बनाया। उसके साथ में 15 लोगों की कमेटी बनाई। उसके साथ में हमने एक NGO उस एरिया के अंदर जो रहता था उसको हमने उसके साथ में शामिल किया। एक CSR पार्टनर उनके साथ में अटैच किया, और उसके साथ में जितने भी RWAs और ब्लॉक RWAs थी उनके सभी के प्रधान और सेक्रेटरीज को हमने इसका मेंबर बनाया और उसको इस पूरी हिरार्की के अंदर शामिल किया। इसके बाद में सर SOPs क्रिएट की गई। ऑफिसर्स ने बैठकर इन सब लोगों की मदद से जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम करना चाह रहे थे, उन एक्टिविटीज़ को कौन व्यक्ति, कौन इंस्टीट्यूशन किस तरह से करेगा, इसकी डिटेल्ड SOPs तैयार की गई। उसके बाद में इन सभी वार्ड कमेटीज़ की ट्रेनिंग करवाई गई। जनाग्रह, जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बेंगलोर के साथ में काम करता है, इनिशियली हमने उसको पार्टनर बनाया, उनके साथ एक MOU साइन किया। वहाँ से हमने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स तैयार किए, और अब हमने ऑलरेडी अपनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एक कैपेसिटी क्रिएट कर ली है। इनिशियली हमने 11 मास्टर ट्रेनर्स के साथ में काम शुरू किया था, और आज के दिन हमारे पास में 200 से ज़्यादा मास्टर ट्रेनर्स हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करवाना है। तो इन सभी वार्ड कमेटीज़ की ट्रेनिंग करवाई गई। ट्रेनिंग करवाने के बाद में सिर्फ वार्ड कमेटी के अंदर जितने भी डिफरेंट जो लोग थे, किसी भी व्यक्ति का जो इंटरेस्ट था जिस भी एक्टिविटी के अंदर, उनको वो स्पेसिफिक काम दिया गया ताकि वो उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें, उसको एग्जीक्यूट करने में और मॉनिटर करने के अंदर भी, और वो हमें फीडबैक भी उनसे आ सके। तो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनके काम उनको अलोकेट किया गया। कैपेसिटी बिल्डिंग की इवन स्टाफ के लिए भी सर, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का स्टाफ था जो वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर शामिल था, चाहे वो इवन सो मच हो कि ट्रैक्टर अगर चलाने की ट्रेनिंग देनी है तो उस लेवल पे भी उनको ट्रेनिंग दी गई। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा सर, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जलाने से एयर पोल्यूशन तो होता ही होता है, लेकिन ये इसके अलावा उसके और बहुत सारे भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे ड्रेन्स को, सीवेज को जब ये चॉक कर देता है तो रोड और बाकी चीज़ों को तोड़ता है, जिससे कि डस्ट जनरेट होती है। तो हमने सभी वार्ड्स के अंदर हमारी जो कैपेसिटी थी उसको हमने असेस किया, और सभी वार्ड्स के अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने टोटल यूनिट्स को काउंट किया, उसके अंदर टोटल यूनिट्स कितनी हैं, उन यूनिट्स के लिए हमें कितनी मैन मटेरियल मशीनरी चाहिए, वो सब हमने आइडेंटिफाई किया।
और उसके बाद में जो हमारा गैप था उस गैप को हमने फिल किया। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि फरीदाबाद के अंदर CSR के तहत 150 से ज़्यादा व्हीकल्स ऑलरेडी हमारे पास में पिछले 4 महीने के दौरान लोगों ने दिए, और लगभग 70 व्हीकल्स और हमारे लाइनअप है जो अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को मिलेंगे। तो इसकी वजह से हम हर यूनिट तक हर रोज़ पहुँचने की कैपेसिटी क्रिएट कर पाए, जिससे कि हमारा कलेक्शन सिस्टम बेटर हुआ और लोग जो बाहर गार्बेज को फेंकते थे वो फेंकना कम हुआ, और नेचुरली उसके बाद उसको जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके सर ये डीजल है। अभी जो ट्रैक्टर्स हमारे पास में आए हैं, क्योंकि ट्रैक्टर सर एक सिर्फ एक्सपोर्ट ने अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाला है, लेकिन उसकी भी अभी कोई बहुत ज़्यादा चला नहीं है सर वो। तो ट्रैक्टर सेगमेंट में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेलेबल नहीं है सर, ज़्यादा ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है सर। तो इनकी मदद से सर हम अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को परफेक्ट करना चाहते हैं, और हमारा टारगेट ये था कि किसी भी हालात के अंदर हम हर घर से वेस्ट को उठाएं और उसको डंप नहीं होने दें, डायरेक्टली वो बाहर जाएगा जहां उसका ट्रीटमेंट होना है या उसकी डंपिंग होनी है। सर फरीदाबाद सेकंड टाउन है हरियाणा का जिसने अपना कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट प्लांट शुरू कर दिया है गुड़गांव के बाद में, और कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट प्लांट चलने के बाद में अब हम प्रत्येक घर से जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट जनरेट हो रहा होगा उसको उठाकर यहाँ पर ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा जो एजेंसी हमने हायर की है सर, उसकी मदद से हमें हमारी कैपेसिटी भी बढ़ी है, और जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का या डेमोलिशन का काम चल रहा है वहाँ ये सारे नॉर्म्स को फुलफिल करें इस एजेंसी के माध्यम से हम उसको भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो हमारे पास में हम आज के दिन बेहतर स्थिति में है सेकेंडरी वेस्ट को मैनेज करने की में। और ये एक क्योंकि सारे शहर के अंदर ओपन स्पेसिस में, पब्लिक स्पेसिस में सेकेंडरी वेस्ट पड़ा हुआ था, उसको भी उठाने का लगातार हमारा काम जारी है। और सर 31 मार्च जो इस महीने के आखिरी दिन शहर के अंदर कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट कहीं पर भी पड़ा नहीं हो, कोई भी MSW शहर के अंदर नहीं पड़ा हो, ये टारगेट लेकर हम चल रहे हैं और मुझे उम्मीद है हम उसको अचीव करेंगे। सर एक नई चीज़, वैसे तो माइक्रो STPs नेशन वाइड अब एक बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है। शहर के अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर ग्रीन बेल्ट्स को हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। ग्रीन बेल्ट्स के लिए आपको पानी की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, और सीवेज सिस्टम्स की अगर बात करें जो पुराने शहर है उसके अंदर कैपेसिटी उतनी नहीं रही है, एडिशनल पॉपुलेशन आई है जिसकी वजह से सीवेज ओवरफ्लो करता है। तो हम वार्ड वाइज माइक्रो STPs लगाने जा रहे हैं। हमारा प्रोसेस लगभग फाइनल स्टेज के ऊपर है, और इन माइक्रो STPs की मदद से हम वहीं पर पानी को ट्रीट करके जो हमारे ग्रीन बेल्ट्स होंगे और पार्क्स होंगे उसमें इसको यूज़ करेंगे, ताकि इससे एक तो ग्रीन एरिया बढ़े जिससे पॉल्यूशन कम होगा, सेकेंडली एयर के अंदर इससे मॉइस्चर भी बढ़ेगा, और थर्ड हमारा जो पोर्टेबल वाटर है उसकी भी इसके अंदर सेविंग होगी। तो इसके ऊपर काफ़ी बड़े लेवल पर हम काम कर रहे हैं, और हमारा माइक्रो प्लान का एक बड़ा हिस्सा है ये। जो हमारी डिफरेंट एजेंसीज है सर, उनके माध्यम से एयर पोल्यूशन को कम्बैट करने के लिए CSR से काफ़ी हमें सपोर्ट मिलती रहती है, और उसके ऊपर भी डिफरेंट तरह से हम काम कर रहे हैं। सर IEC बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। लोगों को जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, एजुकेट नहीं होंगे, तब तक हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो रियल सेंसेस में हमारे पार्टनर बन सकते हैं। तो जब तक हम अपनी प्लान को, जब तक हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को उन तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ऐसा करना मुश्किल है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ होती है सर, गवर्नमेंट एजेंसीज डिफरेंट लेवल पे अपनी बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटीज़ से काम करती है, लेकिन उसको हम शोकेस नहीं कर पाते हैं, और लोगों के अंदर एक निराशा होती है कि गवर्नमेंट के अंदर कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो जो काम हम कर रहे हैं, फरीदाबाद गुड़गांव जैसे जो शहर हैं, NCR का पार्ट है, सोशल मीडिया वहाँ पर बहुत एक इम्पोर्टेंट और पावरफुल टूल है। तो इन सोशल मीडिया के माध्यम से ना केवल हम अपने जो काम कर रहे हैं उसको लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, बल्कि उस पर जो सजेशंस आते हैं उसको नोट डाउन करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश की जाती है। और सोशल मीडिया सेल सर हमने अपना क्रिएट किया है, और उसके माध्यम से हम काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर इस काम को कर पा रहे हैं। डिफरेंट कैंपेन सर हमारे द्वारा चलाए गए, और इन कैंपेन का एक स्पेसिफिक पर्पस होता था जो असाइन किया गया, लेकिन उससे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती थी कि लोगों के अंदर एक विश्वास क्रिएट करना था, लोगों के अंदर एक जागरूकता लेकर आनी थी कि एक पर्टिकुलर विषय को अगर हम गंभीरता के साथ में लेते हैं और उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए गए, डिफरेंट उनको नाम दिए गए ताकि लोगों को उसके अंदर शामिल किया जा सके।
सो अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्टनर्स हैं, और कोविड के दौरान जब हमारे स्कूल्स नहीं चल रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो हमने सभी प्रिंसिपल्स से रिक्वेस्ट की, उनकी वर्कशॉप की, और उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि वो प्रत्येक क्लास टीचर को ये रिक्वेस्ट करे कि वो अपने हर बच्चे को ये होमवर्क दे कि वो अपने घर के अंदर 2 डस्टबिन रखेगा और वो सेग्रीगेट करेगा, और सेग्रीगेट करके ही अपने पेरेंट्स के ऊपर भी प्रेशर करेगा कि हमें ये वेस्ट प्रोवाइड करवाए। और ये जो हमारा कैंपेन था पूरा एयर पोल्यूशन को कम्बैट करने का, उसके अंदर हमने उन लोगों को एजुकेट किया। और सर इस दौरान लगभग 4 महीने के दौरान 1200 से ज़्यादा स्कूल्स को हमने कवर किया, हर 1,80,000 बच्चों तक हम पहुँच पाए हैं। और ये जो बच्चे हैं सर, ना केवल अपने पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि आने वाले टाइम के अंदर जब ये नागरिक बनेंगे तो एक सेंसिटिविटी के साथ में बनेंगे, तो ईयर्स में ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बाद में भी काम आएगा। NGOs ने सर बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका फरीदाबाद के अंदर पिछले 5 महीने के दौरान निभाई है, और उन्होंने जो भी काम उनको दिया गया उस वार्ड के अंदर उसको पूरी ताकत के साथ करने की कोशिश उन्होंने की है। डिफरेंट स्लोगन्स और बाकी एक्टिविटीज़ सर हम कर रहे हैं। सर एक ये हमारा टर्निंग पॉइंट था फरीदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर। मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि सर कई बार गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, इंस्टीट्यूशंस को भी उनकी ताकत याद दिलाने की ज़रूरत होती है। अनफॉर्चुनेटली म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस इतनी सारी एक्टिविटीज़ करती हैं तो पर्टिकुलर फील्ड के अंदर फोकस करना थोड़ा मुश्किल होता है, और कई बार हम ओवर बर्डन्ड भी होते हैं, क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरह से सिटी बढ़ रहा है, उस तरह से पोस्ट नहीं बढ़ती हैं, उस तरह से मैन पावर नहीं बढ़ती हैं, और एक ही व्यक्ति को, एक ही ऑफिसर को अगर एक से ज़्यादा आप काम देंगे तो एक टाइम के बाद में डिमोरलाइजेशन होता है और चीज़ें होती नहीं हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोगों को, ऑफिसर्स को भी ये फीलिंग थी कि इस बहुत सारी चीज़ें हम कर नहीं सकते हैं और इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। हमने दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर, शायद 5 दिसंबर था वो, 5 दिसंबर को हमने NIT के 4 वार्ड्स को सर स्पेसिफिकली पिकअप किया। पूरी कॉरपोरेशन के सारे ऑफिसर्स को, पूरी कॉरपोरेशन के अंदर जितने भी हमारी वार्ड कमेटीज़ थी, हमारे CSR पार्टनर्स थे, NGOs थे, उन सब को हमने इकट्ठा किया, और एक पर्टिकुलर NIT जो क्षेत्र है, हमने पूरे दिन 2 दिन तक उस NIT क्षेत्र के अंदर काम किया पूरी कॉरपोरेशन को लगाकर, और 2 दिन के अंदर हमने उस कॉरपोरेशन के पूरे एरिया को ना केवल साफ़ किया, कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट पड़ा हुआ था, बाकी चीज़ें पड़ी हुई थी, उसको क्लियर किया। हर घर तक हम पहुँचे, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आप भी इसके अंदर पार्टनर बनिए। और इस मुहिम का सर एक फ़ायदा ये हुआ कि हमने लोगों से ये कहा, फरीदाबाद NIT को अगर आप कभी भी जाके देखेंगे किसी ने, तो वहाँ की जो मार्केट्स हैं वो इतनी कंजेस्टेड हैं कि आपको पैदल चलने में भी दिक्कत होती है, जबकि रोड अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर 100 फीट से ज़्यादा चौड़े रोड्स हैं। तो दुकानदारों ने 10-10 फीट आगे दुकानें बढ़ा ली, उसके बाद अपने साथ में उन्होंने एक वेंडर को बिठा दिया, फिर अपनी गाड़ी पार्क करता था, उसके बाद में जगह बचती नहीं थी, सारा सब कुछ ब्लॉक हो जाता था। सर 15 दिसंबर 2021 तक फरीदाबाद पूरे शहर ने और NIT ने विशेष तौर पर अपनी पूरी एनक्रोचमेंट लोगों ने खुद हटा ली, और जो रोड्स कभी जिसके अंदर आदमी नहीं चल सकते थे, आज उसके अंदर गाड़ियां जा सकती है, और ये मैंने खुद विटनेस किया, और मैं आप सबको इनवाइट करता हूं कि आप आकर देखिए। मैं ये बात बड़े दावे के साथ कहता हूं कि फरीदाबाद में आज के दिन आपको किसी भी मार्केट के अंदर कोई एनक्रोचमेंट नहीं मिलेगी। कोई भी व्यक्ति जो शॉपकीपर है उसने कहीं अपना डिस्प्ले करना भी बंद कर दिया है, और सारे लोग वापस अपनी हदों के अंदर चले गए हैं। और उसका फ़ायदा ये हुआ सर, जो ट्रैफिक कंजेशन होता था और व्हीकल पॉल्यूशन होता था, उस लेवल पे ये मदद सर हमें करेगा। सर इस प्रोग्राम के बाद में हमने ये डिसाइड किया कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और सभी 40 वार्ड्स को हमने 6 हिस्सों में बांटा, और वीक के 2 दिन उस वार्ड की पूरी टीम को हमने 1/6 हिस्से के अंदर लगाया, ताकि ज़्यादा लोग वहाँ पर नज़र आएँ और लोगों को भी एक्टिविटीज़ होती दिखें, और हम उस काम को बेहतर तरीके से कर पाएँ। वो अभियान सर आज भी हमारा जारी है। और वार्ड कमेटीज़ जो हमने बनाई थी सर, उनकी हर संडे उस मंथ का फर्स्ट जो संडे होता है उस दिन वार्ड कमेटीज़ की मीटिंग होती हैं, पिछला रिव्यू करते हैं, आगे कैसे बढ़ेंगे इस बारे में बातें होती हैं। सर 31 दिसंबर याद है ना, इस नाम से एक हमने प्रोग्राम चलाया था, और लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि ये सारी एक्टिविटीज़ आप लोग भी करिए, और हमने उनको एक्टिवली सपोर्ट किया। और इस दौरान काफ़ी सारा जो खत्ते जिनको हम कहते हैं, कलेक्शन पॉइंट्स जो अनथराइज चल रहे थे, उनको हमने ख़त्म किया और चीज़ों को इम्प्रूव किया। नेक्स्ट सर हमने 15 दिन के लिए प्रवर्तन पखवाड़े के नाम से एक प्रोग्राम चलवाया, जिसके अंदर एनफोर्समेंट बड़े लेवल पे किया गया,
और जब हमारी टीम्स ने सर स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को जाकर देखा तो किसी भी वार्ड के अंदर स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स एंड टू एंड क्लियर नहीं थी, कहीं पर वो पूरी तरह से भरी हुई थी या लोगों ने उसके ऊपर कब्जा करके सो मच सो कि लोगों ने उसके ऊपर शॉप्स तक भी कंस्ट्रक्ट की थी। और आज हमारा ये अभियान आज के दिन भी सर जारी है, जिसके तहत हम अपनी पूरी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को, सीवेज लाइन्स को क्लीन करने का काम कर रहे हैं। और 30 अप्रैल 2022 हमारा टारगेट डेट है, जिस दिन हमारी सारी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, सीवेज क्लीन भी होंगी और एनक्रोचमेंट फ्री भी होंगी। ये सर सेक्टर 15 का मार्केट है, फरीदाबाद में बहुत लोग गए होंगे। 15 दिसंबर के बाद में 18 दिसंबर को मैंने विजिट किया था और उस वक्त की फ़ोटोज है जिसके अंदर गैलरी के अंदर कोई डिस्प्ले नहीं था, किसी तरह का एनक्रोचमेंट नहीं था, और वो स्टेटस आज भी हम मेंटेन किए हुए हैं। सर ट्रैफिक कंजेशन का एक बहुत बड़ा कारण स्ट्रीट वेंडर्स हैं। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल टाउन है, इतनी बड़ी संख्या में लोग काम के लिए आते हैं, जब काम नहीं मिलता है तो वो रेडी लेकर रोड के ऊपर बैठ जाते हैं और सारे लोग ट्रैफिक को अवरुद्ध करते हैं। सभी 40 वार्ड्स के अंदर हमने हमारा जो स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है उसके तहत साइट्स आइडेंटिफाई की। प्रत्येक साइट को हमने प्लान किया, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। सभी से हमने इनवाइट किया कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो अप्लाई करें। लगभग 11,000 लोगों ने हमारे को अप्लाई किया है और अगले 2 महीने के अंदर इन 100% स्ट्रीट वेंडर्स को हम अपनी स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स के अंदर सेटल करने जा रहे हैं, ताकि रोड के ऊपर किसी भी तरह से कोई स्क्वैटर नहीं हो और उससे काफ़ी ट्रैफिक के अंदर मदद मिलेगी। सर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की अगर मैं बात करूं तो जितने भी हमारे चालान की ऐप थी या फरीदाबाद 311 एक हमने ऐप शुरू की है जो कि ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट पॉइंट है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए। पहले अलग अलग इंजीनियरिंग विंग या एनफोर्समेंट विंग या डिफरेंट विंग्स अलग अलग तरह के मैकेनिज्म उन्होंने अपनाए हुए थे, बट इसके माध्यम से अब सारी प्रॉब्लम्स हम टेकअप करते हैं और उसका रिप्लाई भी होता है। इसके अलावा सर इसके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, क्योंकि जियो फेंस्ड है तो सारी अटेंडेंस भी 100% हमारी इसके ऊपर आ गई है। जितनी भी सर्विसेज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद देता है उन सब के लिंक्स इसके ऊपर आ गए हैं। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद 311 को पॉपुलराइज कर रहा है ताकि इसके माध्यम से लोगों से हमारा संपर्क बेहतर हो। ये उसके अंदर अब तक जो पिछले 5 महीने के दौरान कंप्लेंट्स आई हैं उसका जो रेजोल्यूशन हुआ है उसके बारे में है। सर एनफोर्समेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी मुहिम का। अगर हम एनफोर्स चीज़ों को नहीं करते हैं तो लोग बहुत देर तक सुनते नहीं हैं। द पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, ऐसा मैंने लॉ पढ़ते हुए जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा था और मैं इसको मौके पर भी देखता हूँ। जब तक लोगों के अंदर डर नहीं होता है, बहुत अच्छे जो लोग भी हैं जो करना चाहते हैं वो भी आसपास के अंदर जब वायलेशंस होती है तो उसके साथ बहक जाते हैं और उसी तरह से वो बिहेव करने शुरू कर देते हैं। तो हमने स्पेसिफिक एनफोर्समेंट विंग्स बनाई और हर वार्ड के अंदर बनाई, उसको हमने स्पेसिफिक लोग दिए ताकि जो एक्टिविटीज़ हम परमिसिबल नहीं है उनको वो ना करें और उनके चालान करें। स्लाइटली फास्टर सर फाइनल स्टेज पे हूँ सर मैं। 2 more speakers सर तो ये जो चालान थे सर लगभग पिछले 1 साल के अंदर, हालांकि ज़्यादा चालान हमने शुरू में नहीं किए क्योंकि एजुकेट करने की तरफ ही हम बढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी 3,552 चालान हुए हैं। 58 लाख रुपए के आसपास सर इसमें रिकवरी हुई है। और अब हमने ये कर दिया है सर कि जो भी चालान करेगा और जो रिकवरी करेगा उसका 10% इंसेंटिव के तौर पर उस एम्प्लॉय को मिलेगा ताकि वो उनका मोटिवेशन भी सर बना रहे। लास्ट सर ये ऑफिस समीक्षा है। जितनी भी वार्ड कमेटीज़ काम करती हैं या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कोई भी जो एजेंडा हम पिकअप करते हैं ऑफिस समीक्षा के ऊपर जाता है, तो वार्ड कमेटीज़ अपना जो काम कर रही है उसका रिकॉर्ड क्रिएट होता है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी इसको मॉनिटर करने में आसानी होती है। सर मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी अगेन। थैंक यू। I must say that Yashpal is one of the most dynamic officers in Haryana cadre. Faridabad is fortunate to have him there. Thank you. Wonderful presentation. Very nice. So we move on quickly to Ghaziabad. Sri Shiv Pujan Yadav, Additional Municipal Commissioner, Ghaziabad. Yeah, my request है। Yes. ये आगे यहाँ से बढ़ता है, एरो से आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना? ठीक, पीछे करना है तो आप सभी को नमस्कार। अभी जैसा कि सवेरे से हम लोग गाजियाबाद और एनसीआर क्षेत्र में बढ़ रहे प्रदूषण पर चर्चा कर रहे हैं और इसके जो रूट काज है वो भी हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। तो जब समस्या का कारण पता चल गया तो उसका निदान करने में थोड़ा सहूलियत हो जाती है।
और इसी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गाज़ियाबाद द्वारा क्या क्या एक्टिविटीज़ की जा रही हैं उन पे हम एक थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। और दूसरी चीज़ कि जिन चीज़ों से प्रदूषण बढ़ रहा है, पहले तो 2 स्तर पे काम करना पड़ेगा हमें। जो प्रदूषण बढ़ाने के कारण हैं, पहले हमको उस पर भी रोकथाम करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका निदान हम करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, लेकिन जो प्रदूषण उत्पन्न करने वाली चीज़ें हैं वो अगर बढ़ाती रहेंगी तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो कॉरपोरेशन अपने स्तर पर ये किया है कि हम लोग सबसे पहले जितने हमारे डीजल व्हीकल हैं डोर टू डोर के, इसको हम कन्वर्ट कर रही CNG बेस्ड पे। आज के डेट में हम जो है 250 हमारे CNG के डोर टू डोर जो है वाहन चल रहे हैं और 150 ई व्हीकल। इससे क्या हुआ है कि जो हमारा स्मोक का प्रदूषण था वो कम हुआ है। उसके बाद हमने अब जो मशीनें खरीद रहे हैं उसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम डीजल पे ना जाकर CNG पे जाएं। जैसे अभी हमने हाई प्रेशर मशीनें ली हैं, जेटिंग मशीन, ये भी 5 जो है CNG बेस्ड है। और हमारी जो रोड स्वीपिंग मैकेनाइज्ड मशीन है वो भी CNG बेस्ड है। तो एक जो हमारा कारण है उत्पन्न होने का, उसको हमने रोकने का काम किया है। दूसरी चीज़, हमारे जो काज 2-3 तरह के, एक तो धुआं हो गया, दूसरा डस्ट है, चाहे जो है CNG वेस्ट का है, चाहे आपके रोड डस्ट है, इस तरह की चीज़ें हैं, और गार्बेज बर्निंग। इन तीनों पे हम ग्रेजुअली काम कर रहे हैं। हमने इसको 2 पार्ट में लिया। एक तो हमारा तात्कालिक क्या समाधान है जिसको हम डे बाई डे कर रहे हैं, और एक दूसरा इसका पार्ट है कि इसका लॉन्ग टर्म क्या हमने सोल्यूशन निकाला है। शॉर्ट टर्म जैसे हमने ये किया कि हम लोगों ने एक अभियान चलाया, गार्बेज वो डस्ट फ्री गाज़ियाबाद। डस्ट फ्री गाज़ियाबाद में हमने एक जो है स्वच्छता की पोटली अभियान चलाया था 2 अक्टूबर 2020। ये अभियान पहले तो हम लोग चलाते थे साप्ताहिक लगातार अल्टरनेट डे करके, लेकिन अब इस अभियान को हम केवल शनिवार और रविवार 2 दिन चलाते हैं। इसमें क्या है, थैले का हम लोग रखे हैं, कपड़े का थैला है। इसमें जो NGOज हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं, कुछ नगर निगम जैसे हम लोग हैं। इसमें हम लोग अपना प्रोग्राम डिसाइड किए हुए हैं कि इस वीक में कहाँ लगेगा। तो रोड के किनारे जो डस्ट है उस थैले में हम लोग उसको भरते हैं और इकट्ठा करते हैं। उसके बाद हमारी एक अलग से गाड़ी आती है, उसको ले जाती है। इसका हम उपयोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ एक CND प्लांट लगाया हुआ हमने, तो वहाँ पे ले जाते हैं और CND प्लांट पे जो हमारा शहर से CND वेस्ट आ रहा है उससे हमारे यहाँ टाइल्स बनने का काम होता है। इन दोनों को मिला के वहाँ पे काम चल रहा है। तो एक तो ये होगा तात्कालिक, दूसरा उसको हम स्प्रिंकलिंग करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। उसके लिए हमने सड़क की धुलाई करते हैं और डस्ट कम उड़े इसके लिए मैकेनाइज्ड स्वीपिंग का प्रोग्राम रख दिया गया। हमारे पास 5 गाड़ियाँ थी, हमने अब 10 कर ली है। तो मैकेनाइज्ड स्वीपिंग करते हैं जिससे वो भी डस्ट हमारी कम उड़ती है। इसके बाद अगला जैसे हमने कार्यक्रम रखा है, डस्ट फ्री में ही हमारा वो भी है, जिसे हम एक एंटी स्मॉग गन से हम 2 काम करते हैं। जैसे एक तो ज़रूरत पड़ने पर छिड़काव करते हैं और हम उसमें जो है सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का घोल डाल के जब छिड़काव करते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं वो भारी होकर दब जाते हैं, तो वो भी साथ साथ काम चलता है। तो ये तो हमारे तात्कालिक सब काम चल रहे हैं जो जिसके हम लोग डे टू डे कर रहे हैं। जो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है उसमें सर हम लोग जो आपके फिन फाइनेंस से पैसे मिले हुए हैं, इससे हम जो है रोड के किनारे जो पटरी है जहाँ से डस्ट उड़ती है, करीब 95 किलोमीटर का हम लोगों ने इस समय काम लिया है जो चल रहा है। वो परफोरेटेड टाइल लगा के उस पर ग्रासिंग करके, उससे 2 चीज़ें कि एक तो धूल नहीं उड़ेगी, दूसरी वहाँ पे ग्रीनरी भी रहेगी। तो ये काम चल रहा है। दूसरा जो हमारे पार्क्स वगैरह हैं, अभी करीब 1250 पार्क गाज़ियाबाद में हैं, जिसमें से 500 पहले डेवलप थे, लेकिन इस स्कीम के तहत भी जो आया है फाइनेंशियल हमारा ग्रांट, उससे जो है 481 पार्क और हमने कवर किया है, ग्रीन कर रहे हैं उसको। सर जो हमारी खाली जगहें हैं उन पे हम जो है मियाँ की फॉरेस्ट्री कर रहे हैं। अभी तक हमारा एक साई उपवन है और प्रताप विहार, यहाँ पे हमने जो है करीब 25,000 पौधे लगाए हैं, जिससे कि हमारी ग्रीन बेल्ट भी हो जाएगी पूरी, और जो डस्ट वगैरह है वो भी कम होगा और पोल्यूशन भी वो कंट्रोल करेगी। और जो हमारा अभी इंदिरापुरम में जिसका लीगेसी वेस्ट का चल रहा था, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग जाते हैं, उसको हमने लीगेसी वेस्ट ख़त्म करने के बाद उसको मियाँ की फॉरेस्ट बना रहे हैं। इसी तरह से सर हम जो हमारा जो लॉन्ग टर्म प्लान में जैसे हमारा डोर टू डोर कूड़ा है, डोर टू डोर कूड़ा के लिए तो ठीक के चला जाता है, लेकिन जो सड़क का कूड़ा है वो डेली तैयार होता है। उसके लिए हमने क्या किया है कि
अभी हमारा एक 4-5 वेंडर्स हैं जिनको हमने एक हो सकता है और जगह के किए हों, लेकिन हम लोग 25,000 पर वार्ड पर मंथ के हिसाब से टेंडर दे दिया है। उसका क्या करता है, उसके जो रैक पिकर्स हैं, जैसे हमने 10,000 अपना हमने रजिस्टर्ड किया था और उसके रैक पिकर्स हैं, तो वो लोग उस कूड़े को ले जाते हैं। और हमारा जो 2 तरह के कूड़े, सॉलिड जो वेस्ट वाला है, जो हमारा वेट वेस्ट है, वो तो हम ले लेते हैं, कुछ ड्राइव आता है, अब कुछ ऐसा जो मिक्स आता है, तो वो भी उसके जो रैक पिकर्स हैं और जो उसको लगा रखा है उसने, वो उसको सॉर्टिंग करते हैं MRF पे। अब चूँकि उसको हमें पैसा देना है, करीब 22 लाख रुपए है ये 96 वार्ड मिला के। अब उसको पैसा देना तो आधा काम मेरा वहीं कर लेता है, वो अपना छांट लेता है, ले जाकर रिसाइकिल करता है, जो भी करता है। और हमने सर इसके जो प्लास्टिक निकलती है उसकी एक प्लास्टिक फैक्ट्री लगा रखी है। प्लास्टिक टूरिज्म एक कार्यक्रम भी हम लोगों ने किया था, चीफ सेक्रेटरी साहब गए थे उसमें। उस प्लास्टिक टूरिज्म में जितने इस प्लास्टिक से सामान बनते हैं, जैसे आपके सजावट के सामान हैं, बेंच है, छोटी कुर्सियाँ हैं, पॉट्स हैं, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, घड़ियाँ बनाते हैं, तो उसको रिसाइकिल करके और काम कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद सर ये जो सर जेटिंग मशीन हम लोगों ने लिया है, इसे ये ऑटोमेटिक है, इसमें ऊपर नीचे करने का सिस्टम है, इससे हम सड़क की धुलाई भी कर लेते हैं और हमारे जो डस्ट पार्टिकल हैं वो सब उससे रुक जाते हैं। और सर अभी इसके आगे जो हमारे यहाँ लीगेसी वेस्ट पड़ा हुआ था, लीगेसी वेस्ट 2 जगह था, हमारे यहाँ करीब 5.25 MT रहा होगा, जिसको हम लोगों ने प्रोसेस करके उसका रेमडिएशन किया है। और इसी एक जगह तो मेरा जो इंदिरापुर में 100 टन था वो ख़त्म हो गया है, 450 वाला भी मार्च में ख़त्म हो जाएगा। तो जो चीज़ें सस्टेनेबल हैं वो कार्य हम कर रहे हैं। और हमने 2 गार्बेज फैक्ट्री लगाई है, जो वेट वेस्ट है वो चला जाता है हमारे गार्बेज फैक्ट्री पे। गार्बेज फैक्ट्री पे एक हमारी रन कर रही है जो 150 TPD पर डे की, वो TPD की है, और एक 350 की हमने हिंडन बिहार में बनाई है, जो हमें 2-3 महीने हम उसको चालू कर देंगे। तो मेरा जो वेट वेस्ट है इसका कंपोस्टिंग उधर हो जाएगी प्रोसेस होके। ड्राई वेस्ट के लिए हमने दे दिया उसको टेंडर पे, और जो उससे प्लास्टिक का है हमने प्लास्टिक की फैक्ट्री लगा दी। तो इस तरह से करके, और जो उसके बाद हमारा बच रहा है आगे के, हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि एक हमारे MOU हुआ है गवर्नमेंट से, और एक नीदरलैंड की कंपनी है वेस्ट टू एनर्जी के लिए, तो उसका जो हमने अभी MOU वगैरह हो गया, काम शुरू होगा। तो इस तरह से जो इसका परमानेंट सोल्यूशन है वो हम कर लेंगे। तो जो बाहर हमारा बर्निंग जो पॉइंट आ रहा था कि जो ओपन में जो है कूड़े डलते हैं, उसके लिए हमारा एक समाधान हो जाएगा। जब रूट पड़ेगा ही नहीं रोड पे, तो इस तरह की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं कि हमारी एक 100 टीम है, जिसमें हम लोगों ने सोशल एक्टिविस्ट को जोड़ रखा है। उनके पास बाकायदे अपना सबके नंबर हैं, वो तुरंत जो है वहाँ से ऐप पे भेजते हैं, मोबाइल पे करते हैं, व्हाट्सअप कर देते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने 102 कर्मचारी भी लगा रखे हर वार्ड में, उनको फाइन लगाने के लिए। तो हम लोग फाइन भी लगाते हैं और इसको जो है रोकने के लिए व्यवस्था भी कर रहे हैं सर। और इसी तरह से सर जो मियावाकी फॉरेस्ट है, इसमें अभी हमने एक जगह और अमृत स्टील करके है कवि नगर में, वहाँ भी 3500 पौधे हमने लगाए हैं। तो इस तरह से हमारे क्षेत्र में करीब 4 जगहों पे मियावाकी फॉरेस्ट हो गया है। और सर जो हमारे जो 46 पॉन्ड्स थे, वो भी अब देखे होंगे गांव के आसपास जितने पॉन्ड्स हैं शहर में जो आ जाते हैं, बिल्कुल गंदे होते हैं, उसमें घास लगी होती है, कुछ चीज़ जली होती हैं, उन पे भी हम जो है सर ये पोजीशन है। पहले इस तरह की स्थितियाँ थीं, अब हमने इसमें से 15 को बिल्कुल कंप्लीट कर रखा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नगर निगम कोई पैसा नहीं खर्च कर रहा है, इसमें हम CSR बेस पे कर रहे हैं। और 15 पॉइंट्स हमारे बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं और शेष पे काम चल रहे हैं। और इस डिले इसलिए होता है कि हम लोग धीरे धीरे अन्य लोगों से CSR फंड से ही सोचते हैं कि पूरा करा लेंगे, तो हमारा जो पैसा वो बचेगा। इस वजह से हम लोगों ने इस पर आगे काम बढ़ा रहे हैं सर। पहले की स्थिति ये है और बाद की स्थिति ये है जो बिल्कुल साफ दिख रही है। तो इससे भी हमारे पोल्यूशन में काफ़ी सहयोग मिल रहा है कम करने में सर। इतनी एक्टिविटीज़ करने के बाद जो अब की स्थिति है, जो देख रहे होंगे आप उस पर कि 2019 से और 20-21 में जो पोजीशन थी, उससे हम जो है हमारा जो PM10 है, इसमें -17% का रिडक्शन हुआ है। और PM25 जो है वो करीब 23% जो रिड्यूस हुआ है। जी सर, थोड़ा फास्ट हो गया सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, वेरी इंटरेस्टिंग।
Now we have a presentation about Noida. Sri Avinash Tripathi, OSD Noida Authority will make the presentation. थैंक यू सर। नमस्कार। नोएडा में यदि हम देखें तो हमारा लगभग 203 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और इसकी पॉपुलेशन लगभग 10 लाख की है, जिसमें से करीब 1,78,000 जो हमारी है वो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। कुल हमारे 168 सेक्टर्स हैं जिनको 10 वर्क सर्कल्स में हमारे यहाँ डिवाइड किया गया है, लेकिन उसमें से अभी पॉपुलेटेड 150 सेक्टर्स हैं। इसमें 94 सेक्टर्स रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं, 57 कॉमर्शियल हैं और 41 हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं। हमारे 2 डंप साइट अभी तक थे, हालांकि एक को हम लोग रेमेडिएट कर चुके हैं। 14 हमने CND के कलेक्शन पॉइंट्स बना रखे हैं CND वेस्ट के लिए। 20 हमारे ट्रांसफ़र स्टेशंस हैं। अगर हम एक सिटी प्रोफाइल देखें तो 775 हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं बल्क वेस्ट जनरेटर्स, जो 100 किलोग्राम से ज़्यादा का वेस्ट डेली जनरेट करते हैं। हमारे यहाँ जो सैनिटेशन वर्कर्स या जो मैन फोर्स है वो लगभग 5200 की है। इनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ये कुछ जैसा कि हम लोगों ने शुरू में बात की थी कि अगर हम एयर क्लीन चाहते हैं तो हमको अपना इन्वायरमेंट पूरा क्लीन रखना होगा। तो हम नोएडा ने पिछले कुछ सालों में सैनिटेशन में काफ़ी काम किया। यदि हम अपना रिसेंट देखें कुछ अचीवमेंट्स तो 2018 में हम लोग 300वें नंबर पे थे, 300 रैंक पे, फिर 150, देन 25th और लास्ट ईयर हम लोग 4th रैंक पे थे। और यदि हम अपने पॉपुलेशन कैटेगरी में देखें मीडियम सिटी में 3 लाख से 10 लाख के पॉपुलेशन कैटेगरी में देखें तो नोएडा क्लीनेस्ट सिटी था इंडिया का। और हम लोगों ने 5 स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग भी हासिल की, जो सिटी को क्लीन बनाने में और सहयोग करेगा। क्या सोर्सेज हैं पोल्यूशन के, इस पे हम लोगों ने पहले भी चर्चा की। जैसे नोएडा है वो लगातार बनते रहने वाला शहर है, हमेशा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। तो जो मेजर हमारा पोल्यूशन का सोर्स है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और डिमोलिशन एक्टिविटीज़ ही हैं। इसके अलावा पर कैपिटा व्हीकल्स भी काफ़ी हैं, तो व्हीकुलर पोल्यूशन भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा ई वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, प्लास्टिक्स ये और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी कुछ मात्रा में कंट्रीब्यूट करता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज कि क्या नोएडा किन किन एरियाज़ में कर रहा है। यदि हम ग्रैप देखें तो 12 पॉइंट ग्रैप जो हमारा एक्शन प्लान है उसमें एक तो रोड डस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम स्प्रिंकलिंग करते हैं। जब पीक डेज होते हैं मतलब विंटर डेज, उस समय हम लगभग 75 या कुछ और 80 के करीब वाटर टैंकर्स लगा के और हम लोग 125 से 150 किलोमीटर पर डे स्प्रिंकलिंग करते हैं ताकि रोड डस्ट को हम रोक सकें। इसके अलावा जितनी भी हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन पे मेट्रो सीट लगाना हम लोगों ने मैंडेटरी कर रखा है ताकि धूल बाहर ना जाए। इसका वायलेशन करने पे पेनल्टीज़ वगैरह का प्रोविज़न है और हम लगातार कर रहे हैं पेनल्टीज़। जो भी व्हीकल्स चाहे वो CND वेस्ट कैरी करे या कंस्ट्रक्शन मटेरियल कैरी करे उसको कवर करके ले जाना ही मैंडेटरी है। इसके अलावा जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होंगी उनको ग्रीन नेट कवर या मेश लगा के रखना ज़रूरी है। हॉट मिक्स प्लांट NGT के ऑर्डर के कंप्लायंस में हम लोगों ने सारे बंद करा दिए थे अपने। इसके अलावा एग्रीकल्चर वेस्ट का हमारे यहाँ बहुत इशू नहीं है क्योंकि नोएडा ज़्यादातर अर्बन एरिया है, जो विलेजेस हैं वहाँ भी फार्मिंग नहीं है। लेकिन हार्टिकल्चर वेस्ट की बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने अपनी टीम्स को एक्टिवेट हमेशा किया है और उसको बिल्कुल ही बर्निंग नहीं होने देते हैं। इसके अलावा जो NGT की गाइडलाइंस हैं उनके अवेयरनेस के लिए हमारे पास एक NGO है और IEC टीम हमारी है जो RWAs के साथ और डिफरेंट इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के साथ मिलके रेजिडेंशियल एरियाज़, कॉमर्शियल एरियाज़ और इंडस्ट्रियल एरियाज़ में अवेयरनेस कैंपेन करते रहते हैं। जितने भी हमारे बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, चाहे वो नोएडा के हों या प्राइवेट बिल्डर्स के हों या हमारे अपने CND वेस्ट प्लांट और बायो रेमेडिएशन प्लांट हों, हर जगह हम लोगों ने एंटी स्मोक गन्स इंस्टॉल कर दिए हैं। इस मैप में हमने लोकेशंस भी शो की हैं। इस समय 51 एंटी स्मोक गन्स हमारी चल रही हैं।
जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसके डिस्पोजल के लिए भी हमने उसको अलग कलेक्शन कराते हैं और उसके लिए एक अलग एजेंसी इम्पैनल कर रखी है सिनर्जी, जो उसका साइंटिफिक डिस्पोजल कराती है। ई वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए नोएडा में 23 प्लेसेस पे हम लोगों ने ई वेस्ट कलेक्शन बिन्स लगा रखे हैं और इसके लिए भी 2 एजेंसीज हम लोगों के ऑन बोर्ड हैं जो इसके साइंटिफिक डिस्पोजल का पूरा एंड टू एंड इसका बंदोबस्त करते हैं। नोएडा में पर डे लगभग 209 MLD सीवेज का जनरेशन आज की डेट में है अभी की पॉपुलेशन के हिसाब से, और हमारे पास 6 फंक्शनल STPs हैं जिनकी कैपेसिटी 231 MLD है। 180 MLD कैपेसिटी के 2 अभी मतलब एक 100 MLD एक 80 MLD का अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो जल्दी ही हम लोग ऑपरेशनल उसको भी कर लेंगे। वो ईयर 2031 के पॉपुलेशन को देखते हुए बनाया गया है। और प्लास्टिक डिस्पोजल के लिए भी हम लोग, वैसे तो प्लास्टिक का यूज़ ही काफ़ी कंट्रोल कर लिया है नोएडा ने, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बिल्कुल बैन कर रखा है, लेकिन जो भी प्लास्टिक निकलता है जो भी रिसाइकिल होने लायक रहता है उसको रिसाइकिल करते हैं, बाकी को सीमेंट फैक्ट्रीज़ में या उसको भेज दिया जाता है ताकि वो उससे एनर्जी बनाई जा सके। ये हमारा 2 फेजेज़ में है जो वेस्ट कलेक्शन का हमारा मैकेनिज़्म है। एक तो हमारे डोर टू डोर मतलब हम सोर्स से भी ले लेते हैं, घरों से भी लेते हैं, सड़कों से भी कलेक्ट करते हैं और इनको फिर अपने अलग अलग कैटेगरीज़ में मतलब सेग्रीगेशन के आधार पे वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट, CND वेस्ट, इनको अलग अलग कैटेगरीज़ में करके हम इसको प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाते हैं। वहाँ हमारे कॉम्पैक्टर स्टेशंस में से पहले ही इनकी पहले अगर सेग्रीगेशन कुछ बचा हुआ है तो वहाँ पे रैग पिकर्स वगैरह हम लोगों ने लगा रखे हैं और उनमें से जो वैल्यूएबल्स हैं उनको निकाल लेते हैं हमारे स्टेशंस पे भी, और जो सेग्रीगेटेड वेस्ट है वो पहुंचाया जाता है फिर हमारे प्रोसेसिंग साइट पे, वहाँ पे इसकी साइंटिफिक ढंग से प्रोसेसिंग की जाती है। और जो इसके प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जो हमारा सैनिटरी जो हमारा इनर्ट मटेरियल निकलता है उसको हम अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को दे देते हैं, जो यूज़ कर लिया जाता है या कहीं लो लेइंग एरिया में भर देते हैं। कुछ इसमें से CND मटेरियल भी निकलता है जो हमारे CND प्रोसेसिंग प्लांट पे भेज दिया जाता है, और जो RDF निकलता है उसको हम लोग सीमेंट फैक्ट्रीज़ को भेज देते हैं। ये कुछ हमारे प्रैक्टिसेस हैं जो नोएडा ने भी रिसेंटली शुरू की हैं। डोर टू डोर हमारा 100% कवरेज है नोएडा का पूरा। लगभग 650 टन हमारा पर डे का जनरेशन है, और हम लोगों ने इसके कलेक्शन के लिए 201 मिनी टिपर्स और 56 सेकेंडरी व्हीकल्स हमने लगा रखी हैं जो इसको कलेक्शन के बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और ये सारी CNG से चलती हैं, CNG ड्रिवन है सारी। छोटे एरियाज़ में या सेक्टर्स में हमारे विलेजेस में वहाँ जाने के लिए कि डोर टू डोर कलेक्ट कर सकें, हम लोगों ने लगभग 200 ई-रिक्शा लगा रखे हैं, और ई-रिक्शा में ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट्स बना रखे हैं। ये सारी चीज़ें हम IEC से कनेक्ट कर सकें, इसके लिए हम लोग हाउस होल्ड मैपिंग भी करा रहे हैं। लगभग 83,000 हाउस होल्ड्स की मैपिंग हम लोग अब तक कर चुके हैं। वहाँ QR कोड लगा देते हैं जिससे कि वो स्कैन होकर हमको मालूम हो जाए किस घर से कूड़ा उठा कहाँ से नहीं। और ICCC हमारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बना है जहाँ से इसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होती रहती है। एक हमारा ये कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन ये प्रोसेसिंग का हम लोगों ने बना रखा है सेक्टर 80 में, जो पूरी तरह से NGT के मानकों के अनुसार काम कर रहा है हमारा। और इसके लिए हम लोगों ने अपना टोल फ्री नंबर भी दे रखा है। अगर कहीं किसी को CND की कोई शिकायत होती है या उसका अपना खुद का CND वेस्ट उठवाना हो तो वो उस पर कॉल कर लेते हैं, हम लोग उसको ले जाके उसकी प्रोसेसिंग कराते हैं। और जो इसके बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं अलग अलग साइज़ के, जो हमारे सैंड पार्टिकल्स या पेबल्स निकलते हैं, उनको भी हम मार्केटिंग भी उनकी कर रहे हैं जो सड़कों के बनाने में या पेविंग में यूज़ हो रही है। इसके अलावा वहाँ अलग अलग शेप की और कलरफुल टाइल्स भी बनाई जा रही हैं जो यूज़ हो सकती हैं। अगर टाइम परमिट करे सर तो 1 मिनट का वीडियो चला सकते हैं, नहीं तो स्किप कर जाएँ। वीडियो सर 1 मिनट का है। कारण हेतु नोएडा प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 80 में कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया है। 5 एकड़ क्षेत्रफल में स्थापित इस प्लांट में वैज्ञानिक तकनीक से प्रतिदिन 300 टन मलबे का निस्तारण किया जा रहा है।
प्लांट में मलबे को ऑटोमेटिक वेट प्रोसेसिंग तकनीक से उपचारित कर इसे रोड़ियां, फाइन सैंड और कोर्स सैंड में बदला जाता है, जिसका इस्तेमाल पेवर ब्लॉक, कर्ब्स और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाने में किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा मलबा एकत्र करने के लिए शहर में 14 वेस्ट कलेक्शन पॉइंट बनाए गए हैं, जहां से मलबे को कलेक्ट कर प्लांट तक पहुंचाया जाता है। इसके अतिरिक्त नोएडा वासियों की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। अगर आपके गली मोहल्ले में ईंट कंक्रीट का मलबा पड़ा है तो उसके उठान के लिए टोल फ्री नंबर 1800-891-9657 पर फोन कर प्राधिकरण को सूचित किया जा सकता है। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 9717080605 पर भी शिकायत की जा सकती है, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मलबा उठाया जाता है। ईंट कंक्रीट का मलबा खुले में पड़े रहने से धूल के कण हवा में उड़ते हैं, जिससे प्रदूषण फैलता है। इसलिए निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से निकले मलबे को खुले में न फेंके। सेक्टर 80 स्थित CND वेस्ट प्लांट में NGT के मानकों का पालन करते हुए मलबे का निपटान किया जा रहा है। धूल को उड़ने से रोकने के लिए यहाँ समय समय पर STP से शोधित जल का छिड़काव किया जाता है। इसके अलावा 5000 पौधे भी लगाए गए हैं। घरों के Thank you so much. Very interesting. Any two questions, please? Another 1 or 2 minutes only. Any two questions? Anybody? Very quick question. सर मैं सुभाष यादव हूँ, एडिशनल CEO एनवायरनमेंट GMDA में और नोडल ऑफिसर एनवायरनमेंट MCG में। सर आई वर्क अमंग इंजीनियर्स। तो सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो प्रोसीडिंग्स में कमीशन से रिक्वेस्ट है सर, उस टाइम सर बरसात होती है, रोड सारे टूटे रहते हैं सर, तो पोर्ट होल को भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी मांगते हुए सर ग्रैप में रोड के पोर्ट होल भी नहीं भर पाते सर हम, और वो एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है सर। तो उसको ग्रैप में पोर्ट होल फिलिंग शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सर। I'm sure it will be taken care of. We will, yeah. Thank you. And any other query, please? That what is the purpose? ये आपने एक स्लाइड में दिखाया बायोमेडिकल वेस्ट डोर टू डोर कलेक्शन. What does it mean? सर ये जिस समय कोविड था उस समय डोर टू डोर कलेक्ट करना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि जिन घरों में होम आइसोलेशन में लोग रहते थे उस समय उनके यहाँ से ग्लव्स, मास्क, ये सारी चीज़ें निकलती थी जिनका कलेक्शन ज़रूरी था। सर हमने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया किस घर से कितना कलेक्शन किया गया और उसका तो अभी भी कंटिन्यू है क्या है ये बायोमेडिकल वेस्ट का? सर घरों से इस समय नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट करते हैं हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स। Any other quick question? Yeah, please. सर हमने कुछ प्लान बनाया है, वो मेरे ख्याल से पूरे देश के लिए अच्छा है। जो मेन सिटीज़ में जो चौराहे होते हैं मेन, और जिसमें काफ़ी रश होता है, तो लगभग 50 मीटर तक अगर एनक्रोचमेंट ना हो, वहाँ पे ना टैक्सी स्टैंड हो, ना रेडी खड़ी हो, तो उससे व्यू ब्लॉक नहीं होता और बहुत सारे एक्सीडेंट्स बच जाते हैं सर। दूसरा पॉइंट ये है सर कि कई जगह ग्रीन बेल्ट्स होते हैं जो व्यू ब्लॉक करते हैं, उनको भी देखा जाए। बड़े बड़े पेड़ों की जगह वहाँ पे छोटे छोटे बुशेज़ या सीजनल प्लांट्स लगा सकते हैं। तीसरी बात ये है कि शहरों में जैसे इन्होंने बताया था फरीदाबाद के कमिश्नर साहब ने कि पहले तो शॉप होती है, उसके बाद वेंडर्स होते हैं, फिर रेडी होती है, फिर उसके बाद जो है जो शॉपिंग करने आते हैं वो पार्किंग कर देते हैं। तो ऐसे में म्यूनिसिपल कमीशन की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है एनक्रोचमेंट रोकने की। हमने बहुत कोशिश की और करनाल को पायलट प्रोजेक्ट पे लिया था 2008 में, और वहाँ हमने ये करवाया था, बहुत सक्सेसफुल रहा था सर। तो मैं चाहती हूँ कि पूरा देश अगर यहाँ पे बैठा है तो ये इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दे। Thank you. so Thank you, ma'am. Thank you so much for your suggestions. Any, please. I'm Dr. Sultan Singh, Principal Scientist, Haryana Space Application Center, and Chief Geospatial Officer, Gurugram Metropolitan Development Authority. My question is from the commissions
they discuss and decide like Subhas Yadav say, give the direction in proceeding with reference to geographical area in the band. Like NCR region is the band. So that NCR region right from Delhi to Patiala and last is Nangal Chaudhary in Rajasthan border. What impact is there? So kindly use some scientific mechanism for that all these GRAP regulations. So the impact is NCR region in an urban area. It is not in a rural area. Kindly wait for 24 hours. Tomorrow, when I speak, we will discuss this issue. Quick, please. Yes, sir, very quick, sir. Yeah. Sir, the construction activities are large source of pollution in cities, sir. I feel that, sir, the speed of construction should be taken care of by way of precast and prefabricated structures. There should be some very aggressive intensive for precast prefabricated units to come up so that we can speed up construction, and constructions cannot be spill over into winter period, sir. Good. Thank you. Thank you. Any other point? So we'll call it a day because, not call it a day, call it pre-lunch, and then we'll have quick lunch because next session is at 2 o'clock. Am I right? Yeah, please. A round of applause for our esteemed panelists on stage, please. I request Session Chair Shri P. Raghavendra Rao ji to kindly present mementos to session speakers. Shri Tanmay Kumar, Additional Secretary, MOEFCC and Chairman CPCB. Can we all applaud, ladies and gentlemen? Kindly keep the applause going. Shri Naresh Pal Gangwar, Additional Secretary, MOEFCC. Shri Sanjeev Kirwar, Principal Secretary, Environment, Government of NCT of Delhi. Shri Yashpal Yadav, Commissioner, Municipal Corporation, Faridabad, Government of Haryana. Shri Shiv Pujan Yadav, Additional Municipal Commissioner, Ghaziabad, Government of Uttar Pradesh. Shri Avinash Tripathi, OSD Noida, Authority, Government of Uttar Pradesh. Thank you, sir. And I now request Shri Arvind Nautiyal, Member Secretary, CAQM, to present token of respect to Session Chair Shri P. Raghavendra Rao ji. Kindly keep the applause going, ladies and gentlemen. Thank you very much, sir. We request everyone to please join us for lunch arranged in the Court Plaza outside the auditorium. Kindly reassemble in the auditorium before 2:15 p.m. As our Honorable Minister, Bhupender Yadav ji, will be here with us. So requesting all of you to please be here in time. We'll start the next technical session at sharp 2:15 p.m. Thank you very much.
I urge Sir to kindly moderate the session and give me a minute as I introduced the key speakers. I'd like to welcome forward Shri J.B. Ravinder, Joint Advisor, Ministry of Housing and Urban Affairs, on stage, please. Kindly keep the applause going as I invite other speakers as well. Shri Vikas Anand, Commissioner, East Delhi Municipal Corporation. Shri Mukesh Kumar Ahuja, Commissioner, Gurugram Municipal Corporation. Shri Salil Yadav, DGM Health, Greater Noida Industrial Development Authority. Shri Ashish Tiwari, Secretary, Environment, Government of Uttar Pradesh. And Shri Dinesh Yadav, Director, DEMS, South Delhi Municipal Corporation. Ladies and gentlemen, a round of applause for all our esteemed panelists who've just joined me on stage. I now request the session moderator, Shri Tanmay Kumarji, to kindly proceed with the proceedings. So we can start with the first presentation and they can join us during the course of the session. Good afternoon to all of you. Now this present session is about role of municipalities and service agencies in abatement. So your of mic. Yeah, good afternoon everybody. This afternoon session is on the role of municipalities and service agencies in abatement of air pollution. As we all know, they have a very critical role in managing and mitigating whatever pollution is caused, and most of the sources that are causing pollution are within their mandate and their jurisdiction. So I would request the first speaker, Mr. Ravinder, to share his thoughts. My request to all the speakers would be that we adhere to the time limit. Thank you. Okay, done. Full screen. Full screen. So very good afternoon, and my Swachh Namaskar to all those seated on the dais and chairperson seated down there. Swachh Namaskar. Swachh Bharat Mission today needs a little introduction. Adhering to the time, and maybe I will try to finish quickly also. All this has been made possible because of the Honorable Prime Minister, who felt it no embarrassment to acknowledge the situation at the ramparts of the Red Fort on 2014 Independence Day. We are really thankful, otherwise it was a situation embarrassing, and like AIDS, unless we start talking about it, things could not have improved. So, Swachh Bharat Mission is synonymous with the Prime Minister's vision for a clean India. And in the first period of the mission, or the first phase of the mission, 2014 to 2019, extended to 2020, with the partnership of the urban local bodies and the states, Ministry of Housing and Urban Affairs, which supplements their efforts through additional central assistance mainly, and a bit of capacity building and IEC activities. The progress has been that urban India, along with the Gramin India, could achieve ODF status. That was a great achievement, and we need to celebrate that. And the challenge is to maintain it, because it is an issue of behavioral change. Next was the solid waste, scientific solid waste management also. There, as we got the data when we are preparing for the EFC of the Swachh Bharat Mission 2.0, 97 wards do have the door-to-door collection facility, and about 67% of the waste was processed. And in between,
source segregation was the key issue. It was being done in 77% of the municipal wards. So it was 97, 77, 67. 77 should have resulted in 77 also, but kind of slippages are there because source segregation was a cultural thing, and we'll come to dump site, then we'll talk about it a little bit more. The source segregation remains the most critical intervention under Swachh Bharat mission, which has to begin at the household level. Earlier presenters were mentioning about our school children also. Maybe people, grown-ups like me, we have not developed that habit, but the younger generation should hopefully do it. It took me about 1.5 years to successfully do the source segregation in my own house after 2014. So this is about 97, 77, 67. These are some of the snapshot. Visible changes have occurred in most of the cities across India. Whenever I go to meet the bank people and others, when I say that I'm working there, they readily say that, yes, sir, there is a visible improvement because of the Swachh Bharat mission, because of the identity given to it and the ownership that citizens and authorities are now willing to take it. This, going with the Swachh Bharat mission, we have introduced the certification process also. Many of the ULBs present here would be aware that there is a SOP for garbage-free star certification rating, 1 star, 3 star, 5 star, and 7 star. There are different yardsticks or the parameters. You need to meet them, 16 plus 8 at this current stage, wherein you are assessed, and based on the scores, you are given the certification. And this certification is going to be a mandatory thing or an outcome-based funding for our Swachh Bharat Mission 2.0. Earlier, it was a voluntary affair, voluntary certification in Swachh Bharat Mission 1. Again, thankful to our Honorable Prime Minister, before, or rather during the launch of the Swachh Bharat Mission 2.0, he threw a big challenge to all of us that हमारे जो गार्बेज है, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, गार्बेज फ्री शहर. पहले मेन फोकस था ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री सिटीज. नाउ ODF to GFC. कचरे के ढेर, that is the big dump sites that are visible everywhere, उनको बचाना चाहिए. He literally had a small talk with our Honorable Cabinet Minister on that stage and said, ये दिल्ली में जो बड़े बड़े dump sites है, उसको साफ करना चाहिए. So that in Swachh Bharat Mission, we have a separate component for dump site remediation. The vision of Swachh Bharat Mission 2.0 goes like this, which you are already aware, but let me apprise you once again. We are focusing on the source segregation, primarily into wet waste and dry waste. And there are hazardous waste, sanitary waste, and electronic waste. All these things are contributing to the garbage-free city. So a lot of scope is there for source segregation. I request all the administrators, you will be here assembled, to go back with this thing that at least source segregation is a non-negotiable thing. I often use the analogy that our arterial roads or expressways are very wide, and etc. That is not the end of the story. We introduce a median to keep the lanes left going or this side going and that side going separate. So the opposite should not meet, wet waste and dry waste. Okay, thank you. Sorry about that. So the opposite should not be allowed to meet. This we must insist everywhere. Why are you disturbing us? Okay, the source segregation is crucial. Without source segregation, no processing would be successful. That should be.
That should be the clear message we go from here onwards. 100% door-to-door collection, that is already happening and we should maintain that. Scientific management of all fractions, this is possible only after source segregation. Now a new component has been added, that is remediation of all legacy dump sites. And added to that, for the smaller cities which are less than 1 lakh population, a new component has been introduced to converge with the AMRUT, that is sewerage component, or the safe containment and treatment of fecal matter in all those ULBs which are less than 1 lakh population, that has been added. In fact, that is the major component of our Swachh Bharat Mission 2.0, as we would see next. Coming back to the components again, there are 4 major components for solid waste management and 3 for the sustainable sanitation. We repeat that 100% scientific waste management of municipal solid waste. There is a focus on air pollution with C&D waste management, processing plants and mechanical sweeping for 132 NCAP cities, as well as 20 more cities of 5 lakh and more population have been added here. So the number actually is 154 cities. We have given the separate funding. I request again here, C&D and mechanical sweeping are 1-page action plans. Our guidelines have been issued. There are 4 modules, total solid waste management action plan for processing. Second is the dump site remediation module. Third is the C&D waste management module. And fourth is the mechanical sweeping module. I request these cities, NCAP cities, to prepare their 1-page action plans and submit to the ministry to avail the first installment of the additional central funding as early as possible. Remediation of legacy dump waste sites is there, and plastic reduction in the single-use and other kinds of plastics, complying with the 3R, the methodology. For sanitation, there is a aspirational aspect to it, more aspirational toilets everywhere, which leads to much more behavioral change, which has got a dynamo effect in all the sanitation facilities, and safe treatment of used water, fecal sludge in those cities which are less than 1 lakh, and particularly to take care of our Safai Karmacharis who are actually doing these hazardous jobs, manhole to machine hole, that is mechanization of all manhole and sewer choking issues, that is also a separate component. Coming to the gross funding that is available here, we had seen earlier that 1.41 lakh is the total Swachh Bharat Mission size. That includes states and other contribution also, ULB contribution and even PPP contribution also. Whereas about 33,000 is the central ACA fund available. Here is the breakup of it. About 9,800 crores is for solid waste processing plants, and 180 crores is for C&D waste processing plants. 135 crores is for mechanical sweepers. These 180 and 135 crores are limited to 154 ULBs, whereas this 9,853 is for all the 4,400 odd ULB statutorily existing today. So why the size is slightly less means in the Swachh Bharat Mission 1, lot of work has already been achieved, particularly in the costlier collection and transportation component that is already now existing, and Swachh Bharat Mission 2.0 at the central level no longer provides funding for the collection and transportation mechanism. As I said, there is another 23,000 odd crores which is available for used water management. Coming to our prime city, Delhi, solid waste management has an allocation of 436 crores and 135 crores is for IEC activities and 68 for capacity building. A large pool of fund is there for IEC and this thing. Here, if I may quote one incident, source segregation is a challenge in Delhi. We acknowledge that. When our larva checker comes, everybody in my block and street is very alert to clean up the
gamlas and see that there is no water stagnant there. 500 rupees fine is not a big matter for households which are having two. I request you, sir, I have requested ULBs also many times, use the same methodology to check the source segregation. In Delhi, some of the photos are available with me. People are throwing their garbage bag from their balconies. So we need to acknowledge it. Not to point out anyone, we need to acknowledge it, and we need to do a lot of IEC and get it back on track. Otherwise, it will go maybe 2 steps forward, 1 or 2 steps again backward. So, and the expected outcomes for Swachh Bharat Mission 2.0 are minimum 3-star rating for all ULBs. They can go higher also. All cities need to go for ODF double plus, that is, any toilet at any point of the day should be found fit for use, which infrastructure-wise, a lot of toilets are available. The questionable thing is whether they are found fit for use at any point of the time due to whether water is not available, light is not available, or a simple bolt is not available. This is the issue. And for the used water management, at least 50% of the cities become Water Plus certified. This is about Swachh Bharat Mission in general. In particular, we have this legacy waste dump sites reclamation, a new component added here, and which bears about 1/3 of the total allocation under Swachh Bharat Mission. Roughly around 3,500 crores is kept aside for this component. Now, dump sites have been developed because of our culture. I want to take you down the memory. When Hero Honda motorcycle came, the advertisement catchline was, "Fill it and forget it." It was very economical to run that. So our cities have habituated themselves, that culture is there. Sweep it, dump it, and forget it. To come out of this, to unlearn this practice is the huge challenge that is before us. In fact, certain cities have remediated certain parts of the land, but again fresh waste is being dumped at the same point. This is happening. So this change, unlearning from the previous culture, previous practices is very important. Legacy wastes are there. This has to be remediated. This can be a single point of greatest pollution in an urban environment. Some of the points which you are already aware, I want to just bring your attention back here. They are crude dump sites, no environmental controls at all. And earlier, probably they were beyond the city limits. Now they happen to be right in the middle of the city, within the statutory boundaries, or at least urban sprawl. The social, economic, and economic costs are indeed incomprehensible. They are too huge to be neglected. They pollute groundwater, they pollute the air, the odor problems are there, vector problems are there, hazardous fires are there, and that very anesthetic appearance itself brings down the land value in the surrounding areas, even if all other things are not there. So, as already pointed out earlier, a lot of action is taking place. I am very happy to know that in Delhi, fire incidents at the dump sites have reduced to a great extent. So these dump sites, due to their decomposing matter present there, can generate spontaneous fires due to methane, and that leads to a lot of soot, smoke, ashes, which are the true PM10 and PM2.5 sources. And much less said about the open burning here and there happening. Sometimes our very municipal workers themselves are setting the waste on fire. Some of the reports by IIT Kanpur mention that about 2 to 3% waste is burnt off in the cities, in Delhi, but it becomes 10% air pollution causing agent in the city. So dump sites are very problematic. They need to be remediated at the earliest. And there exists today the Honorable NGT's orders that all the dump sites should be remediated.
This is the order in the OA number 519 of 2019. And on this, they are reviewing the situation with the governments of the states and the UTs. And the COVID situation, pandemic situation has slightly delayed it. So these ULBs are mandated to comply with this order also. As far as mission is concerned, SBM 2.0 is concerned, we have estimated that around 16 crore metric tons of legacy waste is existing. So that approximates to the comparable population that per capita around 500 kgs. 500 kgs of waste is lying per capita according to 2011 census. In real terms, because of the decomposing nature also, you can say that it is about 5 to 6 years of accumulated waste of a person is lying there. The figures may vary a little bit here and there. And it is approximately 10,000 hectares of valuable land which is covered with this waste. Social health, as I said, costs are very high. And SBM has taken it up as a separate component to be tackled in a mission mode. We are targeting by 2024 at least to complete, whereas the mission itself runs till March 2026. It would be a very good idea if the small size of the dumps are there. Next year, there is a Amrit Mahotsav, this year itself, August 2022. If smaller dump sites are remediated and the national flag is hoisted there as a green space, that would be a very big change in the culture of our solid waste management. The models are 3 basic models: full capping without any recovery of land. Then there is a partial capping and partial recovery of land. Then there is full recovery of land. All the examples have been executed projects in India. They are not theoretical. We can see them in Mumbai, Gorai, and the partial capping in Nashik and Bhopal, and the full recovery in Noida itself and Vadodara. So the challenges remain that volume of the quantity of the waste is not readily available. Characteristics waste keep on changing even though you analyze it because of the different types of waste generated every day and the different layers that occur. Sometimes the ground profile itself is sometimes very deep and sometimes flatter also. The operational time frames are sometimes very difficult to achieve because the end products of remediation may be difficult to dispose of. For a successful dump site remediation, at least 3 aspects have to be taken care and well planned in advance. This should not be seen as a typical contract for the contractor to implement. Just as all our city commissioners, everybody is aware that the solid waste management collection to door-to-door collection to conveying it to the processing facilities or even the dump site is a daily challenge, and we work with the contractors there. We keep them on their toes and we try to partner with them in their problems and solve them. Unless this is done, these dump sites are going to be a challenge. The space management, because of, there is lack of space in Delhi and fresh waste is keeping on coming to these Okla or Balaswa or the Ghazipur. There is a continuous hazard of fire and odor. There is a leachate continuously generated that has to be managed. Scientific processing, even getting the proper anchorages for the trommel machines, screening machines, it is a difficult thing. Now to link the use or the sale of the screened material in a beneficial way is also a challenge. And the use of the reclaimed space has to be considered, well considered. At least in Delhi, there is it is not possible that the land use pattern can be changed there. They can become very good sites for scientific waste management. All these things should be well planned for, and the ULB and the contractor need to work together as a partnership so that a successful conclusion is achieved. This is a photograph of
fresh kind of waste which was consolidated and stabilized in Noida itself. Because a lot of fresh waste was there, it was used as a compost windrow type of pile, and these windrows were kept. After 6-7 weeks, they stabilized and compost was generated. Some of the products... Rabinderji, a couple of minutes more, please. Okay, sir. Some of the materials that are generated in dump site remediation are these. And this is the process flow for successful management of the different materials. Some of the models are also that 100% is by the contractor, and sometimes rented equipment used by the ULBs, but with their own staff. And sometimes there is even the renting of the equipment as well as hiring of the staff. All these models are implemented, and ready models are available. We will be very willing to have a peer learning between ULB to ULB. The total cost range like this. This is generic range only, 70 to 80% for the actual process of screening, whereas 20 to 30% can be the after screen cost to successfully manage the generated materials. Thank you so much, and I assure you that Ministry will be willing to partner with you and give you all the assistance, because you are our champions on the ground, and without your support we cannot achieve anything in Swachh Bharat Mission 2.0. Thank you. I would request members of the audience to take down questions along with the person on the dais they want to address it to, and at the end of the session we'll take those questions. We have the next presentation on identified interventions for municipal solid waste management by Commissioner East Delhi, Mr. Vikas Anand. Respected Chairperson of the Commission, respected members, respected guests on the dais, distinguished guests in the audience. East Delhi Municipal Corporation has traditionally been treated as the backyard of Delhi. Whatever was not possible in Central Delhi, it was sent to the East Delhi. And while working there and thinking of interventions for municipal solid waste management or for any other purpose for the modern, whether modern ways of working or the PPP or on waste burning, it was one of the challenges. And it is one of the most densely populated municipality in the country, and in a small area of around 100 square kilometer, we have over 40 lakh people living there. And there are two zones, the Shadra South Zone and Shadra North Zone, and there are 64 wards. Our average solid waste collection is around 24 to 2600 metric ton, and out of this, there is around 30% is the dry waste, and apart from this, we are also collecting from the EDMC area around 1,000 tons of average 1,000 tons of C&D waste per day. There is one active dump site which is not an engineered landfill site, that is Ghazipur, and we are also maintaining one silt collection site at Singola, which is in northern part of Delhi. We have one 1,300 tons per day of waste to energy plant at Ghazipur, which is currently under refurbishment and expected to start from first week of April. Then we have a very successful plant at Shastri Park for C&D waste processing. And I'm happy to inform that around 6 months back, we started
100% door-to-door collection from the EDMC area, and it is getting stabilized. And apart from this, the street sweeping is done on daily basis, and in commercial area, we have started sweeping on both day and night. So out of this, around 15, out of 2,500 tons, we are collecting around 1,500 tons capacity we have for processing, and there is still a gap of around 1,000 tons. The biggest problem which EDMC is facing, apart from the self-perception, is the land. We don't have sufficient land, and the land which was allotted to us for processing of solid waste has not been accepted by the principal committee for setting up of the integrated waste management facility. So this is one of the biggest challenges. And even then, we have a smaller facilities of processing in different parts of EDMC area, and around 300 tons the wet waste is being processed. Apart from this, we in the last 1 year, we have set up 34 fixed compact transfer stations. We have also started 64 material recovery facilities, and around 500 tons of the dry waste is segregated there, and it is being taken away. So the load on the landfill has gone down by nearly 600 to 700 tons. And since we have outsourced our CNT waste, the collection and transportation of waste, solid waste, there has been also involvement of the concessionaire, as it is on PPP basis, and we are regularly reviewing it. There has been marked improvement in the solid waste management collection as well as its transportation. Then apart from this, because e-waste was also there as a part of the solid waste, we have empaneled agency for collection of e-waste, and recently we have also empaneled like a agency for scrap collection and the processing in a scientific manner, and they are taking it out of Delhi. And we hope that the efforts which we are making for segregation at source, by September 2022, we hope that almost 100% of the source, the solid waste will be segregated at source. Apart from this, we have already closed nearly 150 dhalaus. There were around 350 dhalau in EDMC area, and we have closed almost 150. We target to close all the dhalaus by the end of this year, and to replace them by the FCTS, and also by another set of 64 MRFs, one additional each in each ward. And because what Mr. Ravinder has said, that going 2 steps forward and then 2 steps backward, there to improve the working at the MRF centers, we have now working for installation of the CCTV camera, so that the segregation whatever has taken place from the source, it doesn't get affected there, and also if further segregation is required, it is done there. And we have also started, around 2 months back, we have also started on-demand collection of CND waste, and anyone who want to get their CND waste lifted, they can call the number we have provided, and service is at a nominal cost what we are paying to the agency, same will be charged from the residents. And also, I will be happy to inform Mr. Ravinder that we have also issued a RFP for biomining of the Ghazipur landfill site for 50 lakh tons as output. So it will be around 70 lakh tons of the input. And we have initially in the first bid, we received only 1 bid. And so there was a rebid, and now we have received 2 bids. And we hope that we will get reasonable rates. The technical bids are under examination. And it is an end-to-end solution, starting from the processing till the disposal of the extracted material. It will be the responsibility of the concessionaire, but we will facilitate in the disposal. We have tied up with NHI. NHI was also not very positive
in the past, but now they are taking the inert for filling purpose, and we are also tying with other agencies for taking up of the material which is there. And we are planning that if the sufficient quantity of CND waste is getting extracted, a small CND plant will also be set up there. And without the collaboration and cooperation and the hard work of the NGOs, it is not possible to get the solid waste management process complete. And we are very happy to inform that number of the non-governmental partners we are having in EDMC, and they are working with us for plastic waste management. IPCA is there. We are also working with APAG for redressal of the complaints, and we are also working with other NGOs for segregation at source. Sudhara is there, and Chintan is there. And recently we have also launched a scheme for subsidy for the processing plant in a residential bulk waste generators, especially in the housing societies. And there is a lot of information through IEC methods. This is the status of the dump site. And the target we are taking is December 2024 for entire waste to go from their legacy waste, but it is subject to the availability of land for processing of these fresh waste. And then there were a lot of instances of garbage burning because of the profile of the EDMC area, especially in the northeastern part. And even general public was burning it, rag pickers, there were anti-social elements, and also because of the need for the warmth during winter. And we have taken enforcement action against the officials for neglect in case any burning incident has been found. And we have also prosecuted the violators. And for CND waste dumping, we impounded large number of tractor trolleys, and they were heavily penalized. And we formed 128 teams for keeping vigil on the waste burning and illegal dumping of garbage. For the first time, we made a detailed winter action plan for 2021-22, and it was uploaded on the website with the phone numbers of all the concerned officials of each ward, whom people can call. And it also contained short-term as well as long-term plans for solid waste management and for mitigation of the air pollution. EDMC has addressed almost all the complaints on Sameer app, on CPCB Grab, and the Green app of Delhi government, and also our own 311 app, in which we are collaborating with APAG. And all other platforms also, as soon as the complaints were received, we tried to redress them, and it has also resulted in a lot of goodwill and cleanliness in the entire municipal area. Apart from this, whatever grievances have been received on social media or Twitter, they were also immediately, we redressed them. With APAG, we are also taking the feedback if the disposal, the satisfaction level of the public over the disposal is good or not. And in case it is not good, we are again sending the people, our officials, to get it done in an effective manner. And there had been intensified efforts to check fire at the landfill site. Number of challans were issued for violation of the open burning incidents and for illegal dumping. And we at the SLF site, we have taken number of steps for prevention of fire. We set up methane gas extraction system, and there has been active, we have deployed manpower to restrict the entry of unauthorized persons, and there has been round-the-clock patrolling by of the site by the staff, and we have made matchbox free and no smoking zone. And we have deputed dedicated water sprinklers and as well as the loaders there, and fencing of site has been done. Apart from this, we are coordinating with the other agencies, and there is
Also, a work is going on for more installation of more CCTV cameras so that we can monitor it more effectively. And what in the previous presentation, we have also imposed penalties for non-segregation of source, non-segregation of waste at source, and we are imposing the penalties on the bulk waste generators who have not installed the processing plants. And we have already applied for ODF++ this year, and the inspection is supposed to be starting today, and I hope it will start today. And apart from this, we are also making an application for the garbage-free city for 3-star ratings. And I hope that the work which the EDMC team is doing, and we will be getting the certification for ODF++ as well as for garbage-free city 3-star. And our partners, the NGOs, the entire team of EDMC, the directions from the Commission, we are very grateful to them for supporting us and for making the services of EDMC better. And thank you so much. I would now request Shri Mukesh Kumar Ahuja, Commissioner Gurugram, to share his thoughts with us. Good afternoon, all the dignitaries on the dais and present in the hall. Today, the topic which has been assigned to the municipal corporation to deliver is that the handling of the solid waste and the control of the open burning of the waste. In that regard, I would like to submit to that the principle on which the MCG is working as on today is the in situ management of the solid waste, and moreover the adoption of the 3 Rs. 3 Rs means reduce, reuse and the recycle. We are working on that, and before I proceed further, I would like to say that there are the different kind of the municipal wastes which are the source of the air pollutions, namely solid waste, C&D waste, plastic waste, biomedical waste. The areas of the concern for the handling of the solid waste which the MCG has adopted, the dumping has been reduced at the non-designated places. There had been the large number of the places where the dumping was made, those has been reduced to the 20. It was earlier 40. And the proper handling of those, that has been reduced, and door-to-door collection, non-segregation, improper transportation, burning of these points, these were the challenges which have been taken to task, and the success have been achieved in all those. As we all know that the burning of the solid waste is more hazardous than the burning of the anything else, wood or anything else, and the toxic gases which are released, emission of the gases, those are more toxic, and control of that is the must, and which has been done also to the large extent. The steps which have been taken by the MCG to improve the management and the scientific handling and meticulous and the effective handling of the solid waste, to ensure the door-to-door collection, that is 100%. Segregation of source is also enforced, that we have achieved up to the 70%. The secondary collection points, which I earlier mentioned, those were 40, those have been reduced to the 20, and rather those are being managed in a very scientific manner, and the garbage vulnerable points, those have been reduced to the 0, and those have been converted into the beautiful points, either by laying of the benches or plantation, and somewhere at the parks also. And the points which were the hotspots for the burning of the waste, those have been identified in the market areas by the rag pickers or in some slum areas or even by the public. Those have been identified, and by the constitution of the special squads for those purposes, that has been reduced to the 0. Now there are only few incidents where when we
come to know that there has been the burning of the waste. And effective enforcement by constitution of the teams, there are 4 zones in the municipal corporation, 2 teams with the 5 to 7 persons in each squad. We have been deputed with all the vehicles. They keep on roaming in the area and keeping on watch on all these things. And in addition to that, in the in-situ management, apart from the door-to-door collection and the in-situ source segregation, we have the special focus on the home composting, which we have not achieved so much, but MRF facilities which have been created, those are quite successful. Here it is worthwhile to mention that there is generation of around 1200 metric ton waste, and out of which more than 300 to 400 is taken to the MRF facilities and segregated over there. Rest of the waste in the segregated manner or as a mix is taken to the landfill site, which is at Bandwadi, where the waste to energy plant is being set up, foundation stone of which has been laid by the Honorable Chief Minister on the December 10th. And processing of the legacy waste, which was earlier 35 lakh metric ton, which is also being done, approximately 8 to 9 lakh metric ton has been processed, and the land around 10 to 12 acres have been reclaimed out of the 30 acres and have been given over to the concessionaire for setting up the waste to energy plant. That is the rather a little bit achievement on part of the MCG. Door to door, as I have mentioned, we are ensuring 100% whole of the MCG area has been divided into the 310 routes where the vehicles have been deployed, and the online monitoring of all the movement of the vehicle on the real-time basis is being done by the MCG officials. And the garbage which is being taken either to the MRF or to the landfill site, it is ensured that is taken in the covered shed, covered area by tarpaul or something else. And in addition to that, for the door-to-door collection and the taking of the segregated waste, training of the drivers and the helpers of the vehicles and IEC activities by a specialized agencies being done. And in addition to that, IEC activity in form of the jingles, bulk SMS, and enforcement is also being done. Garbage vulnerable points, as I have told, there were more than 200. Those have been eliminated. Now there I can say that there is no GVP in the MCG where we can say that it is causing the nuisance or the pollution in any way. Waste burning, as I have told earlier, points have been identified. Those were more than 14 number. Those were by the regular surveillance that has been reduced to the 0. Even if any incident is occurred, that is taken to the task. BWGs, as earlier said, those are identification of those has been done. Those are more than 1500, rather can be more than that. But the processing at in-situ processing is being done over there in the more than 200 cases. And in addition to that, there are the 12 number of the MRF facilities, 6 are functional and another 6, on the another 6 work is going on. 3 are activities, which is the main theme which has been adopted by the MCG, reduce, recycle and reuse, upon which we are working. For that, the Bartan banks have been created, cloth bags are being distributed free of cost for their use. Around 5 lakh cloth bags have been distributed. There is one waste to wonder park has been developed at the Subhash Park, and awareness activities are being done regularly. Around 4,300 kilometers of the length, road length is there for the purpose of the sweeping, which includes the major road, minor roads and even the lanes. On the 600 kilometers of the length, 13 number of the sweeping machines have been deployed, and from those mechanized sweeping is being ensured in the night hours with all the mechanical devices, sprinkling, etc., so as to abate the pollution. And sprinkling on the roads and the green belts is being done regularly by some agencies and deploying some tractors.
processing, as I earlier mentioned, that is being done at the landfill site. Out of the 35 lakh metric ton legacy waste, 8 to 9 lakh ton metric ton legacy waste has been processed, biomined, bioremediation and biomined. 10 acre lands have been reclaimed, which has been given over to the concessionaire for setting up of the plant. And rest is being done, and RDF is being sent to the Sonipat JBM plant or some cement factories. Compost is being used in the green belts. And the question which comes, it is open to the House also, with the processing of the legacy waste, the RDF which is being generated, which is being created almost 30% of the total waste, there is no demand for that in the market where we can use. If it can be put to use or in a scientific manner, that would be quite helpful. Thank you, sir. Thank you, Mr. Ahuja. I would request Mr. Salil Yadav, DGM Health, Greater Noida Authority, to make his presentation. आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी सम्मानित डायस के मेंबर्स, सभी विद्वत हमारे श्रोतागण, जिसमें एनजीओज़, सभी यूएलबीज़ के अधिकारी और बहुत सारे ऐसे इसके जानकार लोग इस क्षेत्र के जो आज यहाँ आए हैं, उन सबका धन्यवाद कि आज ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हमारा 300 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग बसा हुआ एक शहर है जो 1991 में बसा था। सो लीगेसी वेस्ट हमारे पास 2.4 लाख मीट्रिक टन के आसपास है, जिसका हम आगे अभी आपको चीज़ें बताएंगे। बेसिकली हमारे इस पूरे ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में जो हम SWM के इंटरवेंशन की जो बात है, जो हम मेन चीज़ें करते हैं, कुछ हमने नए प्रयोग किए हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे, और कुछ हम जो हमारी SWM के रूल्स के मुताबिक आवश्यकताएं हैं, जो स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए आवश्यकताएं हैं, वो हम पूरी कर रहे हैं। जैसे सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज वेस्ट प्रोसेसिंग, बल्क वेस्ट जनरेटर्स, कंप्लायंस, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, रेमेडिएशन, मैकेनिकल स्वीपिंग, मैनुअल स्वीपिंग एंड सैनिटरी लैंडफिल, ये हमारे मेजर इसके कंपोनेंट्स हैं जिस पे हम आज बात करेंगे। हमारे ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में बल्क वेस्ट जनरेटर्स, जो शायद आप सभी लोग अवगत होंगे कि जिनका 100 किलोग्राम प्रतिदिन से ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा होता है, और जो 500 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा की जिनकी एरिया होती है, वो सारे बल्क वेस्ट जनरेटर्स में आते हैं। ऐसे सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स को अपने यहाँ प्रोसेसिंग प्लांट लगाना आवश्यक है ताकि हमारा कूड़ा कम से कम जनरेट हो। जो हमारे इस पूरे SWM रूल्स 2016 की बेसिक बात है, वो 3 चीज़ें हैं। एक तो हम कम कूड़ा पैदा करें, जो कूड़ा पैदा हो वो हमारा गीला और सूखा कूड़ा इसमें डिवाइड हो जाए, अलग अलग हो जाए, ताकि हम घर के ही स्तर पर पहली जो प्राइमरी चीज़ है कि वहाँ कंपोस्टिंग कर लें, और सूखे कूड़े से जो रिसाइकलेबल चीज़ें हैं उनको हम रिसाइकलेबल कर लें, ताकि हमारा डंपिंग साइट्स, जो हमारे एक बहुत बड़ी चैलेंज पर्यावरण के लिए है कि वहाँ पर कम से कम कूड़ा पहुँचे, वो हमारी प्राइमरी हो गई। सेकेंडरी इंटरमीडिएटरी है, जिसमें कुछ ULBs और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस अपने यहाँ इंटरमीडिएट के लिए FTS स्टेशंस बनाती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें करती हैं। ग्रेटर नोएडा ने इसी में एक नई चीज़ की है, वो अभी हम आपसे शेयर करते हैं। ये जो हमारा सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज वेस्ट प्रोसेसिंग का मेथड है, ज़्यादातर ULBs अभी सेंट्रलाइज मेथड को इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि प्रीवियसली आई वाज इन नोएडा, अविनाश सर के साथ हमने काम किया है वहाँ पे। हमने देखा वहाँ बल्क वेस्ट जनरेटर से भी जो कूड़ा है हमारा वो भी जाता है। उससे ULBs को 2 तरह के घाटे होते हैं। एक तो ज़्यादा कूड़े की हमें प्रोसेसिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि रेमेडिएशन का एक अच्छी खासी कॉस्ट है, 1000 रुपये पर टन के हिसाब से लगभग हमें कॉस्टिंग आ रही है, और अब तो और भी बढ़ गई है। तो वो कैसे कम पहुँचे वहाँ पर,
कारण क्या है कि जितनी भी हमारी हाई राइज सोसाइटीज़ हैं, जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं बल्क वेस्ट की, वो अपने यहाँ प्रोसेसिंग प्लांट्स को नहीं चलाती हैं। दूसरा, जितने भी हमारे यहाँ प्लॉटेड एरिया हैं उनका डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट हम नहीं करते। तो हमने अपने यहाँ डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट किया कि जो प्लॉटेड एरिया हैं, जो प्लॉट के जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, उनका कूड़ा वहीं का वहीं प्रोसेस हो। मतलब हम जैसे माइक्रो STPs की बात कर रहे हैं, वैसे ही माइक्रो रेमेडिएशन प्लांट्स की बात कर रहे हैं कि जो सेक्टर में ही हमारे गीले कूड़े को प्रोसेस कर रही हैं। जिसमें हमने 5 क्लस्टर्स में प्लॉटेड एरिया को बांटा है, जिसमें 2 बायोमिथेनाइजेशन पे हमारे वर्क कर रहे हैं और 3 हमारे जो हैं वो बायोमाइनिंग के प्रोसेस पे वर्क कर रहे हैं। तो हम गीला कूड़ा वहीं का वहीं करते हैं। उन सब में एक एक MRF बनाया है, 5 MRF हैं, टोटल 12 MRF ग्रेटर नोएडा में हम बना रहे हैं, जिसमें एक UNDP के तहत भी हम बनाने जा रहे हैं, UNDP और SDFC के तहत, और बाकी 5 ये क्लस्टर्स के हैं, 7 अंडर प्रोसेस में हैं हमारे, जो अभी बनने स्टार्ट होंगे। तो इस तरह से हम अपने जो रेमेडिएशन के लिए जहाँ पर हमारा फाइनल डंपिंग ग्राउंड जो है वो कूड़ा बहुत कम कर रहे हैं। हमारा 2.4 लाख मीट्रिक टन है, जिसको हम अगले 2023 तक ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि हमारा रेमेडिएशन का स्टार्ट हो चुका है वर्क जो है। और अब जो हमारा फ्रेश है वेस्ट, वो हमने लगभग अपना 40% अभी रिड्यूस कर लिया है। बाकी हमारे MRFs और सारे जोन से स्टार्ट होते ही हम नॉर्मली अपना जो डंपिंग ग्राउंड पे कूड़ा पहुंचना है वो लगभग 60% डाउन कर लेंगे। और शायद ये हमारा जो प्रयोग है वो शायद आप सबको एक बार देखना चाहिए, और मेरे ख्याल से शायद ये सबके लिए एक अच्छा वो होगा। और जो हमने डिसेंट्रलाइज का जो ये प्रोसेस किया है उसमें भी ULBs के ऊपर पैसे नहीं दिए हैं, आर्थिक बोझ ULB के ऊपर नहीं है। वो हमने PPP मॉडल पे दिया है, आप ही यूज़र चार्जेस कलेक्ट करिए, आप अपने यहाँ प्रोसेस करिए। अगर कोई गैप बनता है, अगर कोई फाइनेंशियल गैप्स बनते हैं हमारे, तो वो गैप्स केवल हम पे कर रहे हैं, तो हमारा एक तो वो भी पैसा काफ़ी हद तक बच रहा है। तो ये हमारा डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस था। सेंट्रलाइज एज यूजुअल जो सारी ULBs और ज़्यादातर जगह लोग कर रहे हैं कि हम घर घर से कूड़ा उठाते हैं जो जगह है और उसको अपने रेमेडिएशन प्लांट पे ले जाते हैं, रेमेडिएशन प्लांट में रेमेडिएट होता है। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं ज़्यादातर जगह। ये हमारा रेमेडिएशन और डंप साइट का एक लीगेसी वेस्ट का प्लांट है, जहाँ हम ये सारे कार्य करते हैं। इसी तरह हमने CND वेस्ट मैनेजमेंट में भी PPP मॉडल पर ही हमने किया है। हमने ज़्यादातर इसमें भी 2 भागों में बांट दिया। जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं हमारे, जो बिल्डर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं जिनके बड़े ज़्यादा निकले हुए हैं, उसमें हम अपनी तरफ से फंडिंग नहीं कर रहे हैं। वो फंडिंग हम उनकी तरफ से ही करवाते हैं, और वो हमारे यहाँ से कंपल्शन है। बाकी जितने रेजिडेंसेस जो हमारे हैं वो हम उनके मैप कंप्लीशन में ही वो पैसे जोड़ लेते हैं मलबा चार्जेस के, ताकि उसकी भी आर्थिक बोझ जो है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को या ULBs को ना उठानी पड़े। तो हमारा CND वेस्ट में 10 हमारे कलेक्शन सेंटर्स हैं, एक हमारा इसका प्लांट है जो करता है। और उसकी टेक्नोलॉजीज़ आप सब जानते हैं, 2 तरह की हैं, एक वेट टाइप है और एक हमारी रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स जो बनते हैं ड्राई टाइप है। तो हम ड्राई टाइप प्रोसेस के ऊपर गए हुए हैं। वेट टाइप हमारे यहाँ जो हमने दिया था टेक्नोलॉजी में दोनों, बट वो नहीं आए उसमें लोग ज़्यादा। सैनिटरी लैंडफिल है। रेमेडिएशन से हमारे जो 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं आप सबको पता है, 1 इज़ RDF, 2nd इज़ इनर्ट वेस्ट एंड 3rd इज़ कंपोस्ट। तो जो हमारा इनर्ट वेस्ट है उसके लिए भी हमने, पहले हमारे पास नहीं था, अब हमने उसके लिए भी एक सैनिटरी लैंडफिल साइट बना ली है, उसके मैनेजमेंट का कर दिया है। और ये हमारी साइट अस्तौली पे है, जो जहाँ पर हम अभी जो हमारा है वो 3 साल के लिए लगभग एक तैयार हो चुका है सैनिटरी लैंडफिल साइट। और नेक्स्ट के लिए हमने अभी टेंडरिंग अभी से स्टार्ट कर दी है कि जैसे ही ये कंप्लीट होता है नेक्स्ट हम उस पर अपने आ जाएंगे। हमारे जो 500 बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं जिसके बारे में आपको हमने बताया, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग हमारे लिए बड़ी कठिन थी। हमारा जो भी सेंट्रलाइज का वेंडर था वो गाड़ियों से उनका बिना सेग्रीगेट किया हुआ कूड़ा, गीला कूड़ा भी सब मिक्स करके लेके जाता था, और जाता था तो सेंट्रलाइज में वो पहुंचता था, रेमेडिएशन में हमें उसका भी पेमेंट करना पड़ रहा था। हमने इसके लिए अपने यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी हमारे साथ सर्विलांसेस हो सकती हैं वो हमने यूज़ की। 1 मैप हमने एक अपना बनाया, एक अपना ऐप बनाया, और उसमें सारा डेटा भरना बल्क वेस्ट जनरेटर्स के लिए कंपल्शन कर दिया। अगर नहीं करते हैं तो उसमें हमारी पेनल्टीज़ हैं कि आपको ये कैमरे से दिखाना होगा। ज़्यादातर जगह दिखाने के लिए OWCs लग जाती थी, जिसमें कोई साइंटिफिक मेथड नहीं होता था कि कूड़ा कितना इस बल्क वेस्ट जनरेटर से, इस हाई राइज सोसाइटी से कितना जनरेट हो रहा है और कितने की मशीन लगी है। ये प्रैक्टिकल चैलेंजेस थे जो मैंने नोएडा में सीखे, कि उन्होंने 500 किलो की एक लगा दी केवल मशीन, जो शायद एक दिन के भी कूड़े को कैटर नहीं कर पाएगी। और एक दिन अगर OWC में लगेगा तो एटलीस्ट 2 या 3 दिन लगते हैं उसको कंपोस्ट बनने में या तैयार होने में।
तो इन चीज़ों का भी हमने ख्याल रखा कि कितना कूड़ा जनरेट हो रहा है उसके पास। इसके अलावा हमने बल्क वेस्ट जनरेटर्स की इम्पैनल्ड एजेंसीज़ भी कर दी, क्योंकि सारा वो अगर ना कैटर कर पाए कोई एजेंसी वाला, तो हमने उनकी इम्पैनलमेंट भी की और उसके लिए भी प्रॉपर EOIs निकाली और उनको सेलेक्ट किया कि ऐसे लोग जो बाहरी जिनको खुद प्रोसेस करना है और वो बल्क वेस्ट जनरेटर नहीं प्रोसेस कर पा रहा है, तो उसके लिए हमने कहा कि आप बाहर की एजेंसीज़ की भी मदद ले सकते हैं जो अपने यहाँ इसको प्रोसेस करें, अपने यहाँ प्रोसेस करें। उनके हमने प्लांट्स देख लिए, उनकी मशीनरीज देखी, तो वो कूड़ा उनके यहाँ जाके भी प्रोसेस हो सकता है। इसके लिए भी हमने इम्पैनल्ड कर दी और अपनी वेबसाइट पे डाल दी सारी चीज़ें। हमारे बल्क वेस्ट जनरेटर्स भी आपको सारे हमारे वेबसाइट पे भी मिलेंगे, लोग भी देख सकते हैं, और उनका क्या डेटा है ये भी हमने पब्लिक के लिए ओपन किया है ताकि इसमें लोगों को पता रहे। स्वच्छता रैंकिंग कॉम्पिटिशंस वगैरह सब आपको पता है कि हम बल्क वेस्ट जनरेटर्स के लिए करते हैं। इसके अलावा जो हमारी मैकेनिकल स्वीपिंग है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है एज ए ULB के लिए, हमें पता नहीं होता वो मशीन कितनी स्पीड से चली, सही से चली या नहीं चली, उसकी वर्किंग फंक्शंस अच्छी है या नहीं। मोस्ट ऑफ द जगह हमने यही पाया है कि मशीन्स के साथ जो उनकी क्वालिटी का इशू है वो एक बड़ा चैलेंज होता है और हमें पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं था। हमने जियो फेंस कराया अपने पूरे एरिया को कि जिसमें मैकेनिकल स्वीपिंग होनी है। 24 मीटर्स एंड अबव जितनी चौड़ी रोडें हैं ग्रेटर नोएडा में वो सारी हमारी मैकेनिकल स्वीपिंग से स्वीप होती हैं। हमने उसको जियो फेंस कराया। जियो फेंस कराने के बाद हमने उसकी कितनी एवरेज स्पीड आ रही है, कितनी स्पीड आई, कितनी देर ऑन रहा, कितनी देर उसने वर्क किया है, ये सारी चीज़ें हम ट्रैक करते हैं। अगर इसमें आप कहें तो मैं 1-2 मिनट का ही है, आपको दिखा भी सकता हूँ कि वो सारी रिपोर्ट आती है और हमारी बिलिंग जो है वो उसी के बेसिस पे होती है। विनीत एक मिनट मुझे हेल्प करें। तो इसमें हम सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। आप सब ULBs के लिए हेल्पफुल होगा अगर आप लोग चाहें कि ये हमारी NIC ने डेवलप किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो भी एक एजेंसी है, तो हम बिलिंग भी इसी के बेसिस पे करते हैं कि कितनी एवरेज स्पीड से वो चला है, क्योंकि 6 से 10 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड से अगर मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन हमारी रन कर रही है तो वो कभी भी इफेक्टिव मैकेनिकल स्वीप नहीं कर सकती। तो हमें इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि हम ये जान पाएँ कि ये मशीन कितनी स्पीड से और कैसे चल रही है, कितना चली और किस एरिया में चली। जहां हमने कहा वहां चली भी है या नहीं चली है, तो हम उसको एक जियो फेंस एरिया देते हैं और वो उसके बेसिस पे चलती है। ये एक छोटा सा हमारा वीडियो है जिसमें हर व्हीकल का आप देख रहे हैं कि ये यूनिक आईडी है। ये हमने पब्लिक के लिए ओपन किया है ताकि हमारे ऊपर जो हम सुपरवाइजरी नहीं कर पा रहे हैं, जो असली पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो हमने इसमें लागू किया है कि भाई आप देखिए, कोई शिकायत मिले, कुछ मिले, हमें बताइए। इट्स ओपन फॉर ऑल, लाइव है ये। हमारी ग्रेटर नोएडा की जो वेबसाइट है उसमें कोई भी जाएगा, वन मैप पे जाएगा, क्लिक करेगा, आप अभी भी देख सकते हैं कि वो गाड़ी कहाँ चल रही है, किस एरिया में जा रही है। ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड ऑन की हैं। नेक्स्ट हमारा है डिजिटल ट्रैकिंग, ये अभी हमने आपको इसके बारे में बताया ही है। फिर हम मैकेनिकल जो स्वीपिंग के बाद मैनुअल स्वीपिंग्स हैं हमारी, जो रोड्स पे जहाँ जो हमारी रोड्स इतनी चौड़ी नहीं हैं, जो विलेजेस हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा एरिया में अभी 124 गांव स्टिल हैं जिनकी ग्राम पंचायतें ख़त्म हो गई हैं और वो सारी हमारे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत आ गई हैं। वो मैनुअल स्वीपिंग में आती है। इसके लिए हमने 4 जोन इसके बनाए हैं। अब इसमें भी इशू आता है सबसे बड़ा कि जो हमारे सफाई सैनिक हैं, जो सफाई कर्मी हैं, कि उनकी अटेंडेंस को लेके आए दिन ये प्रॉब्लम रहती थी। हमारे यहाँ सारी RWAs गांव के जो पूर्व ग्राम प्रधान, चूँकि अब ग्राम प्रधान नहीं है, गांव के लोग सारे ये शिकायत करते थे साहब हमारे लोग नहीं आए। पहले हमने कोशिश की कि सब व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, उन पे GPS फ़ोटोज़ मंगाते थे, बट उससे भी कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग नहीं होती थी। अब हमने क्या किया है कि सबकी कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस कर दी है। आप हमारे ऐप पे, और वो भी हमने जनता के लिए खोल दिया कि आप देखिए कि हमारे इस एरिया में इतने लोग हैं, वो भी वेबसाइट पे दिखता है। जैसे ही वो क्लिक करेगा वहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं ये भी दिखाई देगा, और वो कितनी देर उसने वर्क किया, कितनी देर उसका मूवमेंट रहा ये भी हमें दिखाई देगा कि वो आइडियल एक जगह बैठा हुआ था कहीं पे या उसका कुछ मूवमेंट हो रहा था। ये सारा हमारा इसमें डेटा कैप्चर होता है। इसी के साथ जितनी मशीन्स, जैसे हमने आपको इसकी बताई थी कि हमारे मैकेनिकल स्वीपिंग में है, वैसे इसमें भी जितनी मशीनरी है हमारी वो सारी जो है GPS ट्रैक्ड है और हम उसी से इसकी ट्रैकिंग करते हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में हमने कई सारे नए प्रयोग करने स्टार्ट किए। जो सबसे बड़ी चैलेंज थी, जो अभी ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी बताई और लोगों ने भी बताई कि साहब ऊपर से कूड़ा फेंकते हैं। ऐसे बहुत से हमारे गांव में हैं, वहाँ पे कई सारे किराएदार हैं, वो ऊपर से नीचे कूड़ा फेंकते हैं। हम सुबह साफ़ करके जाते हैं, बाद में देखते हैं कि फिर वहीं आ गया और सारी प्लास्टिक्स उसमें आ गई। इसके लिए IEC टीम्स हमने 2 अपने यहाँ NGOs हायर की हुई हैं। एक फीडबैक इंफ्रा है, एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स है। तो ये हमने इस तरह की 2 NGOs के साथ एक स्टार्ट किया, जिसको मैंने ही लीड किया, हमारे CO सर ने लीड किया, वॉक टू डस्टबिन,
कि कम से कम आप अगर गाड़ी जब सुबह आई और आपका कूड़ा लेके चली गई, अगर उसके बाद भी आपको कूड़ा डालना है, जो असली चैलेंज होता है, तो एटलीस्ट आप डस्टबिन तक जाएं। तो इसमें भी 2 तरह की चीज़ें थी, एक समझाना और दूसरा फिर जुर्माना। तो जुर्माने के लिए फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया, इसमें भी ऐप की स्थिति दे दी हमने, क्योंकि कोई भी कैश पैसे की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने इसके भी ऐप्स बनाए, इसकी भी चीज़ें बनाई और अपनी NGOs को भी दे दिया कि आप अपने लोगों को भी दीजिए, उसमें उसकी फ़ोटो कैप्चर हो जाती है और उसका जो है वो आ जाता है। फिर एक इशू आता है, हर ULB जुर्माने तो लगाती है, उसकी वसूली नहीं होती। थैंक टू अवर DM कि उन्होंने हमने जितनी भी RC, चाहे वो 2000 रुपये की भी भेजी, उन्होंने उसकी भी रिकवरी के लिए विशेष रूप से एक अभियान चलाया और अब तक हम 70% यानी 3,85,00,000 रुपए अब तक हम SWM में ही अपनी जुर्माने की वसूली कर चुके हैं। तो ये एक अपने आप में चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ बिहेवियर चेंज जो है वो काफ़ी अच्छे से आया है। और मेरे ख्याल से आप में बहुत सारे लोग ग्रेटर नोएडा गए होंगे, आपने देखा होगा कि रोड साइड जो हर जगह हमको दिखती है, ऐसी गंदगी कम दिखी होगी। मैं ये नहीं कहता कि वो पूरी तरीके से सही है, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो गई। नेक्स्ट हम इसमें आते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में और क्या कर सकते हैं। तो हमने बच्चों के प्रोग्राम्स करने स्टार्ट किए, बच्चों की अपने ही ऑफिस बिल्डिंग में हमने बच्चों के बनाए हुए चीज़ें प्लास्टिक वेस्ट से जो बनाई, डेवलप की, वो की, पेंटिंग्स के प्रोग्राम्स किए, ये सारी चीज़ें जो IC से रिलेटेड हैं वो की। अब बात आती है प्लास्टिक रिसाइकलिंग की। हमने IPCA की मदद से अपने इकोटेक 12 में ग्रेटर नोएडा में जितनी भी हमारी प्लास्टिक है उसकी रिसाइकलिंग का प्लांट लगाया है। ये रिसाइकलिंग प्लांट में वहाँ पर शेड्स, आप देख रहे हैं चेयर्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ बनती हैं, जो हमारे प्लास्टिक को रीयूज़ करने में एक बहुत बड़ा कदम है। इसके अलावा MRF की, जिसके बारे में हमने आपको बताया था, एक UNDP और SDFC की तरफ से भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा RDF है वो सीमेंट फैक्ट्री के अलावा हमने एक NTPC से भी करार कर लिया है, जो हमारा 600 मीट्रिक टन करीब हमारा जो है वो कंज्यूम करेंगे। तो एक प्लास्टिक की RDF की जो एक बड़ा चैलेंज था, RDF आज भी रेमेडिएट होता है, लेकिन सीमेंट इंडस्ट्री तक जाने में ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा खर्चा आता था जो है, हालांकि वो ULB को नहीं करना पड़ता, बट देश का ही पैसा है, कहीं ना कहीं संसाधन उसमें बर्बाद होता था। तो हमारे पास में ही NTPC है, हमने कोशिश की कि उनके द्वारा हो और उनकी R&D टीम ने इसको टेकअप किया, हमारे जो RDF की क्वालिटी थी उसको चेक वगैरह किया और उसके साथ ये गया। आप देख रहे हैं हमारा उनके साथ MOU हो गया है और वो नेक्स्ट मंथ से उनसे लेना स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा पायरोलिसिस प्लांट भी हमने लगाया अपने यहाँ। जितनी टेक्नोलॉजी प्लास्टिक के लिए हो सकती थी हम सब कोशिश कर रहे हैं और अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए हम आगे आ रहे हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर जगह आप जो है वो 50 माइक्रोन से नीचे की प्लास्टिक्स को यूज़ या ये चीज़ें नहीं कर सकते, तो उसके लिए ये प्लांट पायरोलिसिस का बहुत अच्छा है और इसको भी आप PPP मॉडल पे ही ले जाएं, अपने यहाँ जिस इंडस्ट्री को दें सर तो उसको अपने यहाँ इसको दे सकते हैं और ये अच्छी आपके लिए चीज़ तैयार होगी। ट्रांसपेरेंसी इन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम्स में, जैसा फिर मैंने बताया कि पब्लिक पार्टिसिपेशंस के लिए हम लोग विशेष काम कर रहे हैं। हमारा एक मित्रा ऐप है जिसमें हम सारी कंप्लेंट्स लेते हैं। इसमें सारी कुछ GPS कोडेड आपकी चीज़ें आ जाती हैं, आप कहीं की भी कोई डालेंगे वहाँ की GPS लोकेशन सहित वो सारी चीज़ आएगी और हम उसको करते हैं। इसमें हमने 90% पिछले 1-1.5 साल में अपनी कंप्लेंट्स के स्टेटस को कम कर लिया है। हमने आपको बताया कि चालान के लिए भी हमने POS मशीन्स ले ली और ये भी सब हमने SDFC से CSR फंड के तहत ली हैं। ये पेनल्टीज़ का हमारा डिटेल है, चूँकि समय कम है इसलिए मैं इसको जल्दी से समअप कर रहा हूँ। हमारी फील्ड एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे CEOs और हमारे सभी लोग इसको खुद जाते हैं, पर्सनली करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने सैटरडे संडे भी डेडिकेट किए हुए हैं अपने। तो ये सारे उसके CLTS की हैं, सामुदायिक बैठक्स की हैं, टॉयलेट्स की हैं जो हम लोग BOT मॉडल्स पे अपने बना रहे हैं। सारे एस्पिरेशनल टॉयलेट्स हैं ODF के रिगार्डिंग जो है, ये हम लोग की मीटिंग्स का है, अवेयरनेस, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटर, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। फिर ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं जिसके आधार पर हमने एक पॉइंट्स को टेकअप किया है और अपने जितने भी काम किए हैं उसमें इसको अंडरटेकन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ग्रेटर नोएडा ने जो प्रयास किए हैं आपको पसंद आए होंगे और अगर किसी सज्जन को इसमें कुछ प्रश्न पूछने हैं तो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू। We'll take questions at the end of the session. Thank you, sir. I will now request Shri Ashish Tiwari, Secretary Environment, Government of Uttar Pradesh. Thank you. Thank you, Chair, all colleagues, Chairman CAQM,
friends, ladies and gentlemen. Today I am going to present not the details about an application which was developed by UP state government, because after the direction of CAQM it has already been implemented to all the 4 NCR states. But definitely this application has evolved over a period of time. And now, as the Delhi has moved forward by, you can say, by enmeshing the e-file system into it, and now we are integrating it with the smart city ICCC and the software, then definitely it is going to address most of the governance issues for implementation of clean air city action plans. Just a backdrop that why this kind of a system, not application, was required. I am talking about year 2019, when we went around Lucknow and Kanpur cities. We found that there was large-scale, widespread non-compliance on dust control measures by construction and demolition activities. Not to name the private commercial projects, but also the National Highway Authority of India, the metro projects, etc., etc. Then we found that, then we started thinking, when there is a non-compliance of about 80-90%, then enforcement definitely will not yield results. Enforcement can yield results only when compliance is 80-90% and 10% is non-compliance. Then we thought that we visited the sites also, we talked to the site supervisors, we talked to the project proponents, because I was also looking after State Environment Impact Authority, which was a body which gives environment clearances. So then we talked to project proponents. Everybody said that we want to comply, but we don't know what we have to do. So with this we started. Then we thought, let us do some IEC activities and whatnot. Then some visionary from amongst us only gave this idea that why shouldn't we go for self-declaration of dust control systems in my project, and that too in an online virtual mode. Then we started developing an audit sheet for dust control, which is more of a kind of a hand-holding for project proponents. It will actually tells you what you have to do. It's a very detailed audit sheet. It covers basically these areas. Everybody knows, I am not repeating: treated water application, dust suppressants, design of the whole site preparation, storage piles, vehicles and equipments, material handling transfer systems, road surfaces, fabrication and monitoring. So then the whole lot of audit sheet having all kinds of very informative kind of steps was developed, and we could assign some kind of a weightage to each actions. So when somebody, a project proponent, goes through, or a site in charge goes through that site, he will actually know first that what I actually am required to do for control of dust. Secondly, at the outset, he has to register. This is the link. Then we took up a drive throughout the state. It is not only for NCR region, but it is for throughout the state of UP. All agencies, our additional chief secretary, air quality monitoring committee, etc.,
we motivated all the departments to get their projects registered at least on this application. So this enabled us to have a kind of a very robust mapping of active construction sites in the state. We started with something around 200 sites in the state, and now the list is somewhere around 700. Then when they registered, when we said that by this time, we gave a time of 1 month, that you would upload your first audit sheet. We are not going to do any kind of a action on the basis of this audit sheet. You come, we issued directions also, but we motivated them to upload those audit sheets. And audit sheets were uploaded by the project proponents. The best thing was at least they understood that what we actually have to do. Then we again visited the construction sites. The site in charge is actually the person who registers on the site. We have his phone number, all kinds of mapping while registration, his email ID, etc., etc. We started interacting with him. At least he could understand what I have to do, because most of them were willing to take up actions. Then we generated a date online for verification of self-audit. On the basis of their self-declaration, we gave them some direction that here you have to improve, and on this date, we will come and verify your self-audit. One of my colleagues, he told me that unless you do a surprise inspection, you will not find what is the real compliance is. Then I said my objective is not to do surprise inspection. My objective is to get him complied. My objective is to ensure compliance. So when we issued a date online that, look, we are going to visit your site on this date, and we deliberately gave a date 15 days ahead. And you will be surprised, 60-70% projects, their level of compliance after site verification, the category didn't change. Marks might have changed, some 5-10% change in the marks, but the category good, very good, outstanding, etc., there was not much of a change in the category. So this is how this application was developed, and then it started evolving over a period of time. Then we felt that in some of the projects we imposed environmental compensations, but environmental compensation was not recovered by the concerned department. The Pollution Control Board has sent a notice for environmental compensation, and after receiving that notice, the concerned department has made the payment to the Thekadar. So then again we thought that, then we talked to the 17, we have a 17 department in our state who are actually doing implementation of clean air action plan in a city. Then we talked to those officers, engineers. They told that since we were not with you in the inspection, how can we have to give them some kind of a show cause, then we can go ahead. But our payment is time bound, we have to do payments, etc. Then you can see here a flow chart. Then the application again started evolving, wherein the line departments can also accompany Pollution Control Board officers while doing inspections. So then login ID, passwords, the legs were created for all the departments, and they were also being notified through SMS alerts and email alerts the date and time of inspection.
so that they can accompany Pollution Control Board officer for that inspection. And after that inspection, if at the end of the process, if we have to take some action, then the action is automatically informed to the concerned department. And you can see on the top right, the Air Quality Monitoring Committee actually monitors, because now everybody is in one system. Then the committee has a dashboard where it can monitor that how many penalties have been recovered by the department or not. So this year, it has started that many development authorities, many construction agencies, they have started recovering environmental compensations from the payments of the contractors. So this is how the system is evolving. It has addressed the issues of governance. It has evolved a synergy between various agencies, and also it has educated the construction agencies, construction site in charges, etc., to actually what to do to control dust. This is a summary. This is how our dashboard looks like. It's a continuous process. You have to upload your audit, then direction will be given, then a date will be generated, then here is the flow chart, then date is generated, then verification is made, and when the process completes, maybe after, in the next quarter, you can again initiate the process. So it enables a continuous tracking of the construction site. These are the advantages. Like everybody says that now from the construction site, nobody can say that I don't know what to actually do. And this is the current snapshot of the dashboard. You can see that 418 projects are registered, self-audit done by 308. It's a continuous process. And pending audits, self-audits is 1110. Physical audits done 203. Then pending physical audit 105. Directions issued 171. Directions complied 61. It's a continuous process. So this is how you can actually monitor on a continuous basis in coordination with the construction line department the compliance of the project. And what next? So these are some air quality results. Of course, it is not only because of construction and demolition activities, but there has been a considerable improvement in our 5 cities, because in most of the cities, like Dr. Sharma is here, he has done source apportionment study. Dust has a major contribution in our, like out of NCR cities. Then what is the way forward? As I said, as I requested that it's a continuously evolving process. We need to have such a system. See, large number of construction sites cannot be physically monitored regularly. You need to have some kind of a virtual setup to monitor those construction sites. So we are already having, I was very happy when Municipal Commissioner Faridabad, he was actually presenting the use of a smart city ICCC and a smart city software. We need to understand that such a visionary kind of software has been developed under a smart city project, and a very high-end state-of-art infrastructure is there in all the smart cities. See, for instance, in the state of Uttar Pradesh, all the smart cities are non-attainment cities. And there are 11 smart cities, some of them centrally government notified smart cities, some of them state notified smart cities. And smart cities software and smart city interface and smart city system is such that
you can also access it from your laptop. So we are now what we are trying as a government, as a pollution control board in the state of Uttar Pradesh, we are integrating all these applications into one comprehensive universal air quality monitoring tool. As Municipal Commissioner Faridabad told that they have used 311 mobile app. What is it? It is actually, it captures the dispersed pollution sources. There is a very good software interface of receiving 24/7 PTZ camera feed. You need not do anything, you just install one camera and then you will be getting your camera feed 24/7. If you have video fenced construction site, like the railway station, the big railway station which is being constructed in the city of Lucknow, if I put 4 PTZ cameras, I think I can do monitoring of the site from my desktop only, from my laptop only, and by a dedicated team who is sitting in ICCC. And ICCC also has a SOP management system. Like for whatever kinds of data you are getting, you can feed SOP in that so that when data is processed, it will send alert to which level the action to be taken by whom and to be monitored by whom and to be supervised by whom. So then we are actually integrating the industrial smart meters also with this smart city software, wherein like somebody is Honorable CM of Haryana told that we have made it mandatory for installation of online continuous effluent and emission monitoring systems in all our industries in NCR request region. just 2 more minutes. Yes. So, but there are instances when the OSIM's sensors are tempered. So we need to have a camera in front of that. We need to have a camera to watch the stacks, whether they are emitting black or whether they are emitting white. So this is how this whole system is being developed, and our dust control application along with video camera feed can be monitored from a smart city ICCC. The infrastructure is already there, software is already there. So this is a way forward. We have started doing this for city of Lucknow, and we are quite hopeful that at least for the construction sites, we will be having very good, robust pollution control system monitoring infrastructure with us. The only last thing is that I would like to request Chairman CAQ ma'am also, the standardization of dust control measures is an area which is to be looked into. Like what kind of smog gun we should have, what should be the RPM, what should be the pressure, what should be the water flow, and what should be the diameter, what should be the height of windbreak for a construction site in Indo-Gangetic Plain, in Chennai, and what should be the specification of agri-shed net, whether it should be of 60% opacity or 40% opacity. So this we are lacking. This, if it is there, then we will also integrate it in our audit sheet to make it more robust. With this, thank you so much. Thank you. We have one more speaker. We are running out of time, so right. Good evening. First of all, I thank CAQM and Ministry of Environment and Forest for giving the South Delhi Municipal Corporation an opportunity to give basically their views about the management of dust from roadsides and open areas.
Just to give an idea about the South Delhi Municipal Corporation in reference to the whole of the Delhi. So we have the 4 zones, South, West, Central, Nazafgarh, and it is expected that now the population of South Delhi Municipal Corporation is more than 1 crore. It has an area of 656.91 square kilometer and 104 wards. So basically, after doing a lot of studies, we have come to the conclusion that there are 3 types of things which are the sources of the dust pollution, basically. These are the roadside dust, and we have the dust emanating from the construction sites, and the open, unpaved areas, basically, so open spaces. So these 3 basically areas we have identified, and South Delhi Municipal Corporation has attacked these 3 areas to control the dust pollution, basically, which is, in fact, is contributing a lot in terms of the air pollution as a whole. So SDMC has, just to get the dust control of the roadside dust, SDMC has deployed 24 number of mechanical road sweeping machines, and there are about 83 machines which are used for the water sprinkling, and which is covering about 650 to 700 kilometers a day. And we are collecting around 60 to 70 tons per day of the dust every day. So these dust which we are collecting, we have designated points in our different zones. So we are depositing that dust over there, and just we have a water sprinkling arrangement at those sites, so as to control the dust over there at the sites, and from there it is taken to the various processing facilities. Then apart from that, another issue is basically the potholed roads, basically, and the roads which have not been, which are in deteriorated condition, basically. So these roads, when the vehicle moves on those roads, basically this dust just goes into the air, and it is also causing an air pollution. So basically, to address that part, we do the continuous resurfacing of the roads, apart from the filling the potholes and patches and all these things. And apart for the roadside bumps and the open spaces, we are doing the interlocking tiles, pavers blocks we are making of. And these interlocking pavers, just to inform you, they are made up of the recycled material, basically. So we are just, we have a C&D waste processing plant. We are taking the C&D waste and we are manufacturing these paver blocks over there. And then we are just putting up those at the open spaces. So it's a kind of a circular thing, basically. So this is just an statistics, basically, that how many machines we have. Just to give an idea that normally we have some machines which are doing the multitasking. I'll just show you the pictures. So these machines are doing the multitasking. Just for example, your super sucker machines, they are basically for cleaning of the, opening or draining of the drones. So in an emergent situation, we are using them for sprinkling of the water and cleaning of the dust also. So these are our suction cum jetting machines. Suction cum jetting machines are also the multitasking machines. So we are using them for the controlling this dust pollution. This is how we are doing the dense carpeting part. These are some of the pictures. Now, apart from that, coming to the construction sites, basically, this is also in construction sites as per the C&D waste management rules. Basically, any sites which is generating a 20 ton per day of the C&D waste or 300 ton per month of a waste is designated as a bulk waste generator, and they have to comply to the certain guidelines. So CPCB has also issued a detailed guidelines in this regard. So our part is relating to the enforcement of those guidelines, and we are into the, for that purpose, we have developed, DPCC has rather developed a portal where we are just uploading all the sites, construction sites, which are more than 500 square meter in area. So SDMC has till date has their own projects. They have uploaded 12 projects, and the private properties 205. And in coming to the enforcement part, basically, we are doing the extensive survey of these sites. So in last 3 months, we have done almost 10,000 number of inspections relating to the dust violation of C&D sites. And about 753 number of challans were imposed on them. An amount of 140 lakhs is collected also. Apart from that, there is an issue of illegal C&D waste dumping by public and by the bulk waste generators. So for that, we have also taken a very strict action on them.
And we have conducted 8163 inspections, and 465 number of challans have been imposed. 463 number of challans have been imposed, and about 36 lakhs has been collected. As regard to the management of C&D waste, SDMC has designated 65 locations and sites in their jurisdiction where the public in general or any the C&D waste generator, they can deposit their malba or the construction and demolition waste. And from there, we take that malba to our one processing plant at Bakarwala and rest to the sanitary landfill. As per the statistics, SDMC in SDMC, there is a generation of about 1,000 ton per day of the C&D waste, out of which we are processing 500 TPD at the Bakarwala plant, and rest is going to our dump site at the Okhla. So for that purpose, basically just to make that totally C&D waste processing complete, 100% complete C&D waste processing, we are developing another plant at Tehkhand. That will also have a same capacity of 500 ton per day. C&D waste plant they are producing recycled aggregate interlocking, which I have already told, and we are using those things in the SDMC projects. And since our Bakarwala plant, since its inception in 2020, almost 4 lakh metric ton of the C&D has been collected and processed. So we are also deploying the anti-smog guns at the sites. So this is our one anti-smog gun at the SLF Okhla site, which we have deployed. And apart from that, all the projects, proponents, which have an area of more than 20,000 square meters, as per those rules, they have to deploy the smog guns. Apart from that, we have done a pilot project also at our Okhla site for using the dust suppressant. So we have used a dust suppressant, which is a 100% organic material in the ratio of 1:100, mixed it with the water, and then we have sprinkled it at the roads. So what we have observed is that there is a significant decrease in the level of PM10 and PM2.5. Apart from that, an agglomeration of the dust particles was also seen, and there is effective dust control has been observed for about a period of 45 minutes. So in fact, this could be one of the game changers, basically, and we have conveyed our findings to the CAQM also to taking a call on this matter, so that this thing be, because this, finally what we have to do is we have to fix up the specifications of this material, dust suppressant material, so that we can use in all our sprinklings and just to have a more effective control on the dust pollution. So apart from that, we are doing the greening and paving also. So this is also statistics that we have developed about 29.8 acres of land into green cover in the last 2 years. We have done green space under the flyovers also, and about 150 vertical pillars, they have also been developed as green, and 2.78 lakh trees have been planted. So apart from that, SDMC has unpaved area of about 4 lakh square meters. So out of that, we have developed, we have in fact paved around 3.5 lakh square meter, and balance will be completed by the end of this month. So this is some photographs of the works of pedestrian Lucknow. Some intervention is that as already told, that we have made up a dust control and management cell in SDMC, which is doing basically the implementation of all dust mitigation measures. Just a couple of more minutes. Sir. Sure, sir. Scientific disposal, maintaining of roads, identification of hotspots, and all these reports and everything, we are submitting reports to the DPCC. And so these are the hotspots. I think this matter has already been dealt in the first half. In SDMC, we have 5 hotspots. I'll just take 2 minutes to explain that we have done a pilot project with an NGO, which is an air pollution action group, which was as per the direction of the CAQM in the January 21. And SDMC, after the successful implementation of this project has now been extended to the rest of the corporations, that is East, North, and New Delhi Municipal Council. So now we have started the second phase of this project, and this project has been very successful, as we have developed basically an SDMC 311 app, where we are, even the public and all, they have, even this NGO has employed some private surveyors, and they are doing the survey of the whole of the area, and they are simply lodging the complaint on this SDMC 311 portal, and all the officers and everyone, they have been directed to address these complaints in a time-bound manner. So this is the statistics that for the Green Delhi app, and is regards to the SDMC 311 app. So in this 311 app has also been very successful in
just taking this pilot project forward. So this is the dashboard of the this SDMC 311 app basically. So one can see the before photographs. So this complaint has been lodged by the public or by any of the officers or any of the surveyor also. And then after the action is taken, and this way, these complaints are being addressed. Thank you. Thank you, Dineshji. We just have 4 or 5 minutes to take a couple of questions. If you have taken down some questions to be addressed to my colleagues on the dais. Good afternoon, everyone. I am Professor Chitralekha Kapre from School of Planning and Architecture. I am also member of CAQM, and I am supposed to be forming the guidelines for the construction sector or assist in doing that. My submission from the morning, what I have observed and what I would like to submit is, as we are at the advent of fourth industrial revolution and the resulting framework of Industry 4.0, the construction sector also has the opportunity to leapfrog to more efficient production, business model and value chain systems. Such a transformation is called for convergence of existing and emerging technologies through a holistic perspective involving like green building practices, lean construction practices, visual and virtual progress monitoring, as has been explained by Shri Tiwari, that ICC, and unmanned aerial systems, involvement of building information modeling and project management system. And obviously, one of the pertinent area to be looked into is standardization. Because once we standardize, then only we can have a effective monitoring and control system for air quality through construction sector. Thank you very much. Thank you so much. Anybody else? So on, no, I said just write it down at the end of the session. You can ask a particular. So there are 2 questions. One is for GB Ravindran sir. So why we are not promoting vermicomposting? That is using earthworms, which is a zero cost, eco-friendly and easy to maintain, and you get world's best fertilizer. So this is for you, waste to wealth. Or if it is so, any model setup you can show. Second question is for the whole jury. Why to the public we address for segregation? Why not we address for no waste generation? What is the need to collect? If you go 50 years back, I think there was no need of waste collection, if so. In that sense, houses, institutions, government, they can start no waste generation, or they can put a model kind of thing, at least institutions or government offices. And we should adopt the Indian culture of reuse, recycle, and stop the Western culture of use and throw, or using of the disposable items. So these are the 2 questions. Thank you. Sir? So I would like to thank everybody who is present over here. I would also like to thank my colleagues for their excellent presentations and for sharing the outstanding work that they are doing in their fields, especially on the field in municipal corporations. A lot of outstanding work is being done. A lot of experiments are being tried to handle solid waste management, to develop portals, to develop websites, to get information, and for managing dust from construction activities. So a lot of outstanding work has been done. I would like to thank all of you for sharing your Sir, I views just with have us. a short comment, if I may. We are running out of time, absolutely. Very We have short to comment. reassemble at 4:15. I would request that if you have some questions, then we had shared an email in the morning. I would No, sir, request- actually the Commissioner, Municipal Corporation of Gurugram asked a question. He said, what do you think about the... So just 30 seconds, please, Yes, sir. and then we only, will only 30 seconds. disassemble Sir, and come I back again at personally 4:15. feel that the question that you asked about the waste to energy plant at Bandwari, I think you might have noticed that the Greater Noida has a very good plan of action where after legacy management, they are putting the whatever the trommeled material into secured landfill site. I would say that that is a much better option. I'm Dr. Shamla Mani from
PHFI, which is also in Gurugram, as you know. Because this will cause less air pollution and it will also be, in terms of health, it's a much better option. Thank you. So I'd like to thank everybody present here. We will disassemble for a cup of tea and then again we have to be back sharp at 4:15. Thank you. Sir, we have not denied vermicomposting, but it will be for very small. Ladies and gentlemen, we request the panelists to just stay with us for a moment. We request the panelists to please stay with us just for a moment. Requesting the panelists to please stay just for a moment so that we can thank you. A round of applause, ladies and gentlemen, for all the eminent speakers on stage. I request Session Chair Shri Sanjeev Kirwarji to please present memento to Shri J.B. Ravinderji, Joint Advisor, Ministry of Housing and Urban Affairs. Shri Vikas Anand, Commissioner, East Delhi Municipal Corporation. Shri Mukesh Kumar Ahuja, Commissioner, Gurugram Municipal Corporation. ठीक है मैं डाल देता हूँ वहाँ से लैपटॉप आपसे ही ले लूँ हाँ मेरे से ले लीजिएगा Shri Salil Yadav, DGM, Greater Noida Industrial Development Authority. Shri Ashish Tiwari, Secretary, Environment, Government of Uttar Pradesh. Shri Dinesh Yadav, Director, DEMS, South Delhi Municipal Corporation. And I now request Shri Rajesh Kumar, Director, CAQM, to please present a memento to the Session Chair, Shri Sanjeev Kirwar, Principal Secretary, Environment, Government of NCT of Delhi. A round of applause, ladies and gentlemen. Thank you very much for sparing your valuable time and for having a fruitful interaction with the audience. We'll start with the next session in next 10 minutes. Thank you very much. Our next session is an open session, ladies and gentlemen. So we will be starting in next 10 minutes at sharp 4:15 p.m. Thank you very much. Honorable Minister Shri Bhupendra Yadav ji will be joining us in this session. So let's make sure that all of us reach here on time and we get 100% attendance for the last session for the day. Thank you very much. हाँ क्या एक मिनट मेरा लो चश्मा दे
रमन रमन बाहर से लोगों को पुश करना स्टार्ट करिए. Another 5 minutes मंत्री जी will be here. हम बाहर जाना. माइक्स कितने हैं? नीचे. अरे वो मत अरे वो मत सिर्फ सिंपल सा ये यहाँ से ये यहाँ के सांसद आप सिर्फ ये सॉलिड के सांसद कहाँ के हैं? जो मैंने भेजा वो वाला हटा करके ये वाला मैंने अलग भेजा था. ये फ्रॉगिंग ये सब हटा कर ब्लैक बना दिया था. ये बिल ब्रीफ ना, क्योंकि ये कल गोविंद ने बोला था, मैंने उसको पूरा चेंज करके व्हाट्सएप पे ही भेजा. कल वाली फोल्डर में, सुबह वाली फोल्डर में नहीं उसमें है, क्योंकि ये वाली भी मैंने चेंज कर दिए थे, कंप्लीट कर दिया मैंने करके भेजा है. सर पेन चाहिए? तो फुल स्क्रीन आप नहीं, वो तो मैं कर लूँगा. आप वो देखो ना, इसका जैसे ऊपर देखो, ऊपर थोड़ी सी स्पेस खाली है, ऊपर नहीं है जैसे नीचे की थोड़ा स्पेस खाली. ठीक है, इतना हल्का कर सकते. नहीं नहीं, ये तो कर दो. ये बस एक यही एक सिंगल फ्लैट है. क्योंकि गुजरात का भी प्रेजेंटेशन वहाँ पे मैडम ने ले लिया था, ऋचा मैडम ने. ये गुजरात से निश्चल आया था. ठीक है, दोगे? हाँ ठीक है सर, रिप्लेस कर दो दोबारा. हाँ सर, ये नीचे टेबल पे थोड़ी लाइटिंग का वो है क्या कोई? ये जो बीच में सेंटर टेबल जिस पे बैठे हुए हैं ना, ये कोई बात नहीं. आपको ये कर दिया आप टेबल पे जो बैठे हैं उनकी डिस्कशन ठीक है.
Ladies and gentlemen, we are about to begin the open session. I request all of you to please be seated. Our participants from NGO can take the middle row and can sit in front. Participating NGOs can please sit in the middle row. भेज दिया है सौम्या सौम्या Ladies and gentlemen, we are starting in no time. We request all of you to please settle down. You may call your colleagues, your co-workers to please join you at the earliest. Thank you. आप कहाँ पे हैं? हाँ, सबका अंदर भेजो ना मिनिस्टर वॉन्ट्स टू कम Kindly keep your mobile phones on silent or switch off mode. सब लोग अंदर आ जाओ समय बुलाओ Ladies and gentlemen, let's welcome Shri Bhupendra Yadav ji, Honorable Minister Environment, Forest and Climate Change. Shri Ramesh Biduri ji, Honorable Member of Parliament. Kindly keep the applause going. Srimati Ranjita Kohli ji,
Honorable Member of Parliament, Dr. M.M. Kutty, Chairperson CAQM, Shri P. Raghavendra Rao, Chairman HSPCB, Shri Naresh Pal Gangwar, Additional Secretary, CAQM, Shri Arvind Nautiyal, Member Secretary, CAQM. Once again, a very, very warm and hearty welcome to the esteemed dignitaries present on stage. Thank you so very much for sparing your valuable time for us. Ladies and gentlemen, this open session is for interaction with the non-governmental organizations. The theme of this session is Way Forward Towards Clean Air Through Management of Pollution from Various Sources. And I now request Dr. M.M. Kutty ji to kindly initiate the proceedings. Thank you once again, sir, for taking the trouble of coming in the afternoon. And I also thank both the honorable MPs. Sir, after the inaugural session this forenoon, sir, we had a detailed presentation from the ministry regarding the about the National Clean Air Mission. It was followed by city-specific action plans by Delhi, Faridabad, Ghaziabad, Noida in the forenoon session, sir. In the afternoon, sir, the role of municipalities and service agencies in abatement of air pollution, and the topics covered were Swachh Bharat Mission, sir, municipal solid waste management, control of open waste burning, management of dust from construction, and management of dust from roads, sir. So the second session of the post-lunch, sir, we have kept an exclusive open dialogue session with the NGOs, sir. And we want to tap the huge expertise and experience they have in pollution control. And this is not a very structured session, it's an open session. So I would request the NGOs to introduce themselves and give your comments, views, which the Honorable Minister is here, which we could consider and appropriately incorporate in future endeavors of ours in controlling air pollution. Thank you so much. You can start now. Hello. Hello. Is it working? Hello. Yeah, good afternoon, sir. My name is Vaibhav. I am the country lead for the Clean Air Fund. First of all, I would like to thank CAQM and especially the MOEFCC for organizing this kind of a dialogue. And this speaks quite a lot about the sort of intent behind doing this interactive session with NGOs and all. Just one or two quick reflections and a question, sir. We keep hearing about this national mission for clean air. Will it be like, launched at some point this year, or do we need to wait till the NCAP is over in 2024 and then there'll be a mission? So that's one, sir. Secondly, we've learned, in the first half of the day, a lot of good initiatives which the city government is taking, like especially Faridabad, the Noida, Delhi and all. So is there sort of a common platform or something, or maybe is it the Prana app, which will kind of cross-germinate the ideas, cross-pollinate the ideas from one city to other? And is there a role of NGOs and philanthropies to play in this regard in terms of do the cross-learnings within the country, within different cities, and also maybe in the regional context, learning which can be taken from India to different countries in the neighborhood? Thank you. नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम को अनाउंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को 2020 की अपनी स्पीच में किया था। उसके बाद फाइनेंस कमीशन ने इसमें 4,400 करोड़ की राशि भी उपलब्ध कराई। इसी के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने 132 सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया और वहाँ पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था करी और उनका ग्रेडिंग और सारा सिस्टम करने का काम किया। इस साल हम लोगों ने उसी के बेस पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने प्राणा एक पोर्टल को शुरू किया जिससे हम रेगुलर मॉनिटरिंग करें। पिछले एक साल में कोविड वगैरह के कारण ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हुई थी। उससे पहले एक बार 5 एरिया और जोन में करके हम लोगों ने रीजनल कॉन्फ्रेंसेस करी थी।
इस बार हम लोगों ने रीजनल कॉन्फ्रेंस वापस से शुरू करी थी दिसंबर के लास्ट या जनवरी में दिसंबर के लास्ट में हम लोगों ने बॉम्बे में, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के सारे मेयर्स वगैरह आए थे, उस कॉन्फ्रेंस से हम लोगों ने शुरू करी थी और सिटीज़ के साथ हम लोगों ने MOU भी साइन करे थे और सिटी में फ्यूचर में प्रमोट करने के लिए किस सिटी में किस प्रकार का एयर पोल्यूशन का स्टैंडर्ड रहता है उसको प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने आगे फंडिंग और बाकी चीज़ों की व्यवस्था करी है। अभी हम लोगों ने एयर क्वालिटी जो अपनी कमीशन है इनको आग्रह किया था कि सेम आप NCR में भी इस विषय को करिए। बहुत सारी एजेंसीज़ भी एयर पोल्यूशन को लेकर के काम कर रही हैं, NGOs भी एयर पोल्यूशन को लेकर के काम कर रही हैं, डिफरेंट स्कीम भी चल रही है, उसके कन्वर्जेंस के लिए भी हम लोग मिनिस्ट्री की तरफ से लगे हैं। एयर पोल्यूशन का अर्थ केवल एयर पोल्यूशन को ये मान लेना कि कुछ ही कारणों से होता है, ऐसा नहीं है। डस्ट मैनेजमेंट से लेकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर व्हीकल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, लाइफ स्टाइल, ये सब चीज़ें एयर पोल्यूशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और जो बेसिकली सिटी गवर्नेंस से स्पेसिफिक ज़्यादा है। राज्य सरकार के द्वारा भी उसके लिए राशि और व्यवस्था की जाती है, लेकिन फिर भी हमारा मानना है कि बेसिक में अगर सिटी गवर्नेंस हमारी मजबूत होगी तो नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे। अभी जहाँ तक बाकी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की बात है, अभी ये जो 2 दिन की हमारी सेमिनार होगी तो डिफरेंट, अभी इससे पहले म्यूनिसिपल कमिश्नर्स ने अपने प्रेजेंटेशन दिए, आप लोगों के भी कोई व्यू आएंगे तो उसके हिसाब से फिर हम लोग निर्णय लेंगे। लेकिन हम बिल्कुल ये मानते हैं कि नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम ये अपने आप में एक सबसे बड़ा जन भागीदारी का कार्यक्रम है और आज की जो ये 2 दिन का डायलॉग है ये भी इसी दिशा पे ज़्यादा सुझाव लेके पार्टिसिपेटरी मेजर्स हम कैसे खड़े कर सकें उसके लिए हम लोग करें। यहाँ पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से भी अनुमिता राय चौधरी हैं, कुछ कहना चाहेंगे? अनुमिता, यस, माइक दे दीजिए, माइक दे दीजिए। हाँ, So since morning today, we have really heard so many presentations. And what is very clear, that there is a convergence and we are all coming together. And clearly the key thrust areas where we are focusing on now, we are looking at the big energy transition towards clean fuel in each sector. It is also coming out very clearly that we want to look at that the public transport, non-motorized transport gets scaled up so that we can reduce the vehicular pollution, and the circularity, the waste management, which has really caught everyone's imagination. So like that, I think there is a convergence here that how we want to move forward. So I just want to highlight that this time, to ensure that we really move in a time-bound manner to meet the target, if we can also additionally focus on the key enablers. And when I'm saying enablers, this means that for each sector, if it is possible to do a very clear gap, infrastructure gap assessment, and therefore the gap financing that is needed to enable that change. Second enabler will be the pricing. We know that industry will always respond to lower prices. And so therefore, when we talk about fuel pricing, for instance, coal versus natural gas, or any other kind of pricing, for instance, recovering the cost of using a car, or taxing the bad to funding the good. So those kind of approaches will be great. And the third area where we would really like to look at, that when we're talking about energy transition today, the one energy that we're all looking at is electricity. For vehicles, for industry, even we want cooking to be done with electricity. So therefore, there has to be a deliberate focus on distribution of electricity and clean electricity. And so that's the key area that's why I thought that this time, if we can really focus on some of those key enabling points to make it happen. And the final point is that a lot of prescriptions and directives are being given now, and through the NCAP process,
also in Delhi, NCR, and we are all very clear we want to take a regional approach and make that happen. But what we are finding where we need to build a lot more capacity is for the departments to understand the full scope of action. Often we find that today the new generation action that is needed, the departments are not being able to detail out exactly how the design or the system design needs to be done. So for that, if you can give clear guidance and be a big enabler on that, so that's why we are looking at some of those key instruments of change. Thank you. Thank you very much. And all concern raised by you, either it is a infrastructure gap concern or pricing issues, electricity issues, as well as the capacity building and regional approach. Definitely we are working on all this aspect. Pricing is the major concern issues, especially for the industry in this NCR region. Because when we force them to go on the PNG and the other measures, I think there are some difficulties is there. We are talking up with the inner government also about this. These are the issues where in future we will sit with the industry and talk with them. As per the capacity building is concerned, we have already made a provision even in the NCAP funding system also, that we are ready to provide sufficient funds to the municipal committees and councillors if they are enhancing their capacity to fight with the air pollution and all these measures. Both are concerned. But regional approach is necessary because the problem in the NCR area is definitely not the same problem with the southern part of the country or western part of the country. So that's the reason we are organizing this regional conferences also. But definitely there is a lot of contribution of Center for Science and Environment in this field, and we need your future your support both in the scientific field, research field, as well as for the capacity building also. Now the Public Health Foundation of India is also here. Professor K. Srinath Reddy is here. Any representative from? Yes, you want to say something? Yes. Good afternoon, sir. This is Dr. Shamla Mani. I'm representing Public Health Foundation of India. I just have a few points regarding the health aspects, especially when it's to do with the air pollution control measures. As Dr. Purnima, who spoke this morning, also mentioned, the Ministry of Health has also constituted several committees and several programs with climate change and air pollution. And I think that needs to be taken into account. I specifically work in the area of solid waste management, and I have done fair amount of analysis, and I was also a professor at the National Institute of Urban Affairs. The idea of having waste to energy incineration plant, sir, my submission is that it's not a good idea at all. First of all, it costs about 20 crore per megawatt to establish it, and about 13 to 14 rupees a kilowatt hour to even produce 1 kilowatt hour of electricity. And it is also causing a lot of air pollution. The 3 waste to energy plants were monitored by the CPCB last year, and they've all been fined for even dioxins and furans control. So I would suggest that some of the good municipalities, we had extremely good presentations today, segregation at source, and biomethanation is an extremely good option, sir, for bulk generators. That, if it can be really promoted and we can use that for running city buses like in Indore or Hyderabad or Bengaluru, or street lighting as in Pune, or even cooking fuel in small towns, that would help us to reduce our import bill as, for petroleum, as well as provide clean air in all our cities. So that's my submission, sir. Thank you. Biomethane is a good idea. Even the government of India started 2 different programs as well as a pilot project, but it's from the different, not with the West. But cow dung and all these things, there is a Govardhan project started in Varanasi as well in the Indore also. So it's already commenced.
Govardhan projects. But you have your own views about the energy production from this waste. That is your view, but definitely we want to share your experience and research in future also. Keep in Sure. Keep in touch with Mr. Kutti. You will send your comments and all things. Even your whatever your research and what is your opinion, you will send. We will use in future also. Now, Shakti Sustainable Energy Foundation. Anybody is here from? Yes. Good afternoon, sir. Dignitaries on the dais. My name is Subhashish De, and I am one of the directors from Shakti Sustainable Energy Foundation, and I lead Shakti's work on climate policy, air quality, and climate finance. Shakti had been involved in a number of activities on air pollution, be it supporting cities on developing city action plans. We have supported more than 15 cities. The recent one was Surat, which was unveiled by the Honorable Chief Minister. We supported a number of pollution control board on developing PME support and all. From this experience, my suggestions would be one would be for the pollution control boards. Most of the state pollution control board, when we work with them very closely, we have found them, they're very passionate about their work, but they're short-staffed. So with our capability, we have supported them with developing project management units. Many of the, you might be aware that many of the pollution control board have project management units supported by different organizations, but they have their short life. The resources have to be augmented as early as possible there. The second would be in terms of understanding that air pollution is not a city problem only, it's an airshed-based problem. So when we will be able to move from a city-based approach to an airshed-based approach. The next one is on finance. We all know that without money, nothing is going to happen. The government of India or the state government or through the Finance Commission, we had been supporting air pollution-related activities to a great extent. But I guess we need to have innovative measures to support augmentation of this fund with flow of private capital. Green bonds or the experimentation which was done in Surat by EPIC are certain examples where private finance could be mobilized. And finally, sir, we have also supported development of this National Knowledge Network. The Secretariat is in IIT Kanpur. So we just wanted to understand what would be the vision of your government to take this knowledge network forward. You had created a great institutions with having more than 100 institutions of repute to help the city governments, but what would be the thought forward from there? Thank you, sir. Thank you very much. There is one issue is there that we need, we want to more elaborate on the subject, that is about the environment audit. It is not necessary that every industry monitored by the CPCB, because in future there will be increase in the number of the industries also. We are giving a permission to the industries to run on basic environmental norms, but sometimes we found that norms not to be fulfilled by the industries. So better there will be in future we can. It's a on idea level. There will be in future there will be environment audit also. Most industry file their environment audit report of the every year. That can be work or not work. I don't know, but it's one of the idea. Here we are taking an opinion of the public also. Regarding the airshed is concerned, it is already recognized in the present Air Quality Management Commission's Act also. First time, the airshed. We recognize as a, by legislation we recognize the airshed. Green bond is an initiative which is started by Government of India in the last budget also. As per the carbon credit and other thing is concerned, it is an achievement of India in the last COP26 that Kyoto Protocol CDM is also recognized by the COP in the UNFCCC, and what Kyoto Protocol, our commitment, our carry forward, basically it was a major share of Indian companies, so that is also recognized at the world level. And Article 6 of the Paris Agreement became a rule book in this present COP, and in future, because this rule book is complete, in future there will be a
major change about the carbon credit and green bond in future also. So futuristic world about that, we are working on that, and definitely all those NGOs who want to work in this area, that is the area where the world feel that it will be a future also, the green bond and the implementation of Article 6. Now Air Pollution Action Group. Thank you so much. I'd like to thank CAQM for creating this dialogue and allowing us the opportunity to place forth our views about air pollution. So my name is Nipun Matreja and I'm representing Air Pollution Action Group. We've had the opportunity to work with municipal corporations in Delhi, led by the CAQM, and work on dispersed sources of air pollution. So I'd like to put forth 3 key insights that we've made in the last 1 year or so. The first one being, even though since morning we've had presentations by different municipal corporations and we've understood the sort of work that they are doing on ground, while this may be a Delhi-specific issue, it's just that the number of agencies that work on ground in Delhi, say for example PWD, Irrigation and Flood Control, DDA, all these corporations also have a big role to play on ground. For example, अगर हमें dust से related कोई भी open areas में काम करना है, any meaningful work cannot happen without participation of DDA. और अगर हमें roads पे कुछ काम करना है, that would involve the PWD. So there's a big need to bring into the fold all these external agencies as well. While corporations are leading several projects, the agencies also need to play their part. The second is also related to disposals of air pollution. Like the speaker before me mentioned an airshed approach. If we are working on dispersed sources in a very specific area in Delhi, it may or may not have the intended impact in the whole airshed. So it's very important that the same project that we are working in Delhi should also now be scaled up to other NCR cities. For example, Gurugram, Sahibabad, Faridabad, all municipal corporations should be leading such a project as well. That was our second suggestion. Our third is related to the thermal power plants and the installation of FGDs, flue gas desulfurizers in these plants. One of the things that we've noticed is that there are about 33 different units in 11 power plants in the NCR area who are establishing these FGDs. One of the key insights we made was that bid select होने के बाद भी there is a long 24 to 30 month period जिसके अंदर वो project commission होने में लगता है. So while on paper it exists कि yes, multiple projects have already selected a bid, it does not give clarity कि where exactly in those 24 to 30 months period we are at. So it's important that we build a monitoring and review method where maybe at a quarterly stage we are looking into each of these 33 projects and checking whether they are actually running as per time or not. These are largely the 3 recommendations I'd like to make. Thank you so much. Yes. Sir, we have worked with Air Pollution Action Group in Delhi for studying dispersed source of pollution and how they can be tackled. We started with the South Delhi Municipal Corporation. We identified there are 37,000 identified small pollution causing centers only in South Delhi. And based on the experience that we have gathered, we have made a standard protocol, and as mentioned by the representative of Air Pollution Action Group, we have already extended this program to the whole of Delhi. It has been put into East Delhi as well as South Delhi. And once we have completed this, sir, we will be able to scale up it further. So the scale up has already taken place, sir. And with respect to desulfurization related issues, sir, I think the Additional Secretary in the Ministry will be able to say it better, sir. Yeah, power plants.
As far as installation of FGD in power plants of NCR region is concerned, the deadline given is December 2022. And if they fail to achieve that deadline, there is a provision of environmental compensation also, based on the kind of delay they have. So the deadline is quite clear. And it has been communicated by CPCB to the individual power plant owners or the companies about the deadline. So CPCB is continuously monitoring with them. And I think Commission is also monitoring that with them. The Energy and Resource in TERI. Somebody is from TERI or not? Yes. You want to say something on behalf of TERI? Good afternoon, sir. I am Dr. Arindam Datta from TERI. We have that opportunity to work in different parts of the country related to the air pollution management with Central Pollution Control Board and different state pollution control board. And while working in different part of the country for developing the source apportionment study and the city level air pollution action plan development work, we found that there are lack of some micro level action planning. When I'm talking about the micro level action planning, I'm telling that suppose a city level action plan when we are developing, we should go for a ward level action plan development. And in all the cities when we are working, we found that most of the cases, a huge part of the particulate matters that is coming outside the city. So definitely there is a need for air-set approach for the tackling of the air pollution in a particular city. And in all the cities wherever we have worked, we found that there are lots of waste and the biomass is available, and the industry is having a good amount of pollution contribution in that city environment. So we suggest that this biomass can be pyrolyzed, and this pyrolysis product can be used in the industry as the fuel. And when we are doing the pyrolysis, there are lots of other opportunities, other material are also producing from pyrolysis, so that city government can also develop their own funds from these things. And these funds they can use for the city level development. Thank you, sir. Thank you for your suggestion. Now the climate trends. Somebody is here from climate trend? Thank you, sir, and thank you for this opportunity to all of us. I work with a group called Climate Trends. We work on communicating about climate and energy issues. As part of that, we run something called the NCAP tracker, where we try to put data which is accessible to partners and researchers, etc. A couple of things that we noticed, and I just want to bring to your attention. One was that, of course, Delhi has received a lot of focus when it comes to vehicular emissions, and Anumita ma'am is here, and obviously like all of, a lot of work has been going on, whether it's about CNG or the BS6 fuel, etc. But even when we are analyzing from 2013 onwards, the NOx levels in Delhi still, even in 2020 when there was a nationwide lockdown, they are still way above even CPCB limits, not to talk about the WHO levels. So clearly, I mean, maybe Delhi needs a more stringent sort of a California model to look at. What we are doing is definitely the government is doing a lot. There's an electric vehicle policy. There's a lot of effort going on. But just to kind of highlighting that despite all these efforts, we are somewhere failing. I mean, not exactly failing, but it's still a big challenge. The other thing that I wanted to kind of highlight was that, and I know that PHFI has brought this to attention earlier also today, that health needs to be somewhere at the center of this entire problem. It is ultimately a health problem first and foremost. When we look at health, there's a huge gap in understanding air pollution as a health risk, because we are not looking at that data or that analysis even as health practitioners. So somewhere that socioeconomic accountability of air pollution as a risk factor to health, I think if that we start incorporating, then that could really start building in the health aspect and the understanding at how it's impacting our health across the board. These were just two suggestions, sir. Thank you. But you will give your suggestion also what exactly we will do, because public health is a very important aspect. And public health is concerned, the government is very much sincere about that. Because
केवल हेल्थ का जो विषय है ये क्यूरेटिव नहीं होना चाहिए, प्रिवेंटिव भी होना चाहिए। और इसलिए इस बार जब भारत सरकार ने लंबे समय में जो बजट को इंक्रीज़ किया है उसमें हम लोगों ने पब्लिक हेल्थ के इस एस्पेक्ट को भी ध्यान दिया है। केवल पॉल्यूशन नहीं, गंदा पानी भी पब्लिक हेल्थ के लिए ख़राब होता है। हवा, पानी, ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको पब्लिक हेल्थ की दृष्टि से जोड़ा जाना चाहिए। भारत सरकार का बजट भी जो एक लंबा बड़ा है वो इसी दृष्टि को लेकर के बना है। इसमें और सजेशन आएंगे तो अच्छा रहेगा, और कोई अप्रोच पेपर भी होगा, कोई अप्रोच एक्शन टेकन भी होगा तो वो भी एक अच्छा विषय रहेगा। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च आप हैं जी। Good afternoon, sir. I'm Bhargav Krishna. I work at the Center for Policy Research on Air Quality. Thank you for bringing up this perspective on how can we be more thoughtful about including health. So one of the things we are actually proposing right now is to work with the ministry on, as part of the redefinition of the ambient air quality standards, how do we integrate health into decision making more foundationally. I think this is a necessary aspect across all environmental policy. But to give you an example of what a policy looks like that takes health at the center, but is a broader environmental, social, economic policy, the classic example is the Ujjwala Yojana. Unfortunately, the spending on the Ujjwala Yojana has rolled back a little bit. And if we were to look at an impactful air quality intervention that can be implemented at scale, that is the best possible thing that we can do right now. Subsidies have been slowly rolled back, but if there's a possibility of interacting with the MOPNG to increase those subsidies and expand access further, this would be a core air quality intervention that would have significant impact, not just in Delhi NCR, but more broadly across rural and peri-urban areas in the country as well. I don't think there is much that we need to add beyond what other colleagues have already mentioned. To Subhashish's point, for instance, on the airshed management approach, we are working on a framework document looking at what has already been done previously with respect to, say, the Raj Trapezium and other such examples in India on how to operationalize a framework for airshed management, especially relevant in the context of Dr. Kuti and the work of the CAQM. We are happy to share our expertise on that. Beyond that, we've made a submission to the CAQM as well on all of the actions that we believe would be important to strengthen the functioning of the CAQM. The first of which is, I think, proactively implementing mechanisms of the GRAP during winter season. Now that we have forecasting tools available through the IITM Suffer and other such tools, implementing such measures proactively could ensure that we don't necessarily reach those peaks before having to cut back. Beyond that, detailed sectoral action plans have been mentioned by Anumita. I think from our perspective, the most important thing that can be done, not just for Delhi NCR, but elsewhere as well, is institutional coordination. That's where a lot of this really comes to struggle. To the point the colleague from APAG made, the number of different organizations that are responsible for implementation of actions that could impact air quality is so diverse that having a nodal agency akin to a CAQM, which has wide-ranging powers to actually get other agencies to do their work properly, and utilizing those powers effectively is really essential. Now, there is such a framework to do that in Delhi NCR, but it doesn't necessarily exist elsewhere. Urban local bodies don't necessarily have the convening authority to be able to do this, and they have been invested with a significant amount of money to be able to implement this. But really, beyond installing monitors, there isn't the creativity in solutions that is being presented in all the action plans that are being submitted. So there's ways to think about how members within these groups, for instance, nonprofits, other expert organizations, can be tasked with assisting urban local bodies in different parts of the country to develop some of these action plans, help them in convening other agencies as well. So that's pretty much all we have to say at this point. Thank you. थैंक यू वेरी मच। लेकिन फ्यूचर में हम लोगों को कुछ, आप लोग भी असिस्ट करते हैं तो कुछ सक्सेस मॉडल हम कैसे खड़े कर सकते हैं, कुछ सक्सेस मॉडल पायलट प्रोजेक्ट पे भी खड़े कर सकते हैं लोकल बॉडीज़ के साथ और कोऑर्डिनेशन करके, वो अप्रोच भी आएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाउ काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, CEW कोई आए? अच्छा, सबसे पहले तो मैं MOFCC और CAQM को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि आज हमें मौका दिया गया कि हम अपने विचार व्यक्त कर सकें इनकैप के इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे। मैं 2 सुझाव शेयर करना चाहूँगी और 2 सवाल पूछना चाहूँगी। वैसे मेरा नाम तनुश्री गांगुली है, मैं CEW का वायु प्रदूषण का जो प्रोग्राम है उसको लीड करती हूँ। सबसे पहली बात है टेक्नोलॉजी। हम लोग टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी चर्चा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर चर्चा कर रहे हैं, स्मोक टावर्स पर चर्चा कर रहे हैं,
लेकिन जो टेक्नोलॉजी प्रिवेंटिव है, जैसे कि आपके जो पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजमेंट पर भी काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग हो सकता है, जिससे कंस्ट्रक्शन के दौरान ही होने वाला जो उत्सर्जन है उसको कम किया जा सके। तो अगर एनकैप के तहत एक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्लेटफॉर्म खड़ा किया जा सके, जिससे कि एक तो इनोवेटिव सॉल्यूशंस, जैसे कि हम बात करें कि यूएलबीज़ के पास क्रिएटिव सॉल्यूशंस नहीं है, तो अगर एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म खड़ा किया जा सके जिससे कि इनोवेटिव सॉल्यूशंस को आगे आने का मौका मिले। ये पहला पॉइंट था टेक्नोलॉजी के ऊपर। दूसरा पॉइंट जो है वो है इम्पैक्ट असेसमेंट का। जैसे कि हम सुबह से सुनते हुए आ रहे हैं, काफ़ी शहरों ने कुछ यूनिक अप्रोचेस ट्राई किए हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट असेसमेंट और पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन आना कि इस इंटरवेंशन से इतना प्रतिशत घटाव आया है प्रदूषण में, ये तथ्य पब्लिक डोमेन में आने से शहरों में क्रॉस लर्निंग ज़्यादा बढ़ सकती है। तो एक इम्पैक्ट असेसमेंट प्लेटफॉर्म प्राणा के साथ ही बेशक वो इंटीग्रेट हो, मैकेनिकल स्वीपर से किस रूट्स पे कितना रिडक्शन हो रहा है, सेल्फ ऑडिट ऐप जिन कंस्ट्रक्शन साइट्स ने लिए हैं उससे कंस्ट्रक्शन साइट्स में कितना रिडक्शन हो रहा है। तो एक इम्पैक्ट असेसमेंट इंटीग्रेट करना प्राणा के साथ, ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। 2 सवाल हैं मेरे इसके बाद। पहला सवाल है फाइनेंसिंग पर। अब तक तो शहरों ने जो काम किए हैं उसके बेसिस पर उन्हें पैसा दिया जा रहा था, लेकिन आने वाले सालों में केवल एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के बेसिस पर ही पैसा मिलेगा शहरों को। लेकिन दिक्कत यह है कि सभी शहरों की प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं। कुछ शहरों की प्रॉब्लम्स टैकलेबल हैं, कुछ शहरों की नहीं हैं। तो उसमें केवल एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट को नज़र रख के अगले इंस्टॉलमेंट को देना कितना उचित रहेगा, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान को लेकर। जैसे कि इस बार भी हमने देखा CAQM ने काफ़ी प्रोएक्टिव मेजर्स लिए हैं, लेकिन सेक्टर्स जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इनको बहुत प्रॉब्लम्स भी हुई हैं। क्रेडाई, एसोकैम, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स फोरम, इन सभी ने शायद कोर्ट को भी अप्रोच किया है। तो क्या ये सस्टेनेबल मॉडल है, ये जो बैन्स हो जाते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पर? आपने शुरुआत भी आज की थी कि हम बंद नहीं करना चाहते, हम रेगुलेट करना चाहते हैं। तो अगर इस पर आप थोड़े विचार व्यक्त कर सकें कि रेगुलेशन और टेक्नोलॉजी को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सके, ताकि ये जो वर्ग है, केवल कंस्ट्रक्शन डेवलपर्स नहीं लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पर जो काम करते हैं उन्हें भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है, तो उनकी किस तरह से मदद की जा सकती है। बस यही 4 पॉइंट्स मुझे देने थे। थैंक यू। ऐसा है कि एयर क्वालिटी कमीशन को हम लोगों ने एक्ट का जो डिज़ाइन किया है उसी में हमने टेक्निकल मेंबर से लेके एक पूरा सिस्टम दिया और एक साइंटिफिक अप्रोच की पावर भी एयर क्वालिटी कमीशन को दी है। ऑलरेडी ये सारे पोल्यूशन मेजर्स को देखने के लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड थे, लेकिन चूँकि आप सब लोग मान रहे हैं कि एयर शेड अपने आप में इंटर स्टेट विषय है, तो इसके लिए एक मैकेनिज़्म चाहिए और एक अप्रोच चाहिए थी। कमीशन को आने के बाद अब अपने आप को एस्टेब्लिश करने में और आगे इसके लिए साइंटिफिक सुझाव देने में एक समय और सिस्टम लगेगा, लेकिन मेरे को लगता है कि कुट्टी साहब इस विषय को जो एक्ट में पावर है इसको यूज़ करके इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसमें जो दूसरा विषय है कि जिनका एयर क्वालिटी बेटर होगा उनको फाइनेंसिंग ज़्यादा होगी, जो एनकैप के जो प्रोग्राम में है। इसमें दोनों ही बातें हैं। एक विषय ये भी चल रहा है कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि वहाँ एयर पोल्यूशन सुधर ही नहीं रहा है। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उदाहरण के लिए, कहीं कोट मत करने लायक है, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, इसलिए इसको रिकॉर्ड भी ना करे, कोट भी ना करे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जैसे सिंगरौली है, अब चाह करके भी वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे आपको फ्यूचरिस्टिक क्या करना होगा? आपको फ्यूचर कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि भाई ये NCR से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, लेकिन जहाँ पर एक बहुत बैड एयर क्वालिटी है और आप कितना चीज़ों को, उद्योगों को कितना आप कर सकते हो, तो इस पे कुछ विचार करने के विषय को हम लोग भी सोचते हैं। इसलिए जो मैं एक विषय कहा था कि एक परमानेंट एनवायरमेंटल ऑडिट भी चलता रहना चाहिए। आप जिस परमिशन के साथ आप दे रहे हो तो आपको एक सेल्फ असेसमेंट देना भी चाहिए कि भाई हमें क्योंकि कोई भी आप परमिशन देते हो तो एक कुछ नॉर्म्स को पालन करने के देते हैं। हिंदुस्तान में एक ऐसा भी है कि एक बार परमिशन हो गई तब हमारा राइट है, कोई रोकने वाला ही नहीं है। उसके कारण फिर उसका जब क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा तो फिर इमरजेंसी प्रोविज़न करने पड़ते हैं। इसलिए सुबह मैंने बिल्कुल कहा था, रेगुलेट कैसे करना, सेल्फ रेगुलेट कैसे करना, ग्रीन रेगुलेट कैसे करना, ग्रीन बॉन्ड को कैसे खड़ा करना,
ये ऐसे विषय हैं क्योंकि डेवलपमेंट तो होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो होगा, चीज़ें तो चलेगी, और आखिर देश में तरक्की करनी है तो लोगों की जो एनर्जी नेसेसिटी है उसको तो मीट आउट करना ही पड़ेगा। जब हम 500 गीगावाट उत्पादन करने की बात करते हैं तो 500 गीगावाट उत्पादन करने का अर्थ है कि हम सब लोगों को एनर्जी का एक्सेस देना चाहते हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसका एक तरीका ऐसे भी है, एक देश के रूप में हमारा संकल्प कैसा है, जो मैंने पिछले दिनों CSC की मीटिंग में भी बोला था। जैसे भारत ने कॉप में ये कहा कि हम फ्यूचरिस्टिक उस दिशा में जाएंगे कि 1 गीगाटन कार्बन एमिशन जो हो सकता है वो नहीं करेंगे। ये किसी भी देश के द्वारा किया गया एक ऐसा संकल्प था जो फ्यूचरिस्टिक है कि हम उन टेक्नोलॉजीज़ को लाएंगे कि हम 1 गीगाटन कम कर, जो हो सकता था उसको उतना नहीं करेंगे। एक दुनिया भर में भी के साथ जब हमारा कंपैरिजन होता है, अभी कोई कैलिफोर्निया मॉडल भी कहता था, तो हमारा अपना जो ट्रैकिंग का मॉडल है वो हमारे देश के अपनी ज़रूरतों के हिसाब से होना चाहिए। हर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के हिसाब से वैसा नहीं है। तो ये जो रेगुलेट करने वाली बात है ये सेल्फ भी होनी चाहिए, सेल्फ प्रोक्लेमेशन भी आना चाहिए, इसमें भी आपके सजेशन आना चाहिए। इतना ओपन हाउस में हम बात कर रहे हैं कि हमारा अपना सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि फिर इमरजेंसी की ज़रूरत ना आए। हम अपना BP हमेशा बढ़ाए रखेंगे, फिर कहेंगे मेरे और कोई बीमारी नहीं होगी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इम्पैक्ट तो होएगा ही होएगा। तो एक सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम की तरफ हम बढ़ें। एयर क्वालिटी कमीशन को भी हमने एक्ट में भी पावर दी है, और ये एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को हमें सोसाइटी के अंतर्गत लगातार डेवलप करना पड़ेगा इन सारे विषयों को अवेकनिंग के लिए। आज आप लोगों से बातचीत हुई है, आगे और भी रहेगा, तो इससे कुछ कम से कम जिन लोगों ने आप लोगों ने काम किया, आज एक स्टेज पे आके हम बातचीत करने को तो तैयार हो रहे हैं कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। मैं लगातार जितनी भी साइंस मैगजीन्स हैं उसमें सब में लगातार नए नए सजेशन आते हैं, तो ये सारे सजेशन पॉलिसी मेकर्स के लिए भी अच्छे रहते हैं। आज देश का बजट भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अगर हमने ये कहा है कि इस बार का बजट माने ग्रीन बजट, क्लाइमेट एक्शन ओरिएंटेड बजट अगर है, तो ये पब्लिक पॉलिसी का भी इशू बनने लगा है, जिसको सरकार भी आगे बढ़ा रही है। यही चीज़ें फ्यूचर में हमारी आगे बढ़ने के लिए सहायक सिद्ध होंगी। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, मिस्टर आए? यस अजय ना। नमस्कार सभी को। मेरा नाम भव्य शर्मा है एंड मैं प्रोग्राम मैनेजर एयर क्वालिटी टीम से हूँ, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया से। सर मेरे 2-3 सुझाव रहेंगे एंड हम ऑलरेडी आई एम ग्लैड कि हमने 15 फाइनेंस कमीशन में जो अपने रिकमेंडेशंस दिए थे तो वो काफ़ी एक्सेप्ट करे गए, और आज हम इस मुकाम पे हैं कि हम वायु प्रदूषण को कैसे कंट्रोल करें उस लेवल पे आ गए हैं। एंड ऑन ग्राउंड अब हम कितनी कंट्रोल मैकेनिज़म्स ला सकते हैं उसकी विचार भी हम कर रहे हैं। सेकंड सर, आपका जो आइडिया है एंड हमारी भी ये सोच है कि आगे जो फ्यूचर की बातें हैं उसके लिए कैसे हमें काम करना चाहिए। तो एक सुझाव ये है कि हमारे यहाँ पे जो जितनी दिक्कतें होती हैं विंटर्स में, जैसे हम लोग आग जलाते हैं या फिर जगह पर वेस्ट बर्निंग होती है, तो क्यों ना उसके लिए एक हम इनोवेशंस चैलेंज करें, स्टार्टअप्स को बुलाएं और लोगों को बुलाएं जिससे इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। क्योंकि हमने ये भी आइडेंटिफाई करा है कि काफ़ी चीज़ों से जो है हमारा वेस्ट बर्निंग पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, और लोगों की आदतें होती हैं, वेस्ट रिडक्शन है, वेस्ट हीटिंग के लिए करते हैं सर्दियों में। दूसरा हमने आइडेंटिफाई करा, जो हम 2-3 सिटीज़ में काम कर रहे हैं गवर्नमेंट्स के साथ और सिटीज़ के साथ, तो वहाँ पे हमें आइडेंटिफाई हुआ कि जो लोकल लेवल पे स्टेक होल्डर्स हैं, जिन सेक्टर्स के साथ हम काम करते हैं, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन गैप होता है। उनको उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल मैकेनिज़म्स या कंट्रोल मेजर्स कैसे लिए जाएं। तो उनकी जो कैपेसिटी बिल्ड, ना ही सिर्फ कैपेसिटी बिल्ड करना बल्कि एक टेक्निकल असिस्टेंस भी उनको देना, तो वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा भी होती है, बट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में टेक्निकल कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो उसको उस सिस्टम को डेवलप करना, आई गेस वी शुड वर्क ऑन दैट। थर्ड, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात हुई या फिर इंडस्ट्रीज़ की बात हुई,
तो आई बिलीव देयर शुड बी सम मैकेनिज्म्स जिनमें अगर जहाँ पे कंट्रोल होते हैं तो उनको अप्रिशिएट करा जाए, वो पायलट डेवलप करे जाए और उनको दूसरी सिटीज़ में भी शोकेस करा जाए। सो ये हम 2-3 विचार। धन्यवाद। नहीं, अच्छे सुझाव हैं। एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, कोई आए हैं? एपिक इंडिया बोल चुके? चलिए फिर द सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, एक ही है? हाँ जी। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर प्रतिमा सिंह, मैं रिसर्च साइंटिस्ट की तरह काम करती हूँ सी स्टेप में। मेरे पहले सभी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और कहीं ना कहीं हमें ये पता है कि हर सेक्टर के लिए क्या मेजर्स रिक्वायर्ड हैं, बट मैं मेजर्स पे बात ना करके मैं कुछ ग्राउंड लेवल सिचुएशन की बात करना चाहूँगी। सी स्टेप इज़ ऑल्सो एन IOR फॉर द स्टेट ऑफ कर्नाटका। सर, जब हम अर्बन लोकल बॉडी के साथ काम करते हैं या लाइन डिपार्टमेंट से काम करते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जितने भी स्टेट लेवल के ऑफिसेज हैं उन सब में बहुत मोमेंटम है बिकॉज ऑफ द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, एंड दैट इज़ गुड दैट इन लास्ट 2 years वी हैव सीन सो मच मूवमेंट ऑन ग्राउंड अक्रॉस इंडिया। बट सर, हमने जब ये अर्बन लोकल बॉडीज़ को आइडेंटिफाई किया है और एक ट्राईपार्टीड एग्रीमेंट साइन किया है, एक IOR, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अर्बन लोकल बॉडी मिल के साथ में काम करेंगे। सर, हम कन्वर्जेंस की बात करते हैं, कन्वर्जेंस कहाँ होना चाहिए? हम जितने भी मेजर्स यहाँ आइडेंटिफाई करते हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए ग्राउंड पे तो हमारा 2024 का टारगेट हम अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर अर्बन लोकल बॉडी लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके काम नहीं कर पा रहा है या उन्हें समझा ही नहीं पा रहा है कि आपके क्या एक्शंस इम्प्लीमेंट होने चाहिए, तो हमें उस फ्रेमवर्क पे सोचना चाहिए, क्योंकि हम अभी वहाँ उस लेवल पे सोच नहीं रहे हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि एक्शन प्लान बनने हैं, माइक्रो एक्शन प्लान बनने हैं। लेकिन सर, एक और कमी है इसमें, हम माइक्रो एक्शन प्लान बनवाते तो ज़रूर है, लेकिन हम टाइमलाइन देते हैं कि 1 महीने में माइक्रो एक्शन प्लान बन जाना चाहिए। अगर हमारे माइक्रो एक्शन प्लान में ही फॉल्ट है तो हम आगे कितना बढ़ेंगे? अगर हम प्लान बनवाना चाहते हैं तो उसके पहले हमें कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी अर्बन लोकल बॉडी और लाइन डिपार्टमेंट्स की, कि वो समझ सकें ये कंट्रोल मेजर क्या है, वो कितना रिडक्शन देगा पोल्यूशन में और हमें उसके लिए कितना पैसा चाहिए। जब तक वो समझ ही नहीं है उनमें, हमारे प्लान्स वर्क नहीं करेंगे सर। और यही हो रहा है, एंड आई एम रियली अफ्रेड बिकॉज आई एम वर्किंग अक्रॉस इंडिया इन सो मेनी स्टेट्स, and I've realized that all the plans that have been prepared, they are just copy pasted, कुछ changes करके। I will be blunt because ये conversation आपके साथ हो रही है, इसलिए मैं खुल के बोलना चाहूँगी। and क्योंकि ये plans अच्छे से नहीं बन रहे हैं, मुझे नहीं पता हम कितने आगे बढ़ पाएंगे। and उसके बाद जब implementation की बात आती है, अर्बन लोकल बॉडी को पैसा दिया गया है, अर्बन लोकल बॉडी के पास ये समझ नहीं है अभी भी कि ये पैसा को हम लाइन डिपार्टमेंट्स तक कैसे दें या कितना देना चाहिए। ट्रांसपोर्ट को कितना देंगे, आप रेलवेज मेट्रो के लिए कितना देंगे, तो वो क्राइटेरिया क्या है, उसका कोई मापदंड या फ्रेमवर्क हमारे पास अभी नहीं है। सेकंड, मैं ये बोलना चाहूँगी सर, हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं, पर क्या हमने जाके देखा है कि झारखंड के शहरों में जहाँ कोयला के खदान हैं, वहाँ पे एक घर में एक टाइम पे खाना बनता है बस, क्योंकि उनके पास आमदनी नहीं है। जब उनके पास आमदनी नहीं है, वो एक टाइम का खाना खाते हैं, तो वो बिजली का इस्तेमाल कैसे करेंगे खाना बनाने में? When their economical status is not that much, how do we expect that कि वो लकड़ी नहीं जलाएंगे या काउडंग नहीं जलाएंगे? So हमें उस दिशा में भी सोचना पड़ेगा कि इकोनॉमिकल स्टेटस कैसे ऊपर लाया जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट कैसी दी जाए कि वो डर्टी फ्यूल यूज़ करना बंद करें। हमने देखा है सर, वहाँ पे लोग
वहाँ पे बोड़ा कोयला बोला जाता है, जो खदान से लोग लेके आते हैं साइकिल पे, उसे अपने घरों में जलाते हैं 3 घंटे तक, और उसके बाद उसे ईटरीज एंड दूसरी जगह पे दिया जाता है सो दैट दे कैन यूज़ इट. एंड सर, वो जब वो 3 घंटे तक कोयला उनके घर पे जलता है, the kind of exposure they are getting through that coal is really bad. We cannot even imagine what situation they are in. So yes, we can talk about energy transition, but we will have to look at the ground realities as well, what is happening in tier 2 and tier 3 cities. So yes, talking about technologies is good, but let's also look at the ground realities. That's it. Thank you so much, sir. एक विषय का तो चैलेंज रहता ही है कि हम लोगों का जो पॉलिसी है और कैपेसिटी बिल्डिंग होते हुए जो ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन है, ये एक बड़ी चुनौती है. लेकिन जो झारखंड का विषय आपने कहा है, मैं पूरा रामगढ़, पतरातू, चतरा से लेकर सभी जिलों की, वो दूसरी एक समस्या भी है. जो आप समझ रहे हो वैसी समस्या नहीं है. और वो साइकिल वाली जो रांची से पतरातू हाईवे का, वो एक अलग विषय है. उसको इससे कनेक्ट करना एक प्रैक्टिकल नहीं है. उसका वो भी एक प्रॉब्लम है. उसको भी मैं उस पूरे एरिया का जोग्राफिकली, सोशली पूरी तरह एक्वेंटेड हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. लेकिन ये तो डायलॉग है ही इसलिए कि आखिर हमारा जो पॉलिसी मेकिंग है और जो ग्राउंड लेवल का इम्प्लीमेंटेशन है, हमारी जो पॉलिसी है और जिनके लिए है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है. हमारी जो पॉलिसी है, जिनको करना है उनके लिए एग्जीक्यूशन के चैलेंजेस हैं. इसीलिए डायलॉग है. तो इसमें कोई ब्लंट होना नहीं है, प्रैक्टिकल बातें हैं और हमको इसको स्वीकार करके और इसके समाधान के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा. इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं. लेकिन डायलॉग में विषय आपने कहा है वो ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है. क्लीन एयर फंड हो गया ना. अच्छा, उसके बाद चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन नहीं है. Good evening, sir. I represent an organization called Children's Investment Fund Foundation. We are a philanthropic organization based out of the UK. यहाँ पे हमारे बहुत सारे partners हैं, Clean Air Fund, CSE, C-Step, Climate Trends. So they're all experts in their fields. I wouldn't repeat their points, only to say that जो भी suggestions आज यहाँ आए हैं वो implement हों तो obviously as Pratima was saying, biggest gap is capacity. And one of the things that we are supporting is दिल्ली में हमने एक PMU एस्टैब्लिश किया अलॉन्ग विद एपिक एंड GDI. तो उस तरह से अगर हम कैपेसिटी गैप्स फिल कर सकते हैं तो वी आर देयर टू सपोर्ट ऑल सच एफर्ट्स. एंड बाकी स्टेट्स में भी थ्रू पार्टनर्स लाइक CSE, C-Step हम वो कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. बट कहीं ना कहीं हमें वो एफर्ट काफ़ी ज़्यादा स्केल अप करना पड़ेगा और वी आर देयर टू सपोर्ट द गवर्नमेंट एंड ऑल द पार्टनर्स हियर. सो जस्ट वांटेड टू स्टेट दैट पॉइंट एंड रिकमेंड क्विक इम्प्लीमेंटेशन. देन सीट्स, कोई है सीट से? हरियाली सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट, शक्ति फाउंडेशन हो गया. इंडियन पॉल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन, नमस्कार सर. मैं डॉक्टर राधा गोयल, डिप्टी डायरेक्टर इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ. सर मैं एक और सोसाइटी से जुड़ी हुई हूँ, सोसाइटी फॉर इंडोर एनवायरनमेंट. तो अब यहाँ पे जो मुद्दा प्रतिमा जी ने छेड़ा, मैं उसको थोड़ा सा और, बिकॉज एज पब्लिक हेल्थ की भी जब यहाँ पे बात हुई थी तो हमारा डेटा यही कहता है कि जो एयर पोल्यूशन की वजह से मैक्सिमम डेथ्स हैं वो बिकॉज ऑफ हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन से हैं, एक्सपोजर से. बिकॉज 90% हमारा टाइम और अनक्लीन फ्यूल्स का, दो देयर आर द in place like Pradhan Mantri Ujjwala Yojana and the Avasiya scheme, but still sir there is a gaps in the designs of the households there कि what kind of ventilation has to be there. एक formative जो guidelines होनी चाहिए उस design में वो still, because NCAP में I would like to thank कि indoor air pollution को भी one of the parameter रखा गया है, but still I am afraid कि उसकी approach अभी जो guidelines बननी है उस पर अभी कितना state levels पे काम हो रहा है या city level पे. तो वो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि उसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दिया जाए. और सर दूसरी चीज़ ये है कि मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि ऑलरेडी मेरे कोलीग्स ने बोला है कि एयर शेड मैनेजमेंट की बात है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द इंटर स्टेट डायलॉग्स थ्रू द स्टेट प्लान्स.
So because but still there are, because sir air pollution doesn't follow the boundary and cities के साथ साथ कुछ rural areas भी जुड़े होते हैं और semi urban है. So if the approach of ministry would be more towards the state level action plan instead of city action plan, so that would be more in the future, because I think already Bihar and UP has started this initiative of state level action plans, so other states can also. Thank you so much, sir. Thank you. DLF Foundation. United Way to Delhi. नहीं है. ICEL. जी. गुड इवनिंग सर, मेरा नाम अवंतिका अर्जुना है, मैं इक्ले साउथ एशिया को रिप्रेजेंट करती हूँ। इक्ले साउथ एशिया बेसिकली हम लोग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को असिस्ट करते हैं जो भी उनके फंक्शंस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास होते हैं। सर एयर क्वालिटी रिलेटेड हमारा एक प्रोजेक्ट कुछ महीने पहले हमने दिल्ली एनसीआर सिटीज़ में स्टार्ट किया है, जिसमें हम ईडीएमसी को, एसडीएमसी को, मेरठ नगर निगम और जीएमडीए गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी में हम काम कर रहे हैं। इसमें बेसिकली हम लोग हेल्प, जैसे हम अभी सब लोग, जैसे हम सिटी से भी सुन रहे थे सुबह से कि मैन पावर का एक मेजर इशू रहता है, तो इस प्रोजेक्ट के अंडर में हम एक प्रोजेक्ट एसोसिएट सिटी में हम एसोसिएट हमने हायर करके हम उसमें जो भी एयर क्वालिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट है उसमें हम सिटी को हेल्प कर रहे हैं। चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड उनको कोई आरएफपी में असिस्टेंस चाहिए या स्ट्रीट वेंडिंग प्लान में कुछ असिस्टेंस चाहिए, तो इस टाइप के प्रोग्राम में सर हम हेल्प कर रहे हैं। इसके बिसाइड्स जैसे विंटर एक्शन प्लान है, उसमें भी हम लोग उसको कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं उसको रिव्यू करके एसडीएमसी और ईडीएमसी में हम लोग हेल्प करने के ट्राई कर रहे हैं। बिसाइड्स दैट कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज हमारा इस प्रोजेक्ट का एक मेजर इनिशिएटिव है। तो मैं चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म के जैसे जो आज हमारा बहुत ही बेनिफिशियल सुबह से हम प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, हम ट्राई करेंगे सारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो दिल्ली एनसीआर में हैं उनको रीच करने का, ताकि जो हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स हम लोग करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंडर में वो लोग भी इसका हिस्सा बन सकें और दूसरी सिटी से सीख सकें कि एयर पोल्यूशन को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। थैंक यू सर। CEDAR. Good evening. I'm Chetan Agarwal from CEDAR, Center for Ecology Development and Research. We do pilot studies and actions on the ground, pilot projects and action research. So I'd like to make 2 or 3 points. One, we are partnering with the GMDA to do a co-location study on low-cost sensors and the efficacy of low-cost sensors for monitoring air quality in the range of 50,000 to a lakh, as opposed to the high-cost reference grade monitors. So as soon as the study is complete in a few weeks, we would like to share it with the committee. And I believe there's some need for some kind of standards in this sector as well. And there's talk of making them. But if we have reasonably reliable low-cost sensors, they can help us monitor at a much larger scale at a much lower cost. Secondly, this is a point regarding land use, and this is particularly pertinent because your MOEF is looking at both the air quality and the pollution side of things, as well as on the land use and especially the forests as a land use. So land use is one of the sectors which is perhaps the only sector which does not generate pollution. It is a sink for pollution. And we need both incentives and regulation to conserve and increase forests as a land use in the NCR. And especially there's research which says that forests act as natural scrubbers. When we say they are green lungs, we understand very well that they absorb carbon dioxide and throw out oxygen as green lungs, but they also basically deposit particulate matter. So up to 10-15% of particulate matter can be reduced by increasing our forest cover. So given that we know that, and within vegetation also, forests and trees are 3 times more effective than grasses because of the canopy structure and all. So I would request that forests as a land use in the NCR is a subject matter which is covered both by MOEF as well as especially the NCR Planning Board. So it would be critical that both from the side of MOEF and the Commission, we review the regional plan for the NCR 2041. The draft plan is out for comment. Many people have sent comments.
including from our side, and especially the role of Aravali's and the forest cover in the NCR has been protected in the Regional Plan 2021. Aravali's is a no-go zone for real estate in the current plan, and there's a target for forest cover of 10%. These are the two key aspects in the Regional Plan 21 which are not currently present in the 2041 draft. Aravali's has been dropped, forest areas was covered, it has been dropped. So we're not sure what's happening in the NCRPB. It seems to have been, captured by the real estate interests perhaps. In the past, MOEF has given very clear and cogent comments on the plan, and I think it's really important that the same happens this time around as well. And we'll be happy to help the Commission and the MOEF. Thank you. M3M Foundation. M3M Foundation नहीं अच्छा IM गुड़गांव IM गुड़गांव नहीं है नहीं है हैप्पी अर्थ फाउंडेशन नहीं है ये ब्रिकलेन एसोसिएशन वाले कुछ कहेंगे यस एक मिनट वो पहले पीछे बोल रहे गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा माननीय मंत्री जी का कि आपने एक इस तरह का इंटरैक्टिव सेशन कमीशन फॉर क्लीन एयर द्वारा रखा गया है। मैं भट्टा उद्योग की तरफ से एनसीआर में लगभग 4700 के लगभग भट्टे होते थे 2016 से पहले, और भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी कन्वर्जन किया, हाइड्राफ्ट ब्रिकलिन्स की एक टेक्नोलॉजी हमें दी और लगभग हमारे 2700 के लगभग भट्टे उस पर कन्वर्ट हो चुके हैं, और जो साथी कन्वर्ट नहीं कर पाए उन्होंने भट्टे बंद कर दिए। अभी हमारे उद्योग पे कुछ शरारती तत्व समय समय पर अदालतों में जाके कुछ शिकायत करते हैं, लेकिन आपके मंत्रालय से अभी एक नोटिफिकेशन आया है और जो हमारे पहले एसपीएम लेवल्स का 750 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब का स्टैंडर्ड था, उसको अभी नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग 250 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब किया है, विच इज़ 70% रिडक्शन इन एमिशंस, स्टैक एमिशंस। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हम भी चाहते हैं कि प्रदूषण ना रहे, वायु की गुणवत्ता अच्छी रहे, और भट्टा उद्योग से जो भी संभव सहयोग होगा वो हम कमीशन के साथ रखेंगे। एक रिक्वेस्ट भारत सरकार से और कमीशन से भी है कि हमारे उद्योग में एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हम रूरल एम्प्लॉयमेंट देते हैं और समाज का जो सबसे गरीब तबका है उसको एम्प्लॉयमेंट देते हैं, लेकिन किसी तरह की सब्सिडी के नाम पे, किसी तरह की टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के नाम पे हमारे भट्टा उद्योग को किसी तरह का कोई असिस्टेंस ना स्टेट गवर्नमेंट से ना सेंट्रल गवर्नमेंट से। सर, हमारी एमएसएमई बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के तौर पे है, गांव देहात में है, और आपसे निवेदन है कि भाई इसमें थोड़ा सा एक इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से कुछ ऐसा किया जाए कि जिस अभी उद्योग एक मॉडिफिकेशन की तरफ जो शुरुआत है, इसमें आगे अभी और बहुत दूर तक जाने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि 250 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब का जो आपने स्टैंडर्ड फिक्स किया है, इसमें अभी हम इसी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी में ही अगर हम वाटर स्क्रबर लगा दें तो हम जो सीएनजी पीएनजी का जो एक विनर बर्गर एक बहुत एमएनसी लग रहा है बेंगलोर में, उसका सीपीसीबी ने अभी पीछे मॉनिटरिंग की थी और वो मॉनिटरिंग में उनका 125 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब आया है। और मैं ये एश्योर करता हूँ मंत्रालय को, सीपीसीबी के अधिकारियों को, कि आप हमें समय दें, थोड़ा सा हमें असिस्टेंस दें, हम 125 से 150 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब इसी टेक्नोलॉजी पे हम ये रिजल्ट्स देने में सक्षम हैं। दूसरा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई जो ये रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास है, क्योंकि हम देहात में खेतों के बीच में भट्टे चलाते हैं और फार्मर्स का जो बायो वेस्ट है, एग्रीकल्चर रेजिड्यू है, वो बिल्कुल हमारे नियर बाई सराउंडिंग्स में, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है,
फार्मर को अगर आप हमें इस एग्रीकल्चर रेजिड्यू को एज ए ग्रीन फ्यूल अलाउ करें विथ सर्टेन मॉडिफिकेशंस, तो हम फार्मर को एक बहुत अच्छा बैकअप दे सकते हैं। और एक हमारे लिए भी जो कोल को एज ए फ्यूल, सभी सरकारें ग्लोबली ये चाह रही हैं कि भाई कार्बन एमिशंस कम हों, तो उसमें एक बहुत अच्छा काम भट्टा उद्योग बहुत इसमें सहयोग कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम आदरणीय मंत्री जी। मैं अमित भटनागर शुद्ध वायु मिशन से बात कर रहा हूँ। क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है जो कि स्मोक टावर से भी 100 टाइम्स कॉस्ट इफेक्टिव हो, जिसमें जो आपने एक विजन शेयर किया जिसके लिए आई ऑलवेज फील वेरी प्राइड कि इसमें जन भागीदारी हो, तो क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है जो इतना इफेक्टिव हो कि एक दिन में दिल्ली की हवा को सब्सटेंशियली रिड्यूस कर बेटर कर पाए एयर क्वालिटी को। तो हमने एक ऐसा इनोवेशन बनाया है कि जो भी एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच मूव्स कैन कन्वर्ट इनटू एयर प्यूरीफायर। और हमने वो एक ऐसी इनोवेशन बना दी है जिसके अंदर जो भी व्हीकल ओनर हैं दे कैन कन्वर्ट देयर व्हीकल इनटू एयर प्यूरीफायर, और वो एक डिटैचेबल सिस्टम है जो उनकी गाड़ी को परमानेंट इंस्टॉल नहीं करना है। जब पॉल्यूशन होगा केवल तभी दिखेगा, जब पॉल्यूशन नहीं है तो उतार के रख लेंगे। तो इट विल मेक द होल सिटी अडेप्टेबल सिटी, अ स्मार्ट सिटी विच इज़ रेडी टू फाइट द पॉल्यूशन व्हेन इट इज़ देयर। एंड सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर सर ये होने वाली है कि एक कंप्लीटली इंडिजिनस इनोवेशन है, इसे इंडियन इनोवेशन जिसको पेटेंट ग्रांट हो चुका है। IIT दिल्ली एंड DST हैज़ ऑलरेडी वैलिडेटेड दिस टेक्नोलॉजी, CFD सिमुलेशन हैज़ बीन डन। उसके बाद अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग हैज़ रिकॉग्नाइज्ड इट एंड वी हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर अर्थ शॉट ऑल्सो, जो तकाचार जिनको अर्थ शॉट का प्राइज़ मिला हमको भी उसके लिए नॉमिनेट किया गया है। तो सर आई वांट कि इसमें आपका मार्गदर्शन मिल पाए जिससे कि जो देश की जनता है वो अब केवल सफ़र ना हो कि, और बच्चों को जो आपने भी एक शेयर किया था कि बच्चों को हम बेटर एयर क्वालिटी देने का एक प्रण होना चाहिए, तो उसमें हर व्यक्ति भागीदार बन सकता है। और वो भागीदार बनने के साथ साथ कहीं ना कहीं एक कॉन्शियसनेस भी उनके अंदर हम लेके आ पाएंगे इसके द्वारा। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम दृष्टद्युम्न है। मैं एक वॉलंटियर ग्रुप देयर इज़ नो अर्थ बी से हूँ। पिछले 4 सालों में हमने पैन इंडिया 289 क्लीन अप इवेंट्स किए हैं जिसमें हमने 16 टन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रिमूव किया है। आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए। आपका नाम तो आ गया कृष्णदेव। देयर इज़ नो अर्थ बी। देयर इज़ नो अर्थ बी, नहीं है कोई दूसरी धरती। तो सर पिछले साल सितंबर में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक टेंडर नोटिफिकेशन इशू किया था जिसमें संजय वन जो कि दिल्ली का ग्रीन लंग्स है उसमें इको टूरिज्म एक्टिविटीज़ इनवाइट कर रहे थे। तब से अब तक में वहाँ पे एक्सकवेशन वर्क शुरू हो चुका है। वहाँ पे जो ढाबा हैं जो इंक्रोच कर रहे हैं फॉरेस्ट के ऊपर, वो फूड डिलीवरी करने लग गए हैं फॉरेस्ट के अंदर। और 1100 लोगों ने संजय वन में जो आते हैं, जहाँ से हमने 5 टन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रिमूव किया है पिछले 3 सालों में, उन्होंने अर्जी दी है लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को, चीफ मिनिस्टर जी को कि ये टेंडर नोटिफिकेशन विड्रॉ किया जाए और जो दिल्ली का ग्रीन लंग है जो कि 100 टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिव है किसी भी स्मोक टावर से, उसको फॉरेस्ट ही रहने दिया जाए। दूसरा मुद्दा ये है हमारा कि रिज फॉरेस्ट जो कि जिसकी एंट्री करोल बाग के मेट्रो स्टेशन से 60 मीटर दूर एक वॉल है जिसमें ब्रेक है, जिसके थ्रू पूरा का पूरा फॉरेस्ट प्रदूषित होता रहता है। और इसमें वहाँ के VIP लोगों की भी भागीदारी है, इसमें वहाँ की म्यूनसिपैलिटी की भी भागीदारी है। वहाँ पे जो वेस्ट है उसको बर्न करते हैं ये छुपाने के लिए कि वहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जो अंडर प्रिविलेज लोग वहाँ पे काम करने आते हैं। इस VIP एरिया में जो अंडर प्रिविलेज लोग काम करने आते हैं उनको वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से कन्वीनियंटली जो रिज की वॉल है वो ब्रोकन है और वो पूरा एक डंपिंग ग्राउंड बन चुका है। यहाँ से हमने पिछले हफ्ते 874 kgs नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रिमूव करके नॉर्थ म्यूनसिपैलिटी को हैंड ओवर किया है। और हम यहाँ पे पिछले 2 साल पहले हमने CPCB को कंप्लेन किया था कि ये वॉल सील की जाए, यहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हों ताकि जो अंडर प्रिविलेज लोग यहाँ काम करने आते हैं उनको छुपाने के लिए यहाँ पे वॉल पे अच्छी सुंदर पेंटिंग ना की जाए, दीवार सील की जाए और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हों। और तीसरा हमारा ये मुद्दा है कि सर यूथ पार्टिसिपेशन के बारे में आपका क्या विचार है? एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ जो बन रही हैं वो यूथ के लिए बन रही हैं,
क्योंकि हम ही इस देश का भविष्य हैं, तो उनकी भागीदारी होनी भी आवश्यक है। तो सर, इनके बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, बिल्कुल यूथ की भागीदारी के लिए एक आगे भी हम प्रोग्राम चलाने वाले हैं। हमारे इको क्लब है, हम उसको वापस से मिनिस्ट्री का जो एक ग्रीन कोर और इको क्लब है उसको हम सोच रहे हैं, नगर वन योजना में भी हम सोच रहे हैं। पीछे आप पहले हाथ खड़ा किया, हाँ जी आप ही, हाँ हाँ खड़ा किया आप, फिर उसके बाद आप, इसके बाद आप ले लीजिएगा। Thank you. Namaskar, sir. My name is Dr. Purnima Prabhakaran. I'm from the Center for Environmental Health at the Public Health Foundation of India. Apologies for not having had the opportunity to speak before. But first of all, thank you for giving us the opportunity to interact with you. हम सुबह से सुनते आ रहे हैं, we've heard the overview of the NCAP and we've heard about the city level and state action plans. I just wanted to make a couple of points. One is to take a leaf of some successful work that has happened. And I want to cite the example of heat action plans that have been in place in India. And the reason why those heat action plans have been successful is that it is a classic example of intersectoral coordination. हम सुबह से ये भी बात सुनते आ रहे हैं, intersectoral coordination. But the one missing piece that has been shown in NCAP or the state action plans or the city action plans is the conversation around health. I think the health lens has not been included in any of the plans, and if this is true that the cut and paste job is happening, it means that it's only getting perpetuated. Heat action plans में इसलिए success हुआ है because this has classically shown that year after year the morbidity and mortality from heat waves has decreased only because the action kicks in before the heat waves. It kicks in with the health department. Subha, I had raised this point as well because the NCAP program shows integration with 7 ministries. The one missing is the health ministry. And I work very closely with the health ministry's National Program for Climate Change and Human Health, where there is a lot of work that is happening around air pollution. हम states को बता रहे हैं, state action plan बनाओ, उसमें भी air pollution is a big conversation. So I am not sure why the integration between the ministries is not happening. And my plea for you is to look into that, sir, please. Secondly, in terms of emissions, and I want to take the example again of industry, the thermal power plants, for example, and the emission standards that we've been talking about. Some years ago, there was the Comprehensive Environment Pollution Index that was put out. And for the longest time, it has been that index, which has a weightage of 100, as we all know, has 30 points weightage to the soil, to the air, and to the water. 10% weightage is for health. I think that needs to be revisited. We started this conversation a few years ago, including with CPCB and the Ministry of Environment, but that conversation has not been taken up, and I really hope that you could lead that initiative to bring health impact assessments into the center of the discourse, because for the longest time in India, I think environmental impact assessments are mandated when you're categorizing industries into different categories: minimally polluting, moderately polluting, critically polluting. It does not take into account health impact assessments. And I think that health in all policies is the mantra to go for, and I hope that you can make that possible. And lastly, we talked about data a little bit. That we constantly hear there are naysayers there saying that there is no evidence on the health impacts of air pollution in India. Sir, I would like to veto that, because increasingly, especially in the last 2-3 years, our organization, of course, is involved. We have shown, even for the city of Delhi, strong evidence that, and I will give you the example of the evidence that we have, that every 20 to 25 micrograms increase in PM 2.5 increases, for example, our blood pressure by 3 to 5 millimeters of mercury. At an individual level, it may not sound too much. Kya hota hai if my blood pressure is 120 or 125 millimeters of mercury? But at a population level, it moves a lot of people into the health system. If we are not addressing our air pollution, we are going to push more and more people into the health system. And we know, we've just come out of the pandemic, how poorly structured we are in terms of our health infrastructure to face population level burden. So we really need to change the conversation, the narrative, and bring a health lens to all our policies and programs. So it's my earnest plea, sir, to bring health people into these conversations. Thank you so much. माय नेम GP सिंगल है। मैं पोल्यूशन एंड कंसल्टेंट इंजीनियर्स में एज ए प्रोप्राइटर हूँ।
अभी सर्दियों में डीजी सेट पेपर बंद कर दिए कि चलाने अलाउड नहीं है, या तो आप बोले कि हम 100% लाइट देंगे किसी भी इंडस्ट्री को या हाई राइज को, और या फिर उसमें सिस्टम लगाएं जो डीजी सेट में जिससे कि पोल्यूशन कम हो। थैंक यू। नमस्कार सभी को। सर मेरा नाम भीषम मेहता है और स्टोन क्रशर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूं हरियाणा में। सर जैसे सभी सुबह से मैं सुन रहा हूं पर्यावरण और पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के काफ़ी अच्छे अच्छे सुझाव यहां पर आए हैं और काफ़ी एक्सपर्ट्स लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं। मैं तो एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट और एज ए लेमैन थोड़े से मेरे कंसर्न है वो आपके सामने रखना चाहूँगा। सर एनसीआर एरिया में हमारी स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री है एंड स्टोन क्रशिंग जो इंडस्ट्री है वो वहीं पे हो सकती है जहाँ पे उसका रॉ मटेरियल उपलब्ध होता है। तो ये दिल्ली के साथ महेंद्रगढ़, नारनौल, भिवानी इस पूरे एरिया के अंदर ये है। और प्रदूषण वर्ड थोड़ा सा एज ए लेमैन जैसे मैंने बोला 5 साल पहले 2016 से पहले प्रदूषण वर्ड सुनने को बहुत कम मिलता था। 2016 से 2021 लगातार 5 साल नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी लगभग 2.5-3 महीने तक हमारी इंडस्ट्री को क्लोज डाउन पे रखा जाता है। और नॉर्मली जब लोग बात करते हैं तो यही बोलते हैं कि क्रशर बंद कर दिए, कारण क्या बोला, दिल्ली में प्रदूषण के कारण क्रशर को बंद कर दिया गया। तो इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन एक चीज है एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन एक चीज है। मैं थोड़े से साइड इफेक्ट्स के बारे में ही बात करना चाहूंगा सर। ये जो नॉर्म्स, ग्रैप, CAQM इन सब के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और उनके आधार पे इंडस्ट्रीज को बंद पे, क्लोज डाउन पे रखा जाता है। लेकिन बीच बीच के अंदर वो ऐसे ऐसे स्लैब्स, चंक्स आते हैं कि वो जो के पैरामीटर्स हैं वो भी फुलफिल कर हो जाते हैं, फिर भी वो इंडस्ट्री बंद ही पड़ी रहती है। द फर्स्ट डे फर्स्ट क्लोजर होता है सर HMP, हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर्स का, एंड द लास्ट ऑर्डर होता है HMP का और स्टोन क्रशर का। तो थोड़ा सा सर ये बोलना चाहूँगा कि इसका जैसे हम डिस्कस सुबह से यही कर रहे हैं कि जो NCR एरिया है उसमें नो डाउट पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मैटर है, कंसर्न है हमारी सबकी लाइफ के लिए। बट जो NCR से काफ़ी दूरी पे है, वी आर ऑन द टेल एंड लास्ट किलोमीटर ऑफ NCR, कि एक कदम चलते ही आप एक स्टोन क्रशर को ऑपरेट कर सकते हो 100 मीटर दूरी पे, और 100 मीटर पीछे आप उस स्टोन क्रशर को ऑपरेट नहीं कर सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज नॉर्म्स। हमारी इंडस्ट्री को लगातार 5 साल से इसके अंदर इफेक्ट करना पड़ रहा है। सर दूसरा एक फैक्टर और है हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्ट। इसी पोल्यूशन के कारण जो डीजल व्हीकल्स हैं, डीजल फ्यूल जो यूज करते हैं, उनका टेन्योर लाइफ जो है वो 10 ईयर्स कर दिया गया है पूरे उसके अंदर। सर एक जो बड़ा कमर्शियल व्हीकल है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 40 lakhs, 1 यूनिट इज 40 lakhs, और अगर 10 साल हम उसका लाइफ टेन्योर रखते हैं तो वो उसकी कॉस्टिंग भी पूरी नहीं कर पाएगी एज इन 10 ईयर्स। तो उसमें सर मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि पोल्यूशन उसका इंजन जनरेट करता है। ऐसे व्हीकल्स के लिए जस्ट टू कि 10 साल के बाद आप उसको डिसमेंटल ही कर दो या इस एरिया में नहीं चला पाएंगे, कोई अपग्रेडेशन की फैसिलिटी हो। बाकी सारा व्हीकल्स जो है उसकी बॉडी होती है, उसका पूरा जो पार्ट, बाकी सारे पार्ट्स हैं, उनमें से कोई भी पोल्यूशन ओमिट नहीं करता है, सिर्फ इंजन। तो अगर इंजन अपग्रेड हो जाए और बाकी सारा जो स्ट्रक्चर है वो उसका यूज कर लिया जाए तो उससे काफ़ी ट्रांसपोर्टर जो है वो काफ़ी लंबे समय तक उसको फिर से रीयूज कर सकता है, उसकी दोबारा से रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। इस तरह से हम उसको लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। तीसरा सर एक छोटी सा और मेरा वो है, एग्रीकल्चर फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। एक जो ये सारा जब शुरू होता है, जिसे हम इमरजेंसी सिचुएशंस, आप बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं इमरजेंसी सिचुएशंस, जब इमरजेंसी सिचुएशंस आती है नवंबर दिसंबर में, और मैंने पहले भी बोला कि क्या 5 साल पहले ये नहीं आती थी, क्या हम चेक ही नहीं करते थे, क्या AQI इस लेवल पे पहुंच गया और सब कुछ चलता ही रहता था। लगभग 15-16 से ये सिचुएशन शुरू हुई है, 2015-16 से। तो इसका मेजर पार्ट जो बताया जाता था वो जीरी बोलते हैं हम, जिसको जीरी की जो पराली जलाना, पराली वर्ड बड़ा यूज सुनने को आता है, उस समय पे ही पराली जलाई जा रही है, बहुत लंबे चंक्स में जलाई जा रही है, सैटेलाइट से भी अब उसकी मॉनिटरिंग होती है। तो पराली सर क्या पहले नहीं जलाई जाती थी?
अभी जलानी शुरू हुई है। सर जीरी तो बहुत लंबे समय से हम क्रॉप एज ए क्रॉप यहाँ पे पंजाब हरियाणा के अंदर यूज होती है। बट एक थोड़ा सा एग्रीकल्चर परिवार से होने के कारण मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि पहले जो इसको बोने का टेन्योर टाइम था वो अभी चेंज किया है 5-6 साल से। अभी इसको 15 जून के बाद से स्टार्ट किया जाता है। पहले ये 15 जून से पहले कभी भी जैसे ही गेहूं हम निकाल लेते थे उसके बाद से आप स्टार्ट कर सकते थे। बट वाटर कंजर्वेशन या वो वाटर जो रिसोर्स की कमी होने के कारण से अभी एज ऑन द टाइम ऑफ रेनी सीजन इसको जून में स्टार्ट किया जाता है। तो जैसे ये लेट जब हम इसको बोते हैं तो लेट ही ये तैयार होती है और वो एक ऐसा पीरियड आ जाता है अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर कि हमने इसको भी निकालना होता है। नेक्स्ट जो है गेहूं के लिए भी बिजाई के लिए भी खेत को तैयार करना होता है। तो उस कारण से भी फार्मर को ये काफ़ी इसको जलाना मजबूरी बन जाती है उस समय पे। तो अगर इसमें भी कोई सॉल्यूशन हो सके इसका टेन्योर का, जो हमने रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं या चंक्स में स्लैब्स में एरिया वाइज कुछ समय में कुछ जगह पे इनको कराया जा सके तो इसमें थोड़ा सा पोल्यूशन के लेवल पे जो इमरजेंसी सिचुएशन आती है उस टाइम पे सुधार हो सकता है। सर थैंक यू सर। बैठिए, थोड़ा सुधार लीजिए मेहता जी। ये 1997 की MC मेहता की पिटीशन है। 1 मिनट बैठ जाइए सर। ये पहले रजोकरी की थी, फिर शिकोपुर की थी, फिर कासन की थी, फिर महेंद्रगढ़ पहुँचे। आप 2015 की तभी बात कर रहे हो, ठीक है? फैक्चुअल सुधार के बात करो। मैं सारी पिटीशन बता दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं 1 मिनट में आप सभी लोगों ने बहुत सारे विषय रखे और न केवल विषय अच्छे रखे बल्कि बहुत सारे एस्पेक्ट को भी आपने छुआ। एनवायरनमेंट से एनर्जी का विषय हो, पब्लिक हेल्थ का विषय हो, सोशल हेल्थ का विषय हो, सोशल रिफॉर्मेशन का विषय हो, पावर्टी का विषय हो, ब्रिकलिन इंडस्ट्री का विषय हो, क्रेशर इंडस्ट्री का विषय हो। और हम सब लोग इन विषयों के साथ कंसर्न भी हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि हम किसी भी एक विषय के साथ कंसर्न नहीं हैं। और जो मैंने सुबह कहा था कि हम एक अच्छा रेगुलेटरी सिस्टम और एक पब्लिक पार्टिसिपेशन, एक पब्लिक मूवमेंट, और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने सब के लिए एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छा शहर, एक अच्छा जीवन चाहते हैं। केवल एक पक्ष की बात होने से दूसरे पक्ष की हानि होगी या दूसरे पक्ष की बात होने से तीसरे पक्ष की हानि होगी, ऐसा ना करते हुए हम एक बैलेंसिंग अप्रोच के साथ हम लोगों को चलना चाहिए। और बैलेंसिंग अप्रोच के साथ जहां हमारे अधिकार हैं वहाँ हमारी जिम्मेदारी और दायित्व भी है। तो फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज़ दोनों को मिला करके चलेंगे तो हम अपना शहर बेहतर बना पाएंगे, अपना NCR रीजन बेहतर बना पाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नेशनल क्लीन एयर मिशन का प्रोग्राम है उसके टारगेट्स को भी हम अचीव कर पाएंगे। सुबह से आने के बाद मैं बीच में 1-2 मीटिंगों में गया, लेकिन मैंने कुट्टी साहब से कहा था कि जिस समय पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा मैं खुद सुनना चाहूँगा, क्योंकि जो प्रतिमा सिंह कह रही थी कि हम केवल एक्शन की बात ना करें, हम ज़मीन की बात को भी जानें। तो ज़मीन की बात को भी जानना किसी के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए आप ये मानकर चलना कि सरकार बहरी गूंगी सरकार नहीं, सुनती भी है, समझती भी है और फिर पब्लिक के लिए करती भी है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शासन है। और इसलिए कुट्टी साहब ने कहा आप ओपनली सुनोगे, मैंने कहा मैं ओपनली सुनूंगा, हृदय से सुनूंगा। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आपके सहयोग के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कल का भी सेशन होने वाला है, आपका इसी प्रकार से उसमें सहयोग रहेगा। और उसके बाद जो भी हमारा एयर क्वालिटी कमीशन का एक्शन प्लान बनेगा, NCAP के गंगवार जी बैठे हैं, उनका एक्शन प्लान बनेगा, हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हमारे चेयरमैन बैठे हैं, हमारे सांसद भी आए हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देते हुए मुझे लगता है इस कार्यक्रम को चूँकि और हमने 15 मिनट ज़्यादा बढ़ा लिया है तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। To Shri Bhuvendra Yadav ji, thank you very much for joining us. Thank you all for your participation and support. Special thanks to Srimati Ranjita Kohli ji. Thank you very much for joining us. We request all of you to kindly join us tomorrow as well. The sessions will start at 9:30 a.m. sharp. Thank you all for your participation and support. Wish you a great